Welcome all of you. Ansari Saab, welcome. हाँ. Gauri Vedekar, Madam. Gauri Vedekar. Hello. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Welcome. Thank you, sir. Ramchandra Murthy sir. Dr. Ramchandra Murthy sir. Murthy sir. Dr. Ramchandra Murthy. जुड़े हुए तो हैं. Dr. Ramchandra Murthy sir. Hello, Ramchandra Murthy sir. Welcome sir. Welcome sir. So today next session, today first session, our eminent speaker, Dr. Gauri Bedekar, researcher, Firodia Institute of Philosophy, Culture and History, Pune, Maharashtra. Chairperson, Dr. N.S. Ramchandra Murthy, formerly Deputy Director, Archaeology and Museum, Government of Andhra Pradesh. Welcome, Madam and Sir. Dr. Ramchandra Murthy, sir. Please unmute yourself, sir. No. Good again. Ramchandra Murthy, sir. Hello. Hello. Dr. Ramchandra Murthy, sir. हाँ सर, आप आवाज आ रही है? डॉक्टर रामचंद्र मूर्ति जी से के यहाँ से. हेलो. Yes, sir. So now session starts, sir. Dr. Gauri Vedekar is the eminent speaker, and so please share the session and introduce eminent speaker Dr. Gauri Vedekar. Yes, sir. Please introduce. I think there is some problem with his microphone. We can't hear what he's saying.
ओके ओके मैडम, आप अपना लेक्चर शुरू शुरू कर करिए, मैं दीजिए। बैठ कर। Okay. सर रामचंद्र मूर्ति सर, आवाज आ रही है? हेलो, डॉक्टर रामचंद्र मूर्ति सर। हाँ, गौरी बेटेकर, प्लीज स्टार्ट योर स्टार्ट कर दीजिए लेक्चर। सर। हाँ, आप लेट स्टार्ट हो कर रहा है। दीजिए। हाँ Is my screen visible? या हाँ, यस यस। Good morning, everyone. I want to thank the organizers for giving me an opportunity to be a part of such exhaustive webinar. My subject is animals in Indian art. I want to start with some qualifiers. Animals in Indian art is such a vast subject in itself that I want to focus on some specific aspects of this huge tapestry. Uh, as we know, animals are a very integral part of Indian culture, of so many aspects, dimensions, and facets of Indian culture. Uh, they are part of our food, our everyday lives. They are an important raw material in so many cases, even today. They have immense significance in social religious spheres for us. And a reflection of this can be seen in different dimensions of Indian art as well. So, when we look at animals in Indian art, there is an added dimension to it, and that is of how these animals can be a very important source of insight or a window into different aspects of ancient Indian culture or everyday lives of people in ancient India. When we say Indian art or animal depictions in Indian art, they are spread over a very wide range of materials and types and forms. We find them in paintings, sculptures, replicas, miniatures, coins, and so on. And other axis of this study is the time of art in India or ancient India. As we find art right from prehistoric to modern times, similarly, we see the presence of animals right from prehistoric art to expressions of art in modern times. So, as I said, I'm going to stick to some very specific threads of these of this very rich tapestry of that is animal depictions in ancient Indian art, and that is of the significance or relevance or context of why these animals were depicted in Indian art. One of the commonmost or one of the richest connection of animals in Indian art is that of religion. As we know, there are many animals that by themselves were and are worshipped. So we have animals like cows or snakes, which are worshipped as the animal itself. Then we have some animals that have very deep connection with certain deities, like Nandi with Shiva, or the snake around the throat of the Shiva, or different avatars of Vishnu, um, Vahanas or mounts of specific deities, or certain certain animals being associated with deities like dogs with Dattatreya, and also some exceptional temples dedicated to animals like monkeys or mice. Uh, We also have a very rich collection of animals in religious narratives. Religious narratives spread over all the important religions of ancient India. So we have narratives like Ramayana. This is a depiction of Ravan in Jatayu. We also have episodes of Gajendra Moksha, where
Again, animals play an important role in the narrative itself and hence are featured prominently in all the depictions of such episodes in ancient Indian art. Uh, in Buddhism, we have depiction of animals in some important episodes throughout the life of Gautam Buddha, like conception of Buddha as it is depicted here in Dream, or just as part of their iconographic schemes or their narratives, but also as decorations, as decorative motifs. So, in many cases, we have a band of deer or fish motifs which are used simply because of their aesthetic beauty to enhance the beauty of the temple. We also have some cases where animals have carved out somehow as a part of the architecture itself, or have been given a very important and significant position in the overall scheme of architecture. This is one of such examples. It is an elephant carved in Dhauli in Odisha, which has a famous inscription by Ashoka. Similar example, this is part of a group of caves in Odisha, which is known as the Bagh Gumfa or Vyagra Gumfa. For this feature that is carved out, which is likened to a tiger. In case of temples, also, we see some temples have been given some extra significance or context, like the famous Sun Temple of Konark, which is conceptualized as an immense chariot with wheels and horses. So, these immense horses can be seen as if pulling the whole, attached to the whole chariot or temple in form of a chariot. These are some more images of it. Similarly, there is a temple in Maharashtra known as at the place called Khidrapur. It is a Shiva temple, and unfortunately, this image is not very clear. But if you see this band here,
This band has depictions all over of elephants like this, and overall there are 92 elephants, each carved differently in a unique manner with a unique set of jewelry and a deity or a rider, which is also different for each of these elephants, giving the impression that this whole temple is being carried by them or being lifted by them or is supported on back of these elephants. Another important feature we see in these temples are the Surasundaris or Apsaras, or these Madanikas in South India as they are known. And some of them depict very interesting interactions with animals that probably were part of their life in that time, or episodes that were common in literature or common or were common in fact in their lives as well. So one of the most common ones is one talking to her pet parrot, as you see one here. This is from Channakeshav temple, Karnataka, and a parrot is depicted standing on her hand or on her arm. Another one is one distressed by a scorpion, the one that you can see at on the bottom panel. And similar depictions can be seen in South India here in Karnataka. Similar depictions are also seen in places like Khajuraho in central India, where the iconographic style might be a little different, but the episode depicted or the concept depicted essentially is the same. There are also episodes here that include of interactions with a peacock or the Surasundari being harassed by monkey and so on. So before we go into other forms of expression or other forms of art that include depictions of animal, on a very basic level, what do these depictions tell us about the human animal interaction in ancient India is the familiarity and knowledge of the people about these animals. So, on a basic level, it is a record of animals that were known to the people of that time, that people were familiar with. If we go back far enough, one of the earliest paintings from Bhimbetka caves in Madhya Pradesh has a painting which is known as the Zoo Rock, and the name is given to it because it has depictions of multiple animals on this rock, and these are different types of deer, some like cattle or cows and buffaloes or bisons, some other animals, and it is probably a record by those people of the animals that shared their habitat. But going beyond that, as we move along the historical period and we come to historical or early medieval or medieval art that has depictions of animals, they are depicted with such grace and beauty. Their speed or strength or vigor, depending upon the animal, is depicted with such accuracy that we have to assume that very similar to how there were artists and texts and sciences dedicated to the architectural aspects of temple building. So we had artists who were experts in architecture, who were experts in human anatomy and iconographic aspects of it. There must have been some people dedicated to understanding the animal form and anatomy to enable such accurate depictions of these animals and their grace and beauty. Uh, these depictions also tell us about practices prevalent in that time regarding these animals. So, this is a terracotta figurine of horse from Maharashtra from Satavahan period. And as you can see here, the figurine itself is decorated, and it
might be a reflection of how horses were decorated in that time. So we see a beaded garland or necklace around the neck of the horse. We see a cloth on its back which has a crisscross pattern, which might indicate some decoration or embroidery. And we also see that the mane of this horse is very neatly trimmed. So this, the figurine at least, appears to be a very well groomed, well decorated horse, and it might be a reflection or a very realistic indication of how animals or horses specifically were kept in and around first century. One of the common themes of depiction of animals in art is hunting or hunting scenes. So this is a scene again from Rani Gumfa, Odisha, around first century BCE, where, as you can see here, there is a hunter with bow and arrow, and there are some deer around that are running around that are being hunted. We also see hunting scenes in paintings. So these paintings are from Bhimbetka on the left, as you can see, again, a hunter with bow and arrow hunting deer. And on the right, several people coming together in group to hunt some large animals. And these are the cases which are something of practice that continued till time of hunting animals for food, and in later period even for sport. But again, if we go back in time, we also see this dynamics reversed a little bit. We also have depictions of what might have been a fear of these people of being hunted by these wild animals. So again, this comes from one of the oldest paintings at Bhimbetka. As you see here, this is a boar, and there are very tiny human beings running around its legs. Now, realistically, we know that there never have been boars of this size and magnitude in ancient India. What this might indicate is, as I have said, the fear these people had of these rampaging boars in the habitat that they shared with each other. Another aspect of Indian art where animals feature dominantly is warfare. This is a very prominent scene on the Sanchi Stupa, which depicts the war for relics of Buddha between the Mahajanapadas. So here you see chariots and elephants that are part of this army. On this side, also, along with foot soldiers, there are elephants that have been brought in to the war. We know from literary sources as well that war elephants were an important aspect in warfare of this time, and we see depictions of that in art forms as well. Uh, this again is scene of a warfare, although this is part of a Mahabharata narrative depicted on Kailas temple at Ellora, Maharashtra. Here also we see elephants and different types of carts and chariots that are part of this war and fighting. Again, this panel from Hoysareshwar temple, Karnataka, is part of a Ramayana narrative, but you can see how large open horse drawn chariots are being utilized by Ram and Ravan, probably for ease of archery uh, in this form of war. Again, we see warfare in paintings as well. Here you see a painting from Bhimbetka, which is from historical period, not from the earliest Mesolithic transitional phases. Here also you see animals like elephants and horses being part of this war, where people on both sides are fighting with different types of weapons. Animals were also an important source of transport and traction. We have direct and indirect evidence that many animals were utilized for transport. They were ridden themselves, like
We have evidence of horse riders, people riding bulls and camels and donkeys at times. We also have evidences of these animals being yoked to different carts and chariots, and animals being used as a source of strength for plowing and different activities of agriculture. So, one of the earliest concrete evidence comes to us from Harappan times. This is a replica or a toy cart. Now, this cart has been assembled by the researchers at a later date. So, what we find in excavations are different fragments of these pieces. Now, we cannot know for sure exactly which animal was yoked to the cart because we find it all in separate detached pieces, but it is it would be safe to assume or infer that some of the bull figurines like this that have been found in Harappan times were meant to be attached to this pulakka toy or was part of this whole ensemble. And if we look at these regions today, like Makran Coast and Sindh, carts very similar to this are used for trade and transport even in current times. We also have uh, these kind of yoked carts from the whole of Daimabad bronzes. Daimabad is a place in Maharashtra. These bronzes are dated to approximately 1800 BCE. And as you see, this is a cart or a form of a chariot meant for standing and which is being pulled by these two animals. We also have a bronze sculpture of a woman with two bulls, probably part of an agricultural activity. This is currently in Met Museum in USA, dated to again 1800 BCE, roughly. We also have depictions of such things, sculptures. So here we see a horse drawn chariot which probably has a charioteer in addition to an important person standing behind him. And again, we so have indirect evidence of horse riders, similar to the horse figurines that we saw from early historic period. Some of them also have a horse rider with them. So a slightly separated human figurine that can be attached or placed on top of this horse is indicative of horse riders or horse riding from this period that we also know from literary sources. Uh, Beyond this, we have a large figurines from different areas and different times in ancient India. So we have animal figurines from made of stone, terracotta, metal, and other material like ivory, paste, and so on. So the animals that are represented in these animal figurines are most common are animals that had probably social religious significance as well as greater utilitarian value to these people. So we have many more replicas of cows and bulls rather than other animals, but we also have representation of buffaloes and goats and sheep and ram, pigs, uh, dogs, and animals like horses, camels, and elephants. But we also have representation of wild animals, both the ferocious animals as well as the more somber ones. So we have uh, lions, tigers, wolves, and foxes, bear, rhino, nose, and Hello, wolves. hello, And uh, hello. yes, This is Dr. Ramchandra Murthy, NS. Huh? yes, sir. Am I audible? Yes, sir. Yes. Shall I? I now listen to the lecture, and then I'll speak at the end. Okay, sir. Kindly, Thank you. kindly give me the opportunity. Yes, yes, sir. And
And we also have replicas of animals like deer and mongoose, monkeys, mice, stags. So some of the examples of these animals are this is a terracotta bull, quite similar to what we saw with the toy cart from Harappan times, from the site of Harappa. Uh, this depiction of a water buffalo, as can be discerned from very distinctive horns of the animal. And some of these animals, as we know, are found also on the Harappan seals, as well as in this replica format. Uh, so have, as I said, depiction of animals like mongoose. This mongoose is from Dholavira, in Dholavira Museum right now. Uh, in some cases, there are some additional aspects that we can infer from these figurines. As these figurines are so many in number, we cannot say for sure why so many of them were created. Uh, some of them were clearly toys. Some of them may have had some religious significance. Some of them, if we draw parallel from current times, could have just been expressions of art that were used as decoration in homes. In some cases, they give us a little bit of additional information about these animals. Like you see, this is a dog with collar, again from Harappan times, from the site of Harappa. And this collar might be an indication of domestication, or this being a pet dog. But there is another interpretation also given for collars like this. Uh, Example, as we know, there have been many rhino figures found from Harappan sites. Depictions of rhinos are found on seals as well as in form of terracotta figurines. And in some cases, these rhinos are also found with a collar-like feature. So, in case of animals like rhinos, these collars probably signify captivity and not necessarily domestication. So, some or at least one rhino was caught by these Harappan people and kept uh, caged or collared somehow. We have literary references from later period of how bones and skin of rhino was used for armors, and their meat, blood, and urine was considered medicinal. We don't know if these practices had already started in Harappan times, but this case of a collared rhino suddenly brings us the possibility that maybe rhinos, some at least, were captured by these people. Not all Harappan animal figurines are these crude terracotta ones. We have some very beautiful specimens. This is a very tiny 3 centimeter, 3.5 centimeter long bull made of banded agate stone, which is fitted with golden horns. Now, this practice of fitting horns separately to animal figures is quite common in this period, but uh, the care and effort taken in the craft of creating this animal figurine might suggest that it had some either religious significance or some special context and significance in that time. Again, we have animal figurines from later periods as well, not just Rappan times. So we have animals like mongoose from Mauryan period, depictions of camel, again from early historical period. Uh, we have depiction of an elephant from Gupta period. And as I go through this presentation, as I realize that I have many more examples of elephants than other people, other animals, but observe the grace and accuracy in depiction of these animals is one of the most masterfully executed animals in overall animal depictions in Indian art. We also have animal depictions on everyday objects and quite a wide range of everyday objects. To begin with, start with one that's context is a little ambiguous. As we all know, animals feature quite prominently on Harappan seals.
The most famous ones are seals with unicorn, zebu bull, and the Pashupati seal, which has different animals surrounding the central figure. We also have seals that depict bison, elephant, rhinos, or multiple depictions of what is called a human figure and a tiger depiction from Harappan period. Now, because we can't read the script, we cannot say for certain whether these animals have any specific relevance, whether the animals are symbolic or representative of a certain context or a meaning, and what part they play in general overall design of these seals. But they are a good source of information of probably perception of these animals by these people, but nothing can be said for sure until the script is deciphered. We also have animal depictions on toys, as well as animal figurines that were used as toys, and animal shapes used as toys. One of the more common ones is a whistle shaped like a bird from Harappan times. And this is a whistle that is hollow inside with openings two sides. And whistles are found from many Harappan sites, and they are so well crafted that if you find one in excavations that is not cracked, you can still play, as in blow the whistle, and it makes the bird sounds. Then this is a monkey that was discovered at Mohenjo-daro. Now it has been mounted on a wooden platform with a stick currently in the museum, but originally, possibly considering these perforations at his hands and feet, was probably meant to be attached to a string and a moving toy before it functioned out of it. And as I said, some animal figurines were clearly used as toys, so they have perforations in their legs where possibly wheels could be attached to them. Something similar to this. Now, this animal is again part of Daimabad bronzes. It's discovered in Maharashtra, dated to approximately 1800 BCE. We also have animal toys from early historical period. This is a very stylized elephant from Mauryan times, and if you notice, even though this is a black and white photo, this animal has been painted. Now, this may not necessarily indicate a practice of painting elephants at that time, but we do have literary references of painted toys from that period. So, a form of additionally decorating these toys. So, these kind of stylized animals, decorated and painted, were created and used for entertainment in this period. Similarly, we have a stylized horse. You can see enhanced and decorated from Maurya period again. Also have depictions of animals on pottery and on other objects of entertainment. I have just one example each here. These are a couple of Ganjifa cards from Orissa from Mughal period, early 19th century. Uh, the tradition of playing Ganjifa today continues only in very small parts of Orissa and parts of Maharashtra, but it might have been a very popular game in medieval or late medieval India. And many of these sets of Ganjifa cards have animal depictions, either in form of their Dashavatara sets, or it is here in form of of different deities that come with their mounts, or deities that are symbolically represented just by their mounts, and so on. And this is a depiction of animals on pottery. So as you can see, they're quite well crafted, very carefully and meticulously painted on pottery. This is believed to be a dish or a lid from Harappa.
and this is a broken pottery fragment from Lothal. We also see animal depictions on coins, right from punchmark coins of Mahajanapada period. So as you see here, uh, there are different animals depicted or punched onto these coins. Again, depiction of animal on these coins. We also have animals on Kushana coins. This is a coin by Bhima Kadaphises, which has a Shiva and a Nandi, probably. Coins of Kanishka, which here features an Iranian deity with a horse. This is a coin by Nahapana, which is a lion with sort of a stamped mane. Depiction of elephant on a Satavahan coin. Gupta coins, as we know, are some of the richest and most magnificent example of Indian numismatics, and they also offer an equally large variety of animal depictions on coins. So here you see a horse on Ashwamedha coin. We have tiger being hunted by the king, elephant and horse riders. We also have animal depictions in form of pillar capitals, the most famous being the Ashokan pillar capitals. Uh, One at Sarnath, the Rampurva, which is now at Delhi, and the elephant capital at Sankisha, which is unfortunately broken. Apart from these, we also have the famous Garuda Dhwaja, even though the Garuda on top of it cannot be found today, but we know from the inscription itself and some information on the reports of people like Cunningham that a Garuda probably was found in this vicinity, which could have been the capital of this pillar itself. Animals feature quite prominently as dynastic emblems themselves. So, some, as we see here, this is the emblem of Chalukya dynasty, which has a boar and a conch and mirror. Probably stands for their religious beliefs, motives, indicative of that. Again, this is elephant featured on copper plate of Western Ganga dynasty, economic significance along with religious beliefs. There are some motives which also sort of tell us a story. So this is a Chola coin which picks their tiger, though it is a little difficult to make out that this is a tiger. Um, Many of Chola inscriptions, coins come to us with this tiger emblem. It is sometimes depicted in isolation, sometimes it is a leaping tiger. Here, what we see is the Chola tiger seated between the pair of fish that was emblem of Pandyas and the bow that was emblem of Cheras, probably in Minans dynasties. And we also have emblems that stand for a little more elaborate story. Here what we see is the Hoysala emblem, where Sala is depicted fighting the lion, which stems from the story that the founder of the dynasty came upon an ascetic who was about to be attacked by a lion or a tiger, and the ascetic told the Sala to run and save himself. But Sala, being a brave warrior, did not do so. He fought the tiger, uh, killed it, and saved the ascetic. Uh, as a last information, I depict that these animal depictions are culture and our culture and their significance in our everyday lives. Sometimes the animals found in these depictions can also be indicator of foreign contacts or foreign trade that India had with different regions in different times. Uh,
I mentioned previously, there are depictions right from Sanchi Stupa or Mathura, early Mathura art, to caves in Maharashtra like Ibaje, where we have depictions of centaurs and griffins, which are very distinctly indicative of Greco-Roman influence. But we also have sculptures from later period, late medieval period. This is a panel from Sen Temple at Konark, which depicts a giraffe, probably indicating that as an important site or being close to the port cities, it had trade contacts with East Africa, and the artist probably had seen a giraffe which was imported to this region via sea trade. Now, this depiction is not very realistic if you note the relative heights of elephants and giraffes. You can see giraffes are quite taller than elephants, but even the fact that a giraffe is present in Indian art of this period is very significant. And not just in eastern coast and west, also no, although not coast, in Karnataka, uh, a Jain temple at Mudabidre also, if you see here, has a depiction of a giraffe. If you see, there is a oar tied to the neck of the giraffe and it's being held by its captor or person. Not just a giraffe, we also see depictions of a dragon. So, trade contact not just with East Africa but with Southeast Asian countries or probably China itself, uh, sort of trade connections, and that depiction of this dragon on this temple. And this brings us to end of our journey. Our fascination with depicting animals or creating animals and expression of art still continues today. This is the amazing Jatayu created at Jatayu Earth Center in Kerala. And with this, to conclude my talk, thank you very much. I once again would like to thank the organizers for giving me this opportunity, especially Professor Mishra, who has arranged such a mammoth project, and respected chairperson. Thank you. गौरी, Hello. हेलो। Yes, sir. अच्छा, आपने देखा शुरू के 2-3 वो चित्र नहीं आ पाए थे इसमें, आप यूट्यूब में शुरू के। अच्छा, हेलो, हाँ, 1-2-3 डायग्राम तो यदि हो सके तो कर दें तो आ जाए वो Hello. यूट्यूब में। Hello, Dr. हाँ Mishra. हाँ, यस सर। Am I audible? Can yes, I yes. make a, can I take the yes, sir. privilege of summarizing? Yes. At the outset, it's my pleasant duty. Yes. Yes, it's my pleasant duty to express my grateful thanks to Professor Mishra for giving me an opportunity. But unfortunately, I missed it to introduce the scholar, the experienced scholar, who has who has prepared a very enlightening paper on the presentation of animal art in Hindu sculptures, Hindu art, beginning with rock art and going back to the 13th, 14th centuries AD, including Hoysala, Satavana, everything. But now, may I ask this respected scholar, if she doesn't mistake me, that she has not referred to the representation of animal art in the case of the two Telugu states, mostly Amaravati and Nagarjunakonda. And because there animals are profusely represented in Amaravati Satavana art and also in the Nagarjunakonda and also at other places. Even in the medieval times, we have during the Kakatiya period, we have heavy bulls decorated with bells and all that around the neck, and large size bulls, hefty bulls. Similarly, during the Vijayanagara period, we have the composite animals, representation of composite animals in certain temples. And as you know, animals are themselves, they served as the vehicles of the deities, several deities.
All right. But whatever it is, I congratulate the scholar for having presented a, a consolidated, a continuous account of the picture of our animal representation in Indian art. And I thank you very much and congratulate her once again. And I also thank Professor Mishra for giving me a pleasant opportunity of taking part in this August gathering. Thank you so much. Thank you, sir. Anita Korde, Uh, Dr. uh, Anita Korde, please brief. Uh, I had a privilege of listening to Dr. Bedekar at Pune TMV College. And what I like about her the most is that the simplicity with which she can talk about a very complex topic, and her sweet and nice and soft way of telling things, which really is very, very appealing. It's always a pleasure to listen to you, ma'am. And it was a great help. I recently wrote a book on Somnath Temple. So the animals depicted on Somnath Temple. So with your presentation, I feel validated. Yes, I have written it correctly, and it was really wonderful. And Dr. Professor Mishraji, if he arranges for better time and more time for ma'am, I'd like to listen more in depth regarding the animals on the temples. Thank you so much, ma'am. thank you. Thank you. Even to respond to Murthy sir, the Amravati animals were excluded more for the time aspect because, as you say, there are so many animals on the stupa itself, and through different phases of time, that it is a separate topic for not just a lecture but a lecture series by itself. And as I said in the beginning, I deliberately stayed away from animals that are worshipped or as mounts or are composite animals, because this religious iconography again is a independent topic for research. So I wanted to focus more on the diversity and what additional information these animal depictions in art can tell us about. But thank you for your suggestion and input, sir. hello, madam. This is Yes, not to sir. find fault. This is not to find fault with you, but Of course, sir. only to as a matter of suggestion. Eh? Yes, sir. I have made it suggestion only, and Sure, sir. I congratulate you for your kind pains and the labor you have put in preparing this article, and also for your experience. It's a happy moment for me to hear you. And Thank if you, you sir. could send me, if you could send me a copy of your lecture, I'd be very grateful. Huh? Of course, Yeah, sir. Sure. I of will do that. course. Thank Thank you so you, much, Dr. Professor Mishra. Uh, yes, sir. Yes, sir. Thank you very much. Thank you, Dr. Ramchandra Murthy, sir. Uh, Formerly, formerly Assistant Director, Archaeology, Deputy, Hyderabad. Deputy Director, Deputy Director, uh, Archaeology and Museums. Archaeology, Hyderabad, and Dr. Anita Korde, Madam Anita Korde from Mumbai, and our eminent speaker, Dr. Gauri Bedekar, Pune. All of you, thank you. And Now, next, yes, I sir. thank all the scholars, Professor Yes, Anurag, Professor Anish Ahmed, Mr. Bujang, Bhuvan, Mrs. Anita, and all those scholars for having, because having come into contact with them. Thank you so much. Thank you so much, sir. thank you, all of you. Now, next person, eminent speaker, Hello, sir. Mr. Anurag Shukla, former president and founder member of Dharohar Guide Association, Khajuraho. Our our chairperson, Dr. Bhuvan Vikram, Director Archaeology, Temple Project, ASI, Archaeological Survey of India, uh, Bhopal Center. Welcome, sir. Dr. Bhuvan, sir. Thank Hello. you very much, Mr. Ji. Am I audible? Ah, yes, Am I sir. audible? Yes, sir. Ah. Yes, yes, sir. So this after this wonderful lecture by Ms. Gauri Bedekar, the next session is Yes, sir. on a similar Please topic share the on session. Khajuraho. Ah, Yes. So in this session, the speaker is Mr. Anurag
Anurag Shuklaji. He is a well-versed uh, guide, although by education he has done his BSc and also a diploma in mechanical engineering. But since 1996, he has been guiding a qualified guide approved by the central government as well as IITM Gwalior. And he has been visiting faculty also at IITM Gwalior. Uh, and apart from this, he has the privilege of visiting and taking people around, taking tourists around in the Khajuraho complex, and that certainly has enhanced his experience about temples, its art, and so many other aspects of it. Apart from being president of Guide Association and many other organizations related to guides. So I invite Mr. Anurag Shuklaji for his talk on Vaishnavite temples at Khajuraho. As we all know, Khajuraho is the center of temples, and it includes temples of Shiva, dedicated to Shiva, Vishnu, and also to Jain faith. So the stage is on to Mr. Anurag Shukla. Namaste, everyone. My voice is audible? Yes. Yes. Please, Okay. Yes. please carry on. So, first, Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Gurur Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurve Namah. स्कंद सर को सादर प्रणाम, सभी गुणीजनों को, विद्वान जनों को, गुरुजनों को अनुराग शुक्ला का प्रणाम. So I am very, very thankful for Mr. Skand sir. He gave me another chance to discuss on Khajuraho. Like in the last lecture, I conducted a webinar on Lakshmana temple, that was another Vishnu temple. But this time he asked some more temples because all main important temples were completed. So then I said, no, there are many more temples generally people never visit. Like when they are coming Khajuraho, they first visit to the western group of temple. And very limited people visit to the eastern or southern temple. So what I tried to show all those important temples which are situated on eastern and southern one. So that's why I just write down my headline as a minor Vaishnavite temple of Khajuraho. So I'm going to share my presentation. Mr. Mishra. Sir, can you see it, my screen? Just a minute for interruption, please. Mr. Sorry. Mishra. Yes, sir. Mr. Mishra, may I know if you are Yes, publishing, if you have any intention of publishing these articles anywhere in your journals or anything like that? Yes, through YouTube, sir. YouTube, through YouTube. Through YouTube. Public, through YouTube. Okay, thank you so much. I have problem to share my screen. How can I share my presentation in this? Gauri Bedekar. Hello. Suppose here I have my screen, but how I to share my screen? Bhuvan sir. Just click on the arrow. Yes, I click the arrow. Yeah. And then you share your screen, entire screen. Your entire screen. Yes. Then please click Then? in that on that screen, please click on that screen and then click on share. Okay. So now, can you see my presentation? Now you can see my presentation? Yeah, yes. Now it's visible now? Yes, it's visible. That's fine. Yes. Okay. So now Minor here, Vaishnavite temple. yes, so here I am now with my today's presentation, minor Vaishnavite temples of Khajuraho, Jagdambi, Vaman, Javari and Chaturgus.
So very important thing is this, like when we are talking about Khajuraho, generally people, the local Hindu people visit Khajuraho for their Shiva temple, especially Matangeshwar temple is a well-known temple. If you follow my first slide, here it is mentioned very clearly, once there were 85 temples and now only 26 temples are remained, which were divided by ASI as Western group of temples. That's the main complex where we have 12 temples with Chausatyogni temple and the main important temple like Lakshman, Vishnath, Kandaria and rest. Then second group of temple is called, generally people call the Eastern group of temple, and they count just Jain temple. They don't include Hindu temple. That's why I divided it. So there is a one group of Jain temple, which is called Eastern group of Jain temples. Second one is called Eastern group of Hindu temples, where we have Vaman, Javari, and Brahma temple. A fourth group of temple is called Southern group of temple, where we have Adinath, where we have the Dulhadev and Chaturbhuj temple. So as I earlier mentioned, the Chandela rulers constructed temples of different Hindu cults, like for the Surya, Vishnu, Shiva, goddesses, Ganesha, many temples they were constructed, but the majority temples are dedicated to Vaishnavism or the Shaivism. So total in all, there are 8 Vaishnavite temples. Like I didn't include 2, even I can say the 9. I didn't include 2 temples. Like one is called Khakramat, it's just a ruined structure. Second is also the Brahma temple, because at the door lintel there is a Vishnu. So it should be a Vishnu temple, but later they put a 4-faced Shivalingam. That's why the local people start calling it as a Brahma temple. So here you can notice that I mentioned, so there are 7 Vaishnava temples in Khajuraho, and their presence can be seen in all group of temples. Like Lakshmana and Jagdambi temple are in Western group. Here I want to make clear, Jagdambi temple now worship as a temple of goddess because it is next to the Kandaria Madhav temple, but originally it was a Vishnu temple. So I will discuss about the Vaishnavite images and iconography which is placed in this temple. And in the eastern group of the temple, there are the Vaman and Javaris, and the Chaturbhuja temple is in southern group of the temple. It is the most fascinating and most controversial and contradicted temples in Khajuraho, where people earlier did not have any idea about iconography. So that's why it was known as Chaturbhuja temple. Also because at the door lintel, there is a figure of Lord Vishnu. That's why people called it as a Vishnu temple. But later in period, when scholars came, they studied the iconography and they said, no, it's not the figure of Vishnu, not Chaturbhuja. It is, that's Dakshina Murti Shiva. So that's also very important that I will discuss in my presentation. And if you will notice over here, it's a very less known thing, but people know the temples of Khajuraho have relation with that's Tantra. Actually, it is not Tantra. It is a Natha cult. Like Gorakhnath was the main teacher of Yashovarman or their ancestors. So that's why I mentioned they were the follower of Natha cult of Shaivism. But later, when the Pratiharas carried a figure of Vaikuntha Vishnu from Himalaya region and the Yashovarmana defeated them, he carried the Vaikuntha Vishnu temple, Vaikuntha Vishnu figure in Khajuraho. So it is very interesting that those were the follower of Natha cult of Shaivism, but they started their journey of temple art in Khajuraho from a Vishnu temple or Vaikuntha Vishnu temple. And also, when I followed many inscriptions of Chandelas, they compare themselves, some like Achyuta or some like the Vaikuntha. They compare with their name or the power of prosperity as per the name of the Lord Vishnu. So that's I mentioned the second thing. But when I'm talking about Vaishnavism, so now today we have to very clear. When we're talking 2 days about the Vaishnavism, people think about the Rama and Krishna, not about the Vishnu. Even now 2 days, people can't understand one specific religion which was very popular in that period, which was known as a Pancharatra, in which the Vaikuntha Vishnu was the main deity and Vasudeva was the main supreme being. So that's why when I read the inscription of Khajuraho, I found this thought. So I decided to share which kind of Vaishnavism was in Khajuraho. So if you'll read my slide, as per the verse number 42 in the inscription of Lakshmana temple, the image of Vaikuntha, it is the verse 42 which is mentioned in the inscription.
and it's very interesting. Is telling how a figure of Lord Vishnu was traveled from Kailash region, or which you can say the Bhutan now, and that came to the Kangra area, or which is called earlier Kira, then came to Sahi or Afghanistan area. Then by the Herambopal, it was carried by the power of horse and elephants and placed in his capital in Kannauj. And during the time of Devpala, Yashovarmana defeated him and took that figure and installed in Lakshmana temple. So it was a big attempt. I think that kind of image has a great affinity or importance during that time. That's why they placed and they constructed a temple of Lord Vaikuntha Vishnu in Khajuraho. So, which kind of that religion and cult and sect was followed in that iconography or in that figure? So it gives some idea about the Kashmiragam Pancharatra cult, which was worshipped in Kailash and came down at Kira or the Kangra region of Himachal Pradesh with icon of Vaikuntha that later carried by Kannauj Harampal, as I told you earlier. Here we have that figure, which is now in the sanctum of Lakshmana temple. Look at the elaboration. The main deity in the sanctum with 4 faces, we can see only 3. So that's called the very special historic form of Lord Vaikuntha Vishnu, which came from the Kashmir region. On the right side, it is a lion head. On the left, it is a boar head. In the front, it's a human head. And rear side, there's a head of Kapi. And Dr. Devananda Desai, especially, they studied well and defined well about the temple architecture. They said the Lakshmana temple, just not a temple. It is a representation of the Kashmiraga Pancharatra philosophy, like where the Vaikuntha Vishnu in the center, who is the Vasudeva. So in the next slide, I'm going to detail about what is the Pancharatra. So Supreme being the main god, in this Pancharatra, they beautifully adopted the philosophy of Sankhya Darshan. So like they mentioned Kapiladi Rishi, they mentioned in the description. So when you will see that in the Sankhya, they have the 25 different kind of tattvas. So first one is Purush and Prakriti. When they come together, then the Mahat and the Buddhi and Man and Ankar comes out. Then after that, we have the Pancha Mahabhut Tattva, Pancha Tanmatras, Panch Jnanindris, Pancha Karmindris. 20 manifested things comes in this world. So that theory beautifully adopted by Pancharatra persons and people, and they beautifully narrated in this concept, like the Supreme Being mentioned as a Vasudeva or a Paravasudeva. When he met with the nature called Lakshmi or Shri, then the 6 gunas manifested. Those 6 gunas are known as Jnana, knowledge, Aishwarya, lordship, Shakti, potency, Bal, strength, Virya, virility, and Tejas, splendor. And when the 2 gunas comes together, then they create another form. So like with the Jnana and Aishwarya, Sankarshana comes, which was later known as a Balarama. When the Shakti and Bal comes, then the Pradyumna manifestates. When that Veer and Tejas comes, then it manifested in the form of Aniruddha. The most interesting thing is that later in period, the Gauni cult or other, the Krishna follower, they beautifully embedded or combined all these important characters of Pancharatra with the family of Lord Krishna. Like they call the father of Krishna as Vasudeva, the brother Balram as a Sankarshana, the son of Krishna was Pradyumna, and the grandson as Aniruddha. But these are the Vyuhas which manifested from the Vasudeva. And from these Vasudeva, the 12 different Vyuhantras, like for each and every Vyuha, like it's called Chaturvyuha, from each and every Vyuha, the 3 Vyuhantaras were killed. Like from Vasudeva, it was the Keshava and Narayan and Madhava. From Sankarshana, it was Govinda, Vishnu and Madhusudana. From Pradyumna, it was Trivikram, Vamana, Sridhara. And from Anuruddha, it's Rishikesa, Padmanabha, and Damodara. Then avatars, door guardians like Jaya Vijay, Data Vidata, and Garuda Shesa, all those are the multiple manifestations. So if suppose when you are visiting to the temple of Khajuraho, you will find Vaikuntha Vishnu in the center represents Vasudeva. Like in the next it is mentioned. So when you're talking about the Vaishnavite philosophy, so Param Vasudeva represents the Vaikuntha Vishnu that in the shrine. Then in the outer main niches, you will see the Varaha incarnation. There will be Haigriva and the Narsimha. So these 3 represents the Sankarshana,
Anirudh, and Pradyumna. When you will see the outer wall of the Lakshmana temple, then you will see the 12 different form of Lord Vishnus are there with the changing of their attributes of Sankh, Chakra, Gada, Padma. Those are called the Vyohankaras. So Lakshmana is the one of the most important temple to understand the Pancharatra philosophy. So if you will understand the Pancharatra philosophy, then you can decode it with the Vaishnava temples of Khajuraho. That's why I mentioned how I got all these references. So first I got these references in Agni Purana. In the Agni Purana, it's very clearly mentioned about the Vaishnava Panchayatana temple. There should be temples of Vamana, Hagriva, Varaha, Narsingh with Vasudeva temple. Vasudeva temple is Vaikuntha temple. So we have Lakshmana temple as a Vaikuntha temple, and we also have the Vamana temple in Khajuraho. We have the Varaha temple in Khajuraho, and we found some big size of statues of Narsingh and Hagriva. Those are in museum. But also, whenever you will visit any Vaishnava temple, you will find these images, Vaman, Varaha, Hagriva, or Narsingh in the main niches of those temples. But a big question was mine, where this thing was mentioned, where those things should be placed, like the Varaha should be placed on the south niche, and suppose the Hagriva should be placed on the north niche. So why we should put these figures in those directions? So when I was doing my work on Lakshmana temple, I found beautiful detail on Mahabharata in the Shanti Parva of Moksha, Dharma Moksha Parva, I think that's the name, chapter 347 and verses 2, 2nd and 3rd. In that is very clearly mentioned. The Pinda was originated from Varaha, and those were originated in the western part of the universe. So that's why we worship our Pitras towards south. Towards south. So that's why when we worship the Pitras, we worship towards south. So that's the reason we put the Varaha over there. But in the third sloka, it's beautifully mentioned. So with the Hagriva, that partaker of libation and other offering made in sacrifices that appeared in the great ocean on the northeast. So that's why we put the Hagriva in the north part of the temple. So when I will show the slide of especially Vamana temple, I can make a difference to you. Whenever they put the Varaha, it is on the south side. When it is Hagriva, it is the north side. But later, a lot of restoration was done in different temples, so they misplaces the images. So that I will try to share with you. Everything is fine, sir? Everything is going fine? Hello? Yes, G. It's fine. It's fine. The presentation is fine? Yes, very nice. Okay, because Go I ahead. can't see myself. I can't see myself in my screen. Yes, you are audible. You are visible. Your slides are good, and it's going on well. So please carry on. Thank you, sir. Thank you, sir. So here I'm now one temple of Vishnu, which is called Jagadambi. So actually, this temple is dedicated to Lord Vishnu. But when this temple or these temples were found, there was absence of main image in the sanctum. So local king plays the figure of goddess. This is the figure of goddess, which we call the Parvati. And he conducted some yagna in that temple. The name of king was Maharaj Pratap Singh. He conducted Satchandi Mahayagna in this temple and named this temple as Jagdambi temple. That's why it's called now Jagdambi temple, but originally it's a Vishnu temple. And it was the second Nirandhara temples without ambulatory. So like earlier they started, the Lakshmana temple was Sandhara temple and Vishnath was the Sandhara temple, but the Chitragupt and Jagdambi temple, these were the two Nirandhara temple in the Western Group complex. So if you will see the eastern side of Khajuraho, only we have Parshvanath temple is only Sandhara temple. Rest temple in Khajuraho are just Nirandhara, means without ambulatory. Here we have some details of Adhisthana, which kind of decoration is on the wall and which kind of images are on the wall of the temple called the Janga. It is in this slide. But in the main sanctum, there are the three different phases. In these three phases, we have the main niches in three different levels. In the top level, we have one niche where they have a god and goddesses, or a pair of god and goddesses, a couple of god and goddesses. At the middle niche, we have a pair or a main deity or incarnations.
In the lower niches, we have small minor images. Like in this temple, when you're watching the when you're watching the southern side of this temple, in the top niche, there is a Narvaraha. In the middle niche, there is Lakshmi Narayana. In the lower niche, there is a Garuda Vishnu or Garudasan Vishnu. When you will move towards western direction, then you will see the Brahma and Brahman in the top, and the Shiva Trimurti in the middle, and the Vamana in the lower niche. But in the northern face, you will see the Vishnu in the Sambhanga Mudra with Shiva and Parvati, like you can see in this slide. So it is a slide of western side of the temple. So extreme on left, you're watching, that's the Varaha, which is on the top niche. So you can see beautiful goddess Earth touching the snout of Lord Vishnu and riding on the canopy of serpent. Then you're watching beautiful couple of Lakshmi Narayana or Vishnu and Lakshmi that is placed in the middle niche. It's very artistic and very elaborated, a very beautiful figure in this temple. The third one is the Garudasana Vishnu. So look at the Garuda's leg is turned like he's flying on the space and holding the Lord Vishnu on his shoulder and uplifting up, and the Vishnu sitting and relaxed in mood. Then it's all these three images are in the Western Bhadra. So in the top, there is a Brahma and Brahmani. So Brahma is identified with the long beard and the Sruva or the ladle on his hand and Vedas. The middle one is Sambhanga. The Trimurti Shiva is there, the combination of Brahma and Shiva. Then the third one that is in the lower niche, that's the figure of Vamana. Then after here, we have the two images in the northern side. In the top, that's Sambhanga Vishnu, keeping that Shankha, Chakra, Gada, and one hand is broken. In the middle niche, there is a Uma Maheshwara or the Shiva Parvati. And this temple also has beautiful Dikpalas because it's a Nirandhara temple, so all Dikpalas are visible outer side of the temple. The most beautiful thing that's very rare in this temple, here we can see just extreme on left, you will see beautiful figure of Ugra Yama. Means the Yama in very aggressive form. You can see the teeth, beard, he's keeping Khadwang and Kukkut in his lower hand. But when you will see the second slide from the left, it is again another form of Lord Yama. But here Yama is not aggressive, not Ugra. That's called the Shanta Yama. So he's holding a Damru and the Danda and the Kukkut again sitting on his right hand, and he's keeping his paralotus and his vehicle, that's the Mahesha or the water buffalo sitting down. The next one, the third one from the left, it's a figure of Agni. And the fourth one is a beautiful figure of Kubera. Then this temple have beautiful erotic couples. If you're watching different erotic poses, those are mentioned in the Kama Sutras, starting from left side are there. But the fourth or the first one from the right, it is very, very important figure for us today, because now what is happening, LGBT group, they are start talking about lesbianism was or the homosexuality was the part of Indian culture, and it is manifested in Khajuraho. So here we are watching the two persons, two mans are there, where one man holding genital of a man and one hand is up. Second person who is nude, who's holding two hands doing like namaste. So it is not a sexual act. Actually here is Chapanakas. Those are highly elaborated and taunted in temples of Khajuraho. So here is Chapanaka who were involved in different sexual act. And one Sanatana Sadhu or the Vedic Sadhu or that the Hindu Sadhu caught him red-handed. Now he is threatening him. So that's why he is just saying, sorry, sir. So he's putting hand on excuse and one hand up of that Sadhu just going to beat him. So here is the Pratarana, not the sexual act. So it should be very clear in the society. We don't have any advertisement of homosexuality or lesbianism in our temples. And also it is some beautiful apsaras starting from left side. One is watching in the mirror, second is yawning, third one thinking after the love letter, and fourth one applying the vermilion on a four line. But look at the fifth one from the right, it's first one. It's very interesting. Why it is so interesting? Because she is not smiling, she's upset. She's putting hand in a way like she's worried. So might be so got a message her husband has died in the war, or he is not coming on the right time when he should come. So that's why she's upset and looking a little bit upset and bad in expression. So we saw that Jagdambi temple, it's a perfect Nirandhara temple in Khajuraho, in a full development with Ardhamanda or Mandapa, Mahamandapa,
Antral and Garbhagriha. So we have the second temple that is an eastern side called the Vamana temple. So Vamana temple was also the same as Jagdambi temple. It has a Mandapa, Mahamandapa, Antral and Garbhagriha. But the beauty of this temple is this: when the temple of western group of the temple are Bahu Andaka, like their main Shikara is divided with multiple Shikara, like main Shikara connected with Urashring, Karnashring, and with different Rathas like Pratiratha, Anuratha. But here we have just one Shikara. So it is the first temple of Khajuraho that was Ekandaka. And we have three Ekandaka temple like Vamana, Adinath, and Chaturabhuja. So these are the three temples. Those are Ekandaka. Rest of temple are Bahuandaka with multiple Shikara. It has also a beautiful Apsaras. The temple is situated in the northeast of local village. So when you're visiting to the local village called Basti area, then you can visit toward northeast of the water body called Ninoratal. Then you can see two temples. Extreme on north side there is a Vamana temple. That's middle of the field there is one small temple that's called Javari temple. So as we know that the Vamana is the fifth incarnation of Lord Vishnu, and rest details are it's a Nirandhara temple, as I told you. And what is the timing of this temple? So it shows some specific element, and that proves it was contemporary with Vishwanath temple or with Kandaria Mahadev temple, because these two temples, Kandaria and Vishwanath temple, have those specific elephants in the images of Kakchasanas. So like you can see in this figure, extreme on left and top, one small elephant is there on the Kakchasana, the image of Kakchasana. So that resembles, that temple was constructed during the period of 11th century when Kandaria and Vishwanath temple was constructed. Also, its images are very close to the Kandaria Mahadev temple, like very slim and tall. And it has Ashtadikpalas in the top row. So like there are the 16 Ashtadikpala. So 8 are at the Mahamandapa, 8 are on the Garbhagriha area. At the same, we have the 16 Dikpalas, like 8 in Mahamandapa area and 8 on that's Garbhagriha area. But here on the main Bhadras, as I said, some temple have the perfect placement of those god and goddesses. Like here, in the southern Bhadra, in upper area, you can see Brahma and Brahmani, but the middle niche, here we have the Narvaraha. Like it is mentioned in the Pancharatra, Vara should be towards south because Pitras are leaving towards south. There in the western Bhadra, there is a Shiv Kalyan Sundaram, Shiv and Parvati. It is also part of architecture. Generally, in all Nirandhara temple, there should be combination of Brahma Brahmani, Shiv Parvati, and Vishnu Lakshmi. So that you will find in all the temple. But in the middle niches, there should be the different form of figure of Shiva and Vishnu. So here we have the Narvaraha, then the Narsimha towards west part of the temple. And it is the same, like when you are visiting to the Lakshmana temple, you will see the same. So Varaha in the southern niche and that Narsimha in the western niche of Lakshmana temple, then the Hybrid in the northern niche of the temple. So if you see the lower one, like upper niche have the Vishnu Sambhanga Mudra, the middle one has the Vamana temple, Vamana image, but the lower small niche has the Hygriva. So that I'm going to present you in the next slide, like here. In the top, that's the Brahma and Brahmani on the southern Bhadra. In the middle niche, there's a beautiful figure of Vishnu, but many images are broken because those were in the local field, and the farmers or the landlords were putting a lot of stuff, and sometimes they were playing with the statues also. So a lot of images are broken very badly. In the western Bhadra, here we have beautiful figure of Shiva Kalyana Sundaram, where Shiva holding the hand of Parvati and taking the feras. And the next one is the figure of Narsimha. Its head is mutated. Then here we have the three images towards northern Bhadra. Like in top, there is Lakshmi Narayan. In the middle, there is Vamana. And then lower one has a beautiful figure of Hygriva. But also in the Kaplis, like that's called that Antaral area in the temple. But outer side, we call it Kapali. So generally in the Sandhara temple, at the Kapali area, they put the erotic couples. But in the Mara temple, they put the figure of Vishnu and different god and goddesses. So in the northern side of Vamana temple, some figures are missing; those are empty. But in the outer part of the temple, I saw these two images are there.
Like extreme on the top, there's a one beautiful Yogasana Vishnu. Vishnu sitting on the meditative form, keeping that's Gada and Chakra. And the lower one has a figure of a god that's not defined because it's badly eroded. But when you're watching the southern Kapali, then you can see some order of images. Like in that square, the lower right side, there's the figure of Gauri that's placed in the lowest niche. Then the Gajalakshmi that's placed in the middle niche. Then after there's a one small balcony. Above the balcony, there is a beautiful figure of Kartikeya, Skanda Kumara. In the top niche, there again they put the figure of that's the Agni and the Swaha, because it's a southern part of the temple. Then it also some beautiful apsaras. As I said, these have a little bit. They looks very close to the Kandaria Mahadev temple, like the images of Kandaria Mahadev temple, are very slim and tall. The specialty of figure is they always wearing some small kind of crown, and the big Judas. Generally, their ornamentation is not finely carved. They just decorate it as a strip. So here we're watching some 4 beautiful images where they're playing with their breast, or they're yawning, or the central lady feeling shame after reading a letter. And another one is plucking the thorn. But if you the next one, she's playing a flute. Some more images are ahead. Extreme on left, it's really very fantastic, very interesting figure in this temple, where first time you can see a lady just watching on the mirror and just trying to watching and balancing her earring. The second one also very nice, like she's keeping a one veena and playing the veena. Look at the dand and look at the tumba behind, and how beautifully she's just turning her fingers. But the center one is very important, because here you can see she's putting off her dress. We call it Rati Taptika or Vivasta Jagana. But if you'll pay attention, if I will widen a bit, you can see one scorpion. You can see one scorpion on her right thighs. So Madam Desai is calling, scorpion is called a Kharjur in Sanskrit. And because she is a carrier or Vahika of Kharjur, that's why this town was named as a Kharjur Vahika. And also in our in local literature, we have a lot of folk songs where we're talking about the Chalagayo Papi Bichua. So Bichu is representing Kamagni. It is similar, like the Chamunda have a scorpion on her tummy, which represents Jatharagni, the hungriness. So it is a scorpion is a resemblance of fire Agni. So that's why it's called Kamagni. The next one is showing or pointing out her finger towards an attendant who is painting her foot. That's broken in this figure. Next one is a mother who is keeping a bunch of mango. But in Jainism, this goddess is called Ambika, who carries baby Abhankar and a bunch of mango. And it's the main image inside the temple. That's the beautiful figure of Vaikuntha. That's the Vamana. But if you see, there are the 2 pedestals. One minor pedestal placed in the lower and the main statue is above. So sometimes we have a doubt, it was the main deity of this temple or it was placed later in period. So, but it is sure there was one Vamana temple. So on the pedestal, there is a beautiful figure of Prithvi. Then 2 men standing, 2 attendants standing on left or right. They're keeping Shank and Chakra, so those called Shank and Chakra Purus. And on the Parikara, there is a figure of all incarnations. So all Dashawataras are beautifully placed around the figure. The next temple is called Javari temple. It is a masterpiece of Khajuraho. It is not a big temple, it's a very small temple. Some people explain it when Kirti Varmana defeated the Kalchuris. So he decided to construct another Vaikuntha temple as his great grandfather did. So this is very identical, smaller in size with same elaboration and decoration as we have in Lakshmana temple. So it is a beautiful Makar Torana, it has a beautiful ceilings, it is a beautiful Apsara temple in Khajuraho, which is very small in size, but it also have erotic images, beautiful Apsaras and beautiful couple area. You'll notice over here, it's the main entrance of this temple, where you can see the beautiful artistic Makar Torana. If you will see its ceilings are also beautiful
carved like a wooden carving. And especially the Dikpalas and Astvashus in this temple are framed in a special kind of decoration. And this kind of images I saw, one ruined temple close to Gwalior is called Kankan Mat. That's from the Kalchuris. It was constructed later period in Khajuraho, but it has a lot of influence from other feudatories or other artists. Then which kind of images are on the central niches of this temple that you can see here, like in the top niche, upper niches, we have the Lakshmi Narayan. In the lower niche, there we have the Narsimha. In the western Bhadra, we have the Uma Maheshwar and the Surya Trimurti. Then after in northern Bhadra, we have the Brahma Brahmani and Varaha. So as I said earlier, in some temple, we can't see that same symmetry or same placement of images as we saw in Lakshmana and Vamana temple. So here we are watching the southern Bhadra. So at the top, there's a beautiful figure of Lakshmi Narayana. And then Narasimha is here. If you'll see the quality of art, those are smaller in size, but the proportion are fantastic. Anatomical details you can see, like you can see the navel are very deep in these images. The curvatures are also beautiful in their belly, and the folds are also very perfect. Look at that figure of Narasimha, the bend in the body of Narasimha, and the way that Hiranyakashipu is coming from between the leg of the Lord Vishnu. Here we have the Uma Maheshwara and that Trimurti of Brahma and Shiva and Surya. Then after again, in the northern side, we have the Brahma and Brahmani, and it was the figure of Varaha. Its head is broken. But it has also some beautiful apsaras. So there are the two main apsaras, like one is the who is keeping her baby, that jumping on her lap. The second one is keeping a pot of wine, pouring a man who is sitting down. And look at her hair dress. It's nicely decorated. And also the earrings are fantastic in this figure. Then here we have some erotic couples. So as I said, these are references from Kama Sutra. So in the second one, it's the most erotic figure in this temple. And it is mentioned in Kama Sutra in some Prayag chapter. It's called Dvitala, in the second level of love. So like some people have that kind of standard with the love. So these kind of couples, like look at these very smaller images, but they're very perfect anatomical details and the movement in their body and flexity in the body. And this is the main icon. That's very much like figure which is in the Lakshmana temple. It had 3 heads. It's broken and stolen somewhere else, but it is all attribute very similar like Lakshmana temple. It was a figure of Vaikuntha Vishnu. And here is the last. It is Chaturabhuja temple. As I said earlier, because local people could not understand iconography. So this is a temple that's not following any kind of discipline of iconography. It's very difficult if you're trying to find out any iconographical support from this image. It's not following anything. People are calling it Dakshinamurti Shiva or Yoga Vishnu, but it is not depicted in that order. And it's the only figure in Khajuraho which is not standing Sambhanga when it is in the sanctum. Generally, whenever any image is placed in the temple, like you saw the Vamana or you saw the Vaikuntha Vishnu, all those images are Sambhanga, straight. But here, the central deity is not Sambhanga, it is multiplied, it is Devhanga Mudra. So that's also something very interesting. Even temple very smaller, but it is the tallest image of any deity which is placed in the temple. And it's not so highly elaborated. Its apsaras are very minor. They don't have much more ornamentation. Figures are also not so elaborated, but they have 3 levels of images. Like on the top, there is the beautiful Vidyadharas or the flying figure. They have the same Ashdikpalas and Ashtavashus in the top and middle, top and lower row. But in the niches, in the main Bhadras, they have some very special images. Especially, I want to share one figure that's very rare. That's a single figure in Khajuraho. But before that, why this temple is called Chaturbhuja? Why I just asked this temple as a Vishnu temple? So here we are watching that the entrance door lintel of the main shrine, main sanctum sanctorum. So in this door lintel, you can see Brahma on the extreme left,
Lord Vishnu in the center, and that's Shiva on extreme right. Then Navagrahas are placed middle of the panel. But if you will see here in the lower area, in the Dwara Shakha, you can see the Dwarpalas on extreme right and left. Those are Shaivite Dwarpala like Nandishwar and Bhairava. And the main deity is inside the sanctum, and Ganga Yamuna is also there. Here is the main icon. And please look at this figure, very beautiful. Its height is 2.75 meter. So you can count about it's 9 to 10 feet or more than that. And it is four-armed. It is not following any attributes like it's not carrying serpent or trisul. It is not carrying Sankh, Chakra, Gada, Padma or anything. It's not carrying any Brahmas or attributes, anything. But just we can understand one hand is keeping books and is paralotus. One hand in the form of Chinna Mudra or Jnana Mudra. Might be the lower hands were keeping some rosary or kamandalu. Those were broken. But when you will start following attendants, goddesses are standing, they are with Jatamukut. God is also with the Jatamukut. And the left goddess is wearing kind of a preth on her headdress. So it shows that it has influence of Shaivite or Tantric concept. So here I have the detail of Bhadras, like in northern Bhadra, there is a Narsihi. And the lower one is carrying Vishnu. The eastern one is carrying Shiva and Yogashana Surya. Then the southern one is carrying Ardhanarishwara and four-armed God. So as you will follow the top, I wrote Narsihi with bracket of Pratyangara. So actually when I was following who is Narsihi, I didn't found any story related with the Narsihi. So some people are saying it's a yogini or it's from the Saptamatrikas, but always I found in Saptamatrikas there is no presence of Narsihi. So who is Narsihi? Why it is placed in this temple? So look at here, beautiful figure of Narsihi. She is a lion-headed image above to the Vishnu. So when I just start following the story of Pratyangara, I was shocked. And I got the real meaning behind the story. The story of Pratyangara is that, like when the Lord Vishnu took the form of Narsiha and just killed the Hiranyakashipu, and he drank the blood of Hiranyakashipu, so the evil power was entered in his body. He became upset and anger and mad, and he started killing all the animals, all the living beings. So everyone just run. All gods were run to the Lord Shiva and asked, please help us to control the Narsiha or the Vishnu. So as per the story, the Lord Shiva took a form of a bird and started flying around the Narsiha to destroy, to divert his mind, to save the rest of the people. But the moment when the Lord Shiva was flying around the Narsiha, another bird came from the body of Narsiha with two heads and started going to pray to Lord Shiva. So then Shiva meditated for Shakti, and Shakti turned in a form of Narsihi. When Lord Narsiha saw the Narsihi, he fell in love, and as per the story, Narsihi came close to Narsiha and sat on his lap. Then his anger calmed down, and again he turned in the form of Lord Vishnu. So here they are trying to define the tantric or the aggressive form of Shiva and Shakti. But just opposite in the southern side, they placed Shantarup of Ardhanarishwara. So like one combination showing the Shakti and Vaishnav, another side it's showing the Shakti and Shiva. Like in the lower niche, there's a Vishnu, then they have the Shiva and Surya, then they have Ardhanarishwara, like in the top, you can see very artistic figure of Ardhanarishwara. Look at the curvature on the belly of goddess, and the fingers are very long and soft in turn, and the finger of Shiva is very straight, and the expression are also very different. The fourth figure is not defined. Maybe it's a figure of Bhikchatana, Shiva or Agni that we can't see. So these are some very important images in this temple. So what I understand, the Vaishnavism in that time was in the form of Pancharatra, and in the Pancharatra there were the worshipping of Vamana, Varaha, the Vaikuntha or that Narsiha or Hagriva also.
And especially Chaturbhuj temple was constructed outer periphery of the Khajuraho, like Jatkara temple. And it is towards south area of the Khajuraho, because when we are doing any avichara, it should not be inside the town. That's why it is out of the town. So all those temples in Khajuraho were constructed just not as per the plan, as per the placement. Those were mentioned in different Puranas. So there should be another level of research in Khajuraho rather than to study about Khajuraho as just the temples or erotic art. We should now start learning or start telling the details of story. Like if I will get another chance, I want to discuss about the Varahas of Khajuraho, especially Yagna Varaha is very fantastic. And I can share something very special, very rare. So here I'm going to conclude my lecture. So here I have my contact number, my email address is there. I'm also in Twitter. You can tweet, you can ask any question. I have my own YouTube channel. It's called Khajuraho with Anurag. And I'm also in the Instagram with the Master of Khajuraho. So I'm in different platform. You people, if you want, you can contact, you can just chat with me. So here I'm now. Thank you, Raji, for this very informative and illustrative account of. Please Khajuraho. click on stop presenting. Please click on stop presenting. Yeah. Yes. So it was a very nicely presented paper. Thank you, With sir. lot of informations and very interesting informations, and some of the some of the points which you told were very important. And certainly one thing that has brought to light was like uh, during conservation at some point of time, some displacement or misplacement of the Dwarpalas or other deities which are basically directional has taken place. So Lakshmana temple, especially Lakshmana temple, small shrine. Yes, sir. Yes, so that is very important aspect of it, because in our tradition, directions always mattered a lot, and the value of the place value was always very important, and that has to be, I mean, within one temple and also within the complex or within this cityscape. Yes, all that placement was very important, and I don't think there has been any work so far on this aspect at Khajuraho. Yes, sir. Because Actually, now no one is doing any proper research work Right. in Khajuraho. So I think you are the right person for doing so, because you are there at Khajuraho. You see Khajuraho in and out, and a lot of things like spatial distribution in the layout of the cityscape, all the temples of different deities in different time frames. That can also be taken up in your studies further, and that would make a very good study about the because in South India or in the Eastern India, the temple complexes they grew in a complex form within a fortified prakaras. So their layout is very well defined. But in this area of India, that the prakaras were not there, but the entire space, the cityscape was utilized for this. So there, the placement of temples, as well as within the temple, the placement of different deities is very important to study. And the stories that you told to us, definitely we all are enlightened by you on those aspects. And I hope there certainly will be one or two questions among the listeners. So if there are any questions, I invite one or two questions if there are. Any questions? Queries? Anuragji, with your kind permission, just may I ask sir. about what happened recently in Khajuraho, the synthetic color which apply on the temples and that all. Can you please say what's about? Sir, actually, on 2000, we did one restoration, and we excavated a huge temple. That's called Bija Mandal. That was the latest discovery in Khajuraho. In the last year, P.K. Vishwa sir, because he was
the person who did excavation in that area. So beautiful lecture was conducted by him on the last season. And the second restoration was done in a small shrine of Lakshmana temple. That was earlier plastered, the top portion was plastered, and it was leaning towards south. So very smartly, they number the blocks and dismantle all the blocks, then reassemble. And the third one, which is really, it was very important for me especially. Reason was that because Madam Desai was always trying to find out the place, how this temple was constructed, where were the artisans were living. So where were the artisans were carving the stone, there should be a big heap of waste of carving. But we didn't found any place. So what happened when the basement of Parshvanath temple was open for restoration, or that Bijamandal was restored, we found the basic idea. What they were doing, first they carve all the blocks of stones, they collect all the waste of carving. When they were constructing the plains of the temple, they put unshaped granite rocks, waste of carving in soil, and they start making the platform or the main base of the temple. So if any compression was going on, those chiplets and soil and rocks were crushing and maintaining hard platform to them. So even suppose any earthquake came, so all main temple are placed on a big rocks. So there is no shock on the base, but when the main temple itself is going to shock, there's enough margin on the basement, they can manage it. And also temple built by with the dovetail system or interlocking system. So there was enough space. That's why these temples are survived from last 1,000 years. So after that, I don't know what happened, what is the fund reason or whatever. Chemical restoration is going on, but now we don't have any kind of main restoration that has to be done. Even we are not getting any kind of seminars from Archaeological Survey of India where we can discuss about new development. Like what I did, still till today, people are in dilemma what they're listening in Light and Sound Show. There was a story of Chandra Varman. In the description, they mentioned the Chandatreya. Who is Chandatreya? People don't know. And if you will follow my YouTube channel, I followed that story. There is a one Dattatreya who is the son of Atri. So actually, three God blessed the Anusuya. So three sons were born. So first was Chandatreya. That was the form of Brahma. Later he was mentioned in the text as a Soma. Second one, Dattatreya, that's blessed by the Vishnu. And third one was Krishnatreya, which is known now as a Durvasa. So a lot of knowledge I found with my during research. So if people have the time, please follow my YouTube channel where I mentioned the story of Chandatreya. Also, I followed the travelogue of Captain Bird. He's telling how was this complex. It was not unknown. People were visiting regularly to Matangeshwara. He told about this beautiful complex. Then Cunningham, when first came in 1956, what was the name? So in these 37 videos, what I just tried to collect all the reports. I tried to explain the history of Khajuraho rulers with the reference of inscription. Like I didn't got a single reference of Kandariya Mahadev temple, like any temple was built by Vidyadhara. I didn't get it. But still people calling Kandariya temple was built by Vidyadhara. I didn't get a single reference of Kirti Barmana who built a temple. But generally people call it all temples of Khajuraho were constructed by kings. But I have a reference where two businessmen, one Hindu with Grahapati, Kokala built a temple of Vaidyanatha, and one Jain merchant, Pahela, built a temple of Parshvanath or Adinath temple. So Mr. Ramnath, please brief. Okay, Let's I'm talk. concluding, sir. I'm concluding it. Yes. It is a long, it can be a long discussion on Khajuraho because the knowledge you have and the amount of information that is stored in Khajuraho is endless. So we can keep this aside for another round of discussion sometimes in future. So for Just the continuity of allow me to thank all the people. So first, I am very thankful Bhuvan sir to introduce me, and Bhujang Borde sir, thank you also to follow. The rest of the colleagues, they are with me. I'm just an ordinary man, as you just listen. My education background is not archaeological part or the history part. I have kind of affinity interest to learn. So still I'm a student, I'm trying to learn. I'm very thankful for Iskan sir. He gave me a platform where I can join all kind of archaeologists, historians, and expert of this field. So I'm extremely sorry if I did mistake. I unknown way I said something that's not proper on the way. So extremely sorry. Again, I'm going to
say happy Teachers Day to all scholars of this country. Thank you very much. Thank you. So it's time for next session, I think. So I thank all the people here, and also to Professor Iskan Mishra ji for giving me this opportunity to chair this session. This wonderful paper. I congratulate again once again Anurag Shukla ji for his continuing the research on important aspects of temple architecture and iconography and all kinds of Thank you, sir. Thank you, everyone. So thank you very much, all the panelists, and back to Mishra ji for next session. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Dr. Bhuvan Vikram, sir, for chair the session, and Mr. Anurag Shukla for giving a nice talk on Vaishnav Temple of Khajuraho. Sir, all of you, thank you. और एक इंफॉर्मेशन है, आज के टॉक के बाद वैलिडेटरी सेशन का एक छोटा सा प्रोग्राम है। मैंने 4 बजे रखा था, हो सकता है थोड़ा समय और लग जाए तो शायद 5 बज जाए। उसके बाद आधा घंटे का एक प्रोग्राम है 40 मिनट का, यदि समय मिले। लिंक वही है जो वेबिनार की है, तो अपना समय जरूर दें। धन्यवाद सर। नेक्स्ट टॉक eminent speaker Mr. Bhujang Raja Rao Bobade, Head and Coordinator Research for Resurgence Foundation, Nagpur. Welcome, Mr. Bhujang sir. Welcome. Thank you. Chairperson Dr. Om Siva Ligade, Associate Professor History, Shiv Jagrati Senior College, Nalegaon District, Latur, Maharashtra. Co-chairperson Dr. Kulkarni Jayasri Ramesh, Professor and Head History, Venkatesh Mahajan College, Dharashiv, Maharashtra. Welcome all of you, and I am request to Dr. Om Siva Ligade sir, please chair the session, and Madam Dr. Kulkarni Jayasri Ramesh, please co-chair the session and introduce our eminent speaker, Mr. Bhujang Raja Rao Bobade. धन्यवाद सर. Thank you so much, Mishra ji. Good morning, all of you. गवर्नमेंट MS गोलवलकर कॉलेज रेवा मध्य प्रदेश में आयोजित नेशनल वेबिनार सीरीज का आज आखिरी दिन है। इस वेबिनार सीरीज को सफल बनाने हेतु प्रयत्नशील इस वेबिनार सीरीज के कन्वीनर प्रोफेसर स्कंद मिश्रा जी, इस कॉलेज के प्रधानाचार्य और उनकी सभी टीम, आज के इस सेशन के को चेयरपर्सन डॉक्टर जयश्री कुलकर्णी मैम, इस सेशन के एमिनेंट स्पीकर मिस्टर भुजंग बोबड़े सर, इस सेशन में ऑनलाइन मोड से उपस्थित सभी मान्यवर, इस सेशन का चेयरपर्सन होने के नाते मैं उपस्थित सभी का स्वागत करता हूं। इस सेशन में एमिनेंट स्पीकर माननीय भुजंग बोबड़े सर डेवलपमेंट ऑफ म्यूजियम्स इन इंडिया इस विषय पर हमें मार्गदर्शन करने वाले हैं। म्यूजियम्स के बारे में मैं इतना कहूंगा, म्यूजियम्स एजुकेट पीपल. Museums is a great source of socializing and learning. A museum provides a multiple social contexts where families, peer and school groups gather, socialize and learn together. As physical setting, museums offer encounters with original objects supported by secondary objects. Learners may see, smell, hear, read, touch and get engaged in numerous ways with these sources. So museums play a significant role in lifelong learning. माननीय बोबड़े सर म्यूजियम्स के बारे में हमसे डिटेल में मार्गदर्शन करने वाले हैं। इस सेशन के जो एमिनेंट स्पीकर माननीय बोबड़े जी है, वो म्यूजियोलॉजी और हिस्ट्री में मास्टर हो चुके हैं। प्रारंभिक समय में उन्होंने शिवाजी कॉलेज उदगीर महाराष्ट्र में लेक्चर के रूप में काम किया है। माननीय बोबड़े जी LP यूनिवर्सिटी पंजाब में बोर्ड ऑफ स्टडीज के मेंबर है, साथ ही साथ एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई और अहमदनगर, दहीवाड़ी, संगमनेर यहाँ के ऑटोनमस कॉलेज में भी बोर्ड ऑफ स्टडीज के मेंबर हैं। माननीय बोबड़े सर म्यूजियोलॉजी में एक्सपर्ट है। गांधी रिसर्च फाउंडेशन जलगांव में उन्हें म्यूजियम क्यूरेटर का 8 वर्ष का अनुभव है। साथ ही वे अंतरराष्ट्रीय वस्तु संग्रहालय समिति एवं 5 विश्वविद्यालयों में संग्रहालय समिति के सदस्य भी है। उन्होंने अब तक इतिहास, पुरातत्व और म्यूजियम के संबंधी 38 कोर्सेस कंडक्ट किए हैं। नाउ ही इज परस्यूइंग हिज PhD डिग्री ऑन म्यूजियम्स।
अब तक उन्होंने 148 म्यूजियम्स को विजिट करके डॉक्यूमेंटेशन किया है। उनके अब तक 2 एनसाइक्लोपीडिया और 19 रेफरेंस बुक प्रकाशित है। साथ ही साथ नेशनल इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल में 63 रिसर्च पेपर भी प्रकाशित है और सेमिनार कॉन्फ्रेंस में 27 रिसर्च पेपर प्रेजेंट किया है। उनके पास खुद के हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट यानी कि सोर्सेस का कलेक्शन है। इस कलेक्शन से अब तक 181 टाइम हिस्टोरिकल एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया है। डेकरी हैदराबाद में डायरेक्टर के पद पर उन्होंने 11 साल कार्य किया है। देश विदेश में उन्होंने अब तक 1100 से ज्यादा लेक्चर्स दिए हैं। अब तक वे 21 बार 21 टाइम रेडियो टॉक और टीवी प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली में एकेडमिक काउंसलर के रूप में वे कार्यरत है तथा भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा जर्नल ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज के वे एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर भी है। हेरिटेज फाउंडेशन जलगांव और रिसर्च फॉर रिसर्जेंस फाउंडेशन नागपुर के वे डायरेक्टर, हेड और कोऑर्डिनेटर है। माननीय बोबडे सर का कार्य बहुत ही लंबा है। मराठी भाषा में एक कहावत है, मूर्ति लहान पण कीर्ति महान, ऐसा उनका कार्य है। उनके वक्तव्य से उनकी असली परिचय हमें होने वाला है, तो आप और उनमें ज्यादा समय न लेते हुए माननीय बोबडे जी से मैं अनुग्रह करता हूं कि आप हमें लाभान्वित करें। माननीय बोबडे सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज के इस शिक्षक दिन के अवसर पर सभी को ये जरूर बताना चाहूंगा कि मैं डॉक्टर ओम शिवा लिगाड़े जी का ही विद्यार्थी हूँ और आज जो कुछ भी हूँ यहाँ पर सिर्फ उन्हीं की वजह से हूँ। और डॉक्टर जयश्री कुलकर्णी मैडम भी, जो मेरी बड़ी बहन भी है और एक प्रोफेसर भी है और एक गुरु भी है। आप सभी गुरुजनों के सामने मुझे बड़ी खुशी होती है। ऐसे दिन में मैं आपके सभी के सामने हूँ। डॉक्टर रेखा राव जैसे, के.एम. सुरेश जी जैसे ऐसे गुरुजन है, कई सारे गुरुजन हमारे सामने हैं कि जिनकी किताबें पढ़ते पढ़ते होयसला आर्किटेक्चर हो, अप्सराज के बारे में हो या जो भी टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ते पढ़ते हम बड़े हुए। मैं एक छोटा सा विद्यार्थी हूँ आप सभी के सामने और आज का मुझे जो विषय दिया गया है, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ द म्यूजियम्स इन इंडिया, प्री इंडिपेंडेंस टू 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। एक्चुअली वहां पर हमारा टाइटल लिखा गया था 1863 टू, ऐसा लिखा गया था। एक्चुअली इट इज फ्रॉम 1818 टू, ऐसा लिखना चाहिए 2022 तक। पहली बार महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसके बारे में लेक्चर आयोजित किया था। मैं राष्ट्रभाषा में इसीलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारे संग्रहालयों के बारे में जब हम जानकारी लेते हैं, अंग्रेजी में तो स्लाइड रहेंगे, आप सब पढ़ भी सकते हैं, मगर जानकारी देना जो है सभी को जो कन्वीनियंट हो भाषा, उसमें बात करना मुझे ऐसा लगता है थोड़ा ज्यादा उचित होगा। एंशिएंट पीरियड में देखा जाए तो हमारे यहाँ पर रामायण और महाभारत में भी चित्रशालाओं का वर्णन आता है। जब राम से मिलने के लिए भरत जब अयोध्या नगरी में आते हैं तो वो सीधा चित्रशाला में चले जाते हैं, इस तरह के वर्णन उसमें प्राप्त होते हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण जैसे ग्रंथों में भी हमें इसके बारे में जिक्र प्राप्त होते हैं। कई सारे हमारे सांची के शिल्प या उसके तोरणों को देखेंगे या बाकी कई सारे ऐसे मंदिरों को देखेंगे जिनके ऊपर इतने सुंदर शिल्पों की मालिकाएं हम देखते हैं। म्यूजियम की डेफिनेशन कहते हुए हम कहते हैं इट इज नॉट जस्ट ओनली द कलेक्शन, इट मस्ट बी एक्सेस फॉर द पब्लिक, लोगों के लिए उसका एक्सेस भी हो, तो जहां पर सारे लोग जाकर के देख सकते हैं। ऐसे कईयों के सुंदर वर्णन हमारे यहाँ पर हम देखेंगे, जिसको आज हमने अलग अलग नाम दिए हैं, मगर ऐसे हमारे पास सांची हो या अजंता के पेंटिंग्स के हेरिटेज हो या फिर हमारे होयसलों के टेम्पल्स हो, so there are the thousands of such open air museums are there in all over the India. So भारत में ऐसे कई सारे म्यूजियम्स की हम बात करते हैं। म्यूजियम की जब बात करते हैं तो शुरुआत में जब हम देखते हैं तो बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एग्जिबिटिंग आर्ट, क्योंकि हम जब हमारे अंदर की भावनाओं को जब दुनिया के सामने रखना चाहते हैं, एक्सप्रेशन, तो भीमबेटका जैसे उदाहरणों को हम देखते हैं। देन इट कॉल्ड एज द क्यूरियोसिटी बॉक्स। सो ये कैपिटलियन म्यूजियम वगैरह की जब शुरुआत हुई थी तो ऐसे अलग अलग नाम उसके लिए दिए गए। एंड दिस क्यूरियस नेचुरल ऑब्जेक्ट्स एंड आर्टिफैक्ट्स व्हिच वर डिस्प्लेड, एंड देन इट्स कॉल्ड एज द वंडर रूम्स और कैबिनेट्स ऑफ द क्यूरियोसिटीज। सो ये विश्व भर के संग्रहालयों की हम बात करते हैं। उसी समय में अब चलते हैं, ये देखते हैं शुरुआत में पहला जो यानी सबसे पुराना म्यूजियम जिसे माना जाता है एक्सकैवेशन में जो प्राप्त हुआ, तो ये नंबरडेनियस पैलेस, जिसका यहाँ पर मैंने जानबूझकर चित्र भी दिया है कि वो कौन है किंग कि जिसके पैलेस में ये सब प्राप्त हुआ, और ये पैलेस का मैप है। एंड सिलिंड्रिकल और क्ले टैप जो प्राप्त हुए, जो ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में रखे हैं। तो विश्व भर के संग्रहालयों की हम बात करते हैं तब ये दिखाई देता है। ये सबसे ओल्डेस्ट बिल्डिंग म्यूजियम का आज की तारीख में जो माना जाता है, कैपिटलियन हिल म्यूजियम 1471। अब हम भारत की बात करते हैं। जब भारत में ब्रिटिशों के द्वारा इस मूवमेंट की शुरुआत हुई, कलेक्शन और ये सभी की शुरुआत हुई, तो ब्रिटिशों के द्वारा स्थापित इंडियन म्यूजियम कोलकाता जो 1818 में बना और जो भारत का पहला म्यूजियम माना जाता है,
मगर मैंने जैसे कहा कि म्यूजियम की डेफिनेशन को आप किस तरह से देखते हैं, अभी रिसेंटली जो प्राग में जो हुआ 2022 का आईकॉम की जो कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें म्यूजियम की डेफिनेशन को ही थोड़ा सा और चेंज कर दिए है। उसके पहले उन्होंने काफी सारे सजेशंस मंगाए थे, जिसमें हमने भी अपनी तरफ से लिखा था। तो म्यूजियम के डेफिनेशन में आप किस तरह से उसको इंटरप्रेट करेंगे, उस तरह से हम म्यूजियम, ओल्डेस्ट म्यूजियम किसे कहें, वो शायद बदलाव हो सकते हैं। बट भारत की जब हम बात करेंगे तो अभी के रिसेंट ट्रेड में जिसे हम म्यूजियम मानते हैं, तो द डेवलपमेंट ऑफ म्यूजियम्स के 5 फेज हम देखते हैं। फॉर्मेटिव फेज अंडर कॉलोनियल रूल्स 1796 से लेकर के 5th फेज पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा तक 1947 से 2022 तक, अब तक हम उसको देखेंगे। तो ये 5 फेज में हमें यहाँ पर दिखाई देता है, कॉलोनियल, विक्टोरियल और इस तरह। फिर उसके बाद में यहाँ पर मैंने क्रोनोलॉजिकली उसको दिखाया है, म्यूजियम्स इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस। तो इंडियन म्यूजियम कोलकाता, सॉरी यहाँ पर मैं क्षमा चाहता हूँ, 1814 हुआ है। तो तो वहां से लेकर के, ये बराबर है, सॉरी, तो यहाँ से लेकर के 1910 तक सारनाथ म्यूजियम वाराणसी तक हम यहाँ देखते हैं। फिर उसके बाद में सारनाथ म्यूजियम की शुरुआत 1904 में हुई थी और 1910 में कंप्लीट हुआ था, बिकॉज फर्स्ट साइट म्यूजियम इन इंडिया। देन यहाँ नालंदा से लेकर के डेक्कन कॉलेज पूना तक देखते हैं। दीज आर दी प्री इंडिपेंडेंस म्यूजियम, कुछ ही मैंने सैंपल लिए हैं क्रोनोलॉजी केस में। नाउ हियर आर अनदर आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो नेशनल म्यूजियम 1949 से लेकर अभी इनॉग्रेशन होना जिसका बाकी है, सो इंडियन एजुकेशन हेरिटेज म्यूजियम नासिक, ये यहाँ तक मैंने इसमें लेने का प्रयास किया है। सो अर्ली म्यूजियम्स की जब हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर जो कॉलोनियल इम्पैक्ट जो था वो हमारे संग्रहालयों में हमें दिखाई देता है। नाउ दिस इज एन जस्ट जर्नी ऑफ आवर म्यूजियम, सिर्फ हम देख के उसको यहाँ पर आनंद ले सकते हैं, क्योंकि सारे म्यूजियम्स के बारे में, एक एक म्यूजियम के बारे में बात करेंगे तो 1 आवर हम इंडियन म्यूजियम कोलकाता ही आराम से उसके बात हो सकती है। सो दिस इज वन ऑफ द वंडरफुल म्यूजियम। अभी 1814 में, सॉरी, जब उसके 200 साल पूरे हुए 2014 में, तो उस समय उसके लिए जो फिलाटेली कलेक्शन पब्लिश किया गया था वो यहाँ दिखाया है। भारत ने जहाँ पर भी बेस्ट यानी एक्सकैवेशन में जो भी आर्टिफैक्ट्स मिले, तो अमरावती स्तूपा और यहाँ पर, तो ये सारे जो है इंडियन म्यूजियम कोलकाता में हम देख सकते हैं। तो अभी उसमें नया ये भी यानी रिनोवेशन और ये सभी हो गया है। म्यूजियम कंप्लीट अभी म्यूजियम ऑफ इकोनॉमी जियोलॉजी 1841 में एस्टेब्लिश हुआ। सो इस म्यूजियम की शुरुआत भी बड़ी इंटरेस्टिंग उसकी स्टोरी है। सो फर्स्ट कॉलोनियल नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, इट वाज द पार्ट ऑफ इंडियन म्यूजियम कोलकाता, देन इट सेपरेटेड एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड। उसके बाद उसी का कलेक्शन जो है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया व्हिच वाज एस्टैब्लिश्ड। सो excellent collection regarding this topic. Then Government Museum Chennai, which is another oldest museum in India and which was established in 1851. So ये इसके बारे में 1846 के इसमें मद्रास लिटरेरी सोसाइटी के इसमें ये दिखा जाता है। और अभी रिसेंटली इसका भी रिनोवेशन हुआ है। मैं बड़ी विनम्रता के साथ ये कहना चाहूंगा कि बहुत सुंदर कलेक्शन होते हुए भी जब रिनोवेशन किए जाते हैं उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो गए तो क्या हो सकता है, उसका अभी के तारीख में ये गवर्नमेंट म्यूजियम चेन्नई एक उदाहरण है। जिन लोगों ने विजिट किया होगा शायद उनको ये पता होगा। कुछ बातें नहीं कहनी चाहिए, मगर मुझे ऐसा लगता है कभी कभी बोलना भी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर आज की तारीख में बहुत सारे संग्रहालयों का रिनोवेशन हो रहा है, मगर कुछ गड़बड़ी अगर हो जाती है तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं वो हम यहाँ समझ सकते हैं। वंडरफुल कलेक्शन। और भारत में संग्रहालयों का हमारे शिक्षा में हम उपयोग करें तो ये अलग अलग सब्जेक्ट वाइज जैसे म्यूजियम बनते गए। तो गवर्नमेंट म्यूजियम चेन्नई को जब देखते हैं तब ये पता चलता है कि कलेक्शंस, फाइन्स का कलेक्शंस यहाँ का देखे या यहाँ का ये म्यूजियम थिएटर वगैरह देखें तो पता चलता है कि कैसे धीरे धीरे इसका एजुकेशन पर्पस के लिए यूज किया जा रहा था। सो दिस इज आफ्टर द रिनोवेशन। देन कॉर्पोरेट एंड सिविक बॉडीज व्हिच वाज स्टार्टेड इन इंडिया एंड देन द म्यूजियम स्टार्टेड। सो लाइक द गवर्नमेंट म्यूजियम मथुरा, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, विक्टोरियल मेमोरियल का ये हुआ, नेपियर म्यूजियम तिरुवनंतपुरम हुई 1855 में। See this museum, Indo-Saracenic structure, but another special thing is that this is not only just a museum, इसके साथ साथ में यहाँ का जो सबसे ओल्डेस्ट जू ऑफ इंडिया जो हम कहेंगे 1857 में जो स्थापित हुआ था 55 एकड़ में, प्राणी संग्रहालय ऐसा शब्द प्रयोग हम मराठी में करते हैं। So you can see this Napier Museum. This is an beautiful collection.
Chitra Art Gallery, which is another wonderful attraction over here. Then the Bhaudaji Art Museum, Mumbai. महाराष्ट्र का सबसे ओल्डेस्ट म्यूजियम ऐसा जिसे माना जाता है, which was called as the Victoria and Albert Museum at that time. और आज की तारीख में कई सारे अवार्ड्स इस म्यूजियम को प्राप्त हो चुके हैं और तस्नीम जकीरिया मेहता जी जैसी एक महिला जो इसे चला रहे हैं, विजन क्या होता है, किस तरह से हम म्यूजियम को रन कर सकते हैं, तो ये हमको समझना है। मैं हमेशा ये कहता हूँ, घर में जो किचन होता है वो बेस्ट एक महिला कैसे रख पाती है, वो हम हर घर में देखते हैं, तो एक म्यूजियम को भी बेस्ट कैसे रख पाते हैं उसका उदाहरण मैं यहाँ पर देखता हूँ। तो यहाँ पर हम अंदर देखते हैं, अभी रिसेंटली इसका भी रिनोवेशन हुआ। You can see this all beautiful things, decorative art galleries in Bhaudaji Art Museum. The entire structure जो उसी समय का बना हुआ है उसी को पूरी तरह से अभी रिनोवेट करके इसको यूज किया जा रहा है। Then second phase of museum development को थोड़ा हम यहाँ देखेंगे। विक्टोरियन era 1858 से 1899 तक के बीच में जो म्यूजियम्स बने, तो क्वीन विक्टोरिया declared that all the steps should be taken to preserve the past. तो ये बात हमारे लिए महत्वपूर्ण है। So as a result, the Treasure Trove Act 1878 बना उस समय में। तो यहाँ उस समय जो म्यूजियम बने, मैक्सिमम तो प्रिंसली स्टेट्स ऑफ इंडिया also established number of museums. हमारे भारत में जो आजादी से पहले जितने संस्थानों को हम देखते हैं उसमें से मैक्सिमम संस्थानों ने इस समय में संग्रहालयों की शुरुआत की। हमारे यहाँ पर महाराष्ट्र में भी जब हम देखते हैं, इन महाराष्ट्र there are total 10 museums which was established by the royal families and these all are by these princely states. So in this period 24 museums was established in all over the India. So you can see here the Central Museum Nagpur, which is another second oldest museum and the oldest government museum in Maharashtra, which was established in 1863. So around 27,000 objects are over here. तो मेरा पीएचडी का टॉपिक का एक हिस्सा ये संग्रहालय है और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अभी अभी हमने इस म्यूजियम को जो है वर्चुअल म्यूजियम के इसमें भी इसको पूरा बना दिया है। अराउंड 7.5 लाख रुपीज उसके लिए खर्च किए एंड क्यूआर कोड टेक्नोलॉजीज और इसके साथ में इस म्यूजियम को बनाया गया है। देयर आर द डिफरेंट गैलरीज, यू कैन सी दिस ओल्डेस्ट बिल्डिंग एंड आफ्टर द रिनोवेशन दिस पेंटिंग गैलरी इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल पेंटिंग। यहाँ पर कई सारे एक्टिविटीज जो किए जाते हैं नाउअडेज in the all state level museums and national level museums, we celebrate this International Museum Day on 18th May. तो यहाँ पर भी इस तरह से प्रोग्राम होते हैं। महाराष्ट्र के सारे गवर्नमेंट म्यूजियम्स में आज की तारीख में 18 में इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जाता है। तो ये भी एक अवेयरनेस का बहुत अच्छा उदाहरण हम कह सकेंगे। Then the State Museum Lucknow, which was established in 1863, and this museum, which is another best museum in Uttar Pradesh, कई सारे एजुकेशनल प्रोग्राम्स उसके लिए उनके यहाँ पर किए जाते हैं। एक एक म्यूजियम से क्या सीखना है, व्हाट वी नीड टू अडॉप्ट द बेस्ट प्रैक्टिसेस फ्रॉम द डिफरेंट म्यूजियम्स, सो वी कैन नोट दिस पॉइंट्स फ्रॉम दिस ऑल। सो यू कैन सी दिस एंड दिस इज अनदर ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स और कुछ पोस्टर स्टैम्प्स और जो पब्लिश किए और जो इस म्यूजियम के कलेक्शन से है, क्योंकि मेरे पास अपना 22,000 पोस्टर स्टैम्प्स का कलेक्शन है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये बताना उचित समझा। गवर्नमेंट म्यूजियम मथुरा 1874 में जो स्टैब्लिश हुआ। बहुत बार हमारे आर्कियोलॉजिस्ट और हमारे म्यूजियम के जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं उनमें ये कंफ्यूजन होता है, अगर मथुरा में ये म्यूजियम है तो सारनाथ का म्यूजियम व्हाई इट इज कॉल्ड एज द फर्स्ट साइट म्यूजियम, बट प्लीज रिमेंबर दैट दिस इज नॉट द साइट म्यूजियम। So this museum, which is famous for the ancient sculptures of the Mathura school, and which was established at that time because Sir F.G. Gross, who was actually interested for this, और उनकी वजह से ये म्यूजियम उस समय स्थापित हुआ था। So गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसके लिए भी पोस्टर स्टैम्प्स और पब्लिश किए थे कि राजकीय संग्रहालय मथुरा का इनसाइड व्यू हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो हमारे भारत में गांधारा स्टाइल, कुशाना स्टाइल, मथुरा स्टाइल, अमरावती स्टाइल, ऐसे स्टाइल स्कूल ऑफ आर्ट जिसको हम कहते हैं, उसके अध्ययन के लिए उस स्कूल ऑफ आर्ट्स का अध्ययन करने के लिए एक बेहतरीन उदाहरण ऐसा कह सकते हैं। अमरावती म्यूजियम भी इसी का सेकंड वे है। किसी का साउंड ऑन है, कृपया आप कीजिए। किसी का साउंड ऑन है, कृपया म्यूट कीजिए। थैंक यू। Beautiful sculptures. Then Albert Hall Museum, Jaipur, Rajasthan, which was established in 1876. So ये म्यूजियम की विशेष बात है कि इस तरह से म्यूजियम उस समय में जो बने, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट हॉल म्यूजियम, आज भी इसका बिल्डिंग अगर देखेंगे so outside and inside view so beautiful। ये 5 बत्ती चौक रंगोली होटल के वहां रह करके हम इस म्यूजियम के विजिट के लिए वहां जाते थे। दिस इज द नाइट व्यू ऑफ द म्यूजियम।
सो संग्रहालय कितना सुंदर होना चाहिए, आज की तारीख में भी कई सारी बिल्डिंगें बनी, पिछले 20 साल का उदाहरण देखिएगा, रिसेंट में 1-2 म्यूजियम अगर छोड़ दिए जाए तो कई सारी म्यूजियम की बिल्डिंगें ऐसे बनी कि म्यूजियम में जाने के लिए लोगों का मन करना चाहिए। हिस्टोरिक हाउस म्यूजियम तो है एग्जाम्पल, बट आज की तारीख में भी संग्रहालय का डिजाइन ऐसा बनना चाहिए कि लोग ऑटोमेटिकली उसकी तरफ जाने का उनका मन करे। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ दैट। दिस इज द बापू म्यूजियम विजयवाड़ा ऑफ आंध्र प्रदेश। हमारे भारत का जो नेशनल फ्लैग जो हमारा बना, तो जो गांधी जी को दिया था पिंगली वेंकैया जी ने, तो ये यहाँ पर दिया गया था और उसी का ये म्यूरल भी इस म्यूजियम के बाहर लगाया गया है। अनदर स्पेशलिटी ऑफ दिस म्यूजियम इज दैट ये संग्रहालय जो है ये प्रायोगिक तत्वों पर चलाने के लिए दिया जाता है, यानी कोई एजेंसीज जो होते हैं, जो ट्रस्ट होते हैं, उनको चलाने के लिए दिया जाता है। सो स्टार्टेड बाय यानी कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, बट एक्चुअली जो डे टू डे एक्टिविटीज और ये सभी रन किया जाता है वो प्राइवेट उसके लिए दिया जाता है। तो यहाँ पर आज की तारीख में ये भारत का पहला आर्गुमेंटेड रियलिटी जो टेक्नोलॉजी यूज किया हुआ ये म्यूजियम माना जाता है। सो यू कैन सी दिस ईयर, अभी कुछ दिन पहले जगन रेड्डी जी ने इसको फिर से रिनोवेट हुआ और उसका भी इनॉग्रेशन उन्होंने किया था। देन महात्मा फुले म्यूजियम पुणे विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1890, एक इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन रखा गया था और उसको बाद में म्यूजियम में कन्वर्ट किया गया। फर्स्ट इट वाज कॉल्ड एज द लॉर्ड रे म्यूजियम, देन इट वाज रीनेम्ड एज द महात्मा फुले म्यूजियम 1890। मगर दुखद बात ये लगी कि महात्मा फुले के नाम से ये संग्रहालय का नाम है, अंदर जाने के बाद कहीं भी आपको महात्मा फुले का एक छोटा सा बस्त छोड़ करके कहीं नथिंग, कुछ भी इंफॉर्मेशन उनके बारे में नहीं मिलती है। सो एक बड़ी आश्चर्यजनक बात मुझे यहाँ लगी। देयर इज एन कलेक्शन ऑफ दिस वेपन्स एंड अनदर थिंग्स एंड इंडस्ट्रियल थिंग्स आल्सो, बट कहीं जानकारी नहीं है। कम से कम नाम दिए है तो 1-2 पैनल तो होने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि जिनके नाम से म्यूजियम है उनकी जानकारी एटलीस्ट उस म्यूजियम में मिलना आवश्यक लगता है। द आर्कियोलॉजिकल साइट म्यूजियम जो बीजापुर में बना हुआ है, 1892 में ये पब्लिश हुआ। सो यहाँ पर किसी एक मॉन्यूमेंट में जब हम म्यूजियम देखते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर ताज म्यूजियम कॉम्प्लेक्स देखते हैं, रेड फोर्ट म्यूजियम हम देखते हैं, सो लाइक दैट दिस इज अनदर ब्यूटीफुल म्यूजियम जहाँ पर एंटिक्विटीज और इसका कलेक्शन करके बनाया गया। दिस इज अनदर वन बेस्ट म्यूजियम इन कर्नाटका स्टेट। देन लक्ष्मी विलास पैलेस म्यूजियम ऑफ बड़ौदा गुजरात। म्यूजियोलॉजी के बारे में जो मूवमेंट हमारे देश में शुरुआत हुई, जिसमें महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ इनका नाम लिया जाता है, तो प्रोफेसर मसानी और इनके साथ में मिलकर उन्होंने जो कार्य किया, नॉट ओनली एस्टैब्लिश द म्यूजियम बट पेंटिंग्स को किस तरह से कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन करना है, बाकी ये सारा ट्रेनिंग जो है म्यूजियोलॉजी के बारे में प्रशिक्षण जो है, जिसकी शुरुआत इस संग्रहालय के द्वारा हम देखते हैं। सो लक्ष्मी विलास पैलेस म्यूजियम बड़ौदा एंड डॉक्टर अंबिका पटेल नाउ वर्किंग फॉर द Maharaja Sayaja MSU University Museum Department and now she is the president of IQAC। तो ये भी हमारे लिए गौरव की बात है, क्योंकि एक देश की महिला म्यूजियम के फील्ड में इतना आगे बढ़ी है और आज हमारे देश का वो नेतृत्व कर रही है IQAC केस में। और महाराष्ट्र को हम डेवलप मानते हैं, मगर मैं सभी की क्षमा मांगकर कहूंगा, महाराष्ट्र में आज भी म्यूजियोलॉजी की डिग्री नहीं मिलती है, आज भी हमारे यहाँ डिप्लोमा मिलता है। पूरे भारत में सिर्फ 6 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर डिग्री मिलती है। तो ये हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे बच्चे आज भी यहाँ MSU में जाकर के पढ़ के ये जानकारी लेते हैं। सो practices and these all conservation preservation techniques and everything is better here. So the Sri Pratap Singh Museum Srinagar 1898 जो हमारे उत्तर भारत के इसमें पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर रीजन को अगर देखा जाए तो दिस एन एक्सेलेंट म्यूजियम, 80,000 ऑब्जेक्ट्स were there on it। और this is the old photograph of the museum but now it's completely renovated। ये old photograph ही मैंने इसमें यूज किए हैं। साउंड नहीं आ रही है। गोबड़े सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ गई। गोबड़े सर सुन रहे हैं आप? हाँ बोबड़े सर, बोबाड़े सर। हाँ सर। हाँ, अभी आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ गोबड़े सर की आवाज नहीं आ रही, सुन रहे हैं हम इधर। वेट जस्ट वेट।
I think he is freeze now due to lack of connectivity. Just wait, sir. देशमुख मैडम, कुलकर्णी मैम, मैडम तुमचं माइक यस हाँ सर। हाँ बोबड़े सर आ गया अभी। प्रॉब्लम है, साउंड किसी का ऑन है, कृपया म्यूट रखिएगा। प्लीज म्यूट योर माइक। सारनाथ म्यूजियम, जिसके बारे में हमने शुरुआत में भी बात की, दिस इज द फर्स्ट साइट म्यूजियम इन इंडिया एंड जो अभी जिसके बारे में रिसेंटली बहुत ये हुआ और जिसके लिए इसको यूज किया गया, ये हमारा नेशनल एम्बलम हम यहाँ देख सकते हैं। Nowadays, Archaeological Survey of India use kiosk of technology also here in these museums. Then Bhagini Sahitya Parishad Picture Gallery, Calcutta, which was established in 1908, and here Central Exhibition Hall और ये सारा कलेक्शन उन्होंने जो बताया। मैंने सिर्फ, मुझे क्षमा करना, समय के इसमें मैं ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर पा रहा हूँ, मगर कलेक्शन को आप यहाँ फोटोग्राफी के साथ देख सकते हैं। Then the book which was published by the museum. Yes. Sir, your slides are not visible, sir. Slides are not visible, sir. कहाँ तक आप नहीं देख पाए, इसको देख पाए हैं? अभी जो शुरू किया आपने, just 1 minute before. Third phase. Third phase. विजयवाड़ा तक। ओके, नहीं सर, यहाँ तक आपने आप देख पाए थे। ओके, सॉरी सर। ओके जम्मू कश्मीर, तो फोटोग्राफ अभी भी जम्मू यही म्यूजियम है, प्रताप सिंह म्यूजियम श्रीनगर का, जिसको मैंने दिखाया। ओल्ड फोटोग्राफ्स है, अभी तो इसका पूरा रिनोवेशन हो चुका है। Then this is the third phase. Third phase में जो फोटोग्राफ मैंने दिखाया, तो this is the first photo of सारनाथ म्यूजियम। So ये सारनाथ दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं आ रहा है सर। स्क्रीन नहीं है सर, स्क्रीन नहीं है सामने। मिनट, जस्ट अ मिनट। Is it visible now? Yes sir, yes. अभी दिखाई दे रहा है? Yes, Okay. आ गया सर, आ गया। ठीक है, Okay. ठीक है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। सो देन जो लास्ट वाला आपने देखा, ये जम्मू कश्मीर का जो हमारा श्रीनगर का प्रताप सिंह म्यूजियम देखा। उसके बाद में जो है बीच में कोई फोटो नहीं है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। देन द सारनाथ म्यूजियम, सारनाथ जो 1904 में एस्टैब्लिश हुआ, एंड दिस इज द फर्स्ट साइट म्यूजियम। अभी मैंने जो बताया कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा और स्टेट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट्स के द्वारा कियोस्क ऑफ टेक्नोलॉजी और अदर टेक्नोलॉजी को भी म्यूजियम्स में अभी यूज किया जाने लगा है। कई जगह पर क्यूआर कोड टेक्नोलॉजी को भी यूज कर रहे हैं।
Then भगिनी साहित्य परिषद पिक्चर गैलरी कलकत्ता 1908 में जो एस्टैब्लिश हुआ. So this is the collection of the museum and the book which was published by the museum. So this is an interesting thing. जैसे हमारे इंडियन म्यूजियम कोलकाता ने पब्लिश किया, उसी तरह से एक एक्सेलेंट बुक जो 1911 में पब्लिश हुआ था, त्रिवेदी जी के द्वारा लिखी गई. देन भूरी सिंह म्यूजियम चंबा हिमाचल प्रदेश का, जो उसी समय में 1908 में पब्लिश हुआ. प्रिंसली स्टेट्स म्यूजियम्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें इस म्यूजियम को हम देख सकते हैं. एंड इन ऑल ओवर द इंडिया, एज पर माय नॉलेज, देयर आर अराउंड 128 प्रिंसली स्टेट्स म्यूजियम्स. मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूँ. महाराष्ट्र की जो मैंने किया था तो 10 म्यूजियम को मैंने बताया था. ज्यादा से ज्यादा राजस्थान और गुजरात में मुझे दिखाई देते हैं. दिस इज द भूरी सिंह म्यूजियम and this is the outside view, this is the inside view of the museum. Then the government museum Ajmer, which was established in October 1908. So यहाँ पर ये संग्रहालय को हम देखें. मैं थोड़ा फास्टली जाऊंगा समय के इसमें. सरदार गवर्नमेंट म्यूजियम जोधपुर राजस्थान, which was again established in 1909. महाराजा उमेद सिंह जी ने जिसे स्थापित किया था, और यहाँ पर वो संग्रहालय का कलेक्शन हम देख सकते हैं. Then the Red Fort Archaeological Museum Delhi. So इसके बारे में काफी सारा डिबेट है, क्योंकि मैंने जितने भी सर्च किए, कई जगह पर 1909 मिला, कई जगह पर 1911 मिला. तो बट ऑफ दैट टाइम, यानी आज से लगभग 110 साल पूर्व ये संग्रहालय की शुरुआत हुई. और मुगल पीरियड से संबंधित जो भी साहित्य है वो इस म्यूजियम में हम देख सकते हैं. You can see these costumes and the jewelry, the things, the weapons which used at that time. Then again, sorry, ये सारनाथ म्यूजियम का ही 1910 के इसमें वो आया है. सॉरी फॉर दैट, रिपीटेशन हुआ है. ASI म्यूजियम खजुराहो, दिस इज इन छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश. अभी खजुराहो के बारे में बहुत अच्छे से बात किया उन्होंने. तो खजुराहो का इट्स एन आर्किटेक्चरल लैबोरेटरी फॉर अस, बट अगेन the wonderful collection of the antiquities and the artifacts in this, अभी ये हम यहाँ पर देख सकते हैं. So this is the excellent museum. आजू बाजू के शिल्प और इसके बारे में अध्ययन करने के लिए, not only the erotic sculptures but more than that, around 90% म्यूजियम्स जो उस समय का जनजीवन और समाज के बारे में हमें जानकारी देते हैं, उस समय का व्यापार उद्यम आर्थिक जगत उसकी जानकारी देते हैं, वो सभी हमें यहाँ देखने मिलता है. Then the Nalanda Museum Bihar, which was established in 1917. Recently in last month I was visited this museum. आजू बाजू में, नॉट ओनली इन द नालंदा बट नालंदा, राजगीर और गया आजू बाजू के एरिया में जो भी उस समय प्राप्त हुआ वो इस संग्रहालय में रखा गया है. सो दीज आर द फ्यू आर्टिफैक्ट्स इन दिस म्यूजियम एंड दे आर अराउंड फ्रॉम 5th century BC. सो जो इस संग्रहालय में रखे हुए हैं, दीज आर द सम ब्यूटीफुल ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स आर देयर. सो यहाँ पर अभी रिसेंटली कुछ और भी मूर्तियां प्राप्त हुई है. जैसे नाग देवता की मूर्ति पहले प्राप्त हो चुकी थी. नाग देवी की अभी जो मूर्ति मिली है, बहुत ही सुंदर मूर्ति अभी इस संग्रहालय में रखी गई है. और वहाँ का जो हमारा नालंदा आर्कियोलॉजी साइट है, जिसको खंडहर के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल उसी के सामने ये म्यूजियम बना हुआ है. सांची म्यूजियम मध्य प्रदेश, जैसे नालंदा, सांची, तक्षशिला, ये जो साइट्स उस समय के बुद्धिस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट्स और हमारे बाकी इसके लिए अध्ययन करने के लिए भी, यानी सिर्फ लोगों को ऐसा लगता है कि BC 3rd 4th century के होंगे. नो, नॉट. 18th 19th century तक के भी आर्टिफैक्ट्स को इन म्यूजियम्स में कलेक्ट किया गया है. गुजरी महल म्यूजियम ग्वालियर मध्य प्रदेश 1920 में जो एस्टैब्लिश हुआ. ग्वालियर फोर्ट को अगर आप विजिट करेंगे तो वहां पर ये देख सकेंगे. गुजरी महल म्यूजियम का ये देख सकते हैं. सो दिस इज द ब्यूटीफुल आर्टिफैक्ट्स इन दिस म्यूजियम. राजा दिनकर केरकर म्यूजियम, जिसको हम जैसे हैदराबाद में सालारजंग म्यूजियम, वन सिंगल फैमिली, एक व्यक्ति के द्वारा, उनके फैमिली के द्वारा बनाया गया म्यूजियम जैसे हम मानते हैं, उसी तरह से महाराष्ट्र का एक सिंगल व्यक्ति के द्वारा किया गया सबसे बड़ा कलेक्शन है, जो 1920 में एस्टैब्लिश हुआ. अराउंड 25,000 एग्जिबिट्स आर ओवर हियर. और ये उसका आउटसाइड व्यू है. मुझे क्षमा करना फिर से एक बार, म्यूजियम के अंदर बहुत सुंदर अभी सारा रेनोवेशन और ये हो चुका है, बट टिल टुडे this is the existing outside position. Now you can see here this museum which is famous for the lamps and the nutcrackers. So उसके लिए ज्यादा फेमस है, but till then काष्ठ शिल्प और ये भी बहुत सुंदर है. यहाँ का मस्तानी महल, this is the मस्तानी महल in this museum. This is also wonderful. These are the काष्ठ शिल्प्स are there, wooden carvings, so beautiful works are there. Another specialty of this museum is that the wonderful publications of this museum.
महाराष्ट्र में ऐसे कुछ ही गिने चुने म्यूजियम है, जैसे छत्रपति शिवाजी म्यूजियम हो या डेक्कन कॉलेज हो, तो ये म्यूजियम कि जहाँ पर आपको म्यूजियम के बारे में और म्यूजियोलॉजी के बारे में अच्छी किताबें आप खरीद सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ स्टेट म्यूजियम भुवनेश्वर उड़ीसा का भी है। Then the Victoria Memorial Kolkata, which was established in 1920. For me, why it is important this museum? Because यहाँ पर इस संग्रहालय में एक कंपटीशन उस समय के गवर्नर ने आयोजित की थी, और जिस समय में उन्होंने हमारे शहर का इतिहास क्या है, हमारे शहर का हेरिटेज क्या है, उसके बारे में वो कंपटीशन हुआ था, एंड कलकत्ता गैलरी उस समय बनाई दी गई थी। मैं ऐसा मानता हूं कि हर संग्रहालय में अपने लोकेलिटी के बारे में जानकारी देने वाला एटलीस्ट वन गैलरी होना चाहिए। इफ नॉट पॉसिबल वन गैलरी, एटलीस्ट वन वॉल, इफ नॉट पॉसिबल वन वॉल, देन एटलीस्ट 1 or 2 हमारे जो डिस्प्ले पैनल्स होते हैं वो होने चाहिए। प्रॉब्लम है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, किसी का साउंड ऑन है, म्यूट कीजिएगा। सो हमारे यहाँ पर हमारे लोगों के मन में अगर संग्रहालयों के बारे में आस्था अगर निर्माण होनी चाहिए, हमारी लोकल के इतिहास के बारे में अगर आस्था निर्माण होनी चाहिए, तो लोकल की जानकारी देने वाला, लोकल हिस्ट्री की जानकारी देने वाला एटलीस्ट कुछ पैनल्स या गैलरीज होने चाहिए। तो ये हम यहाँ से सीख सकते हैं। दिस इज द कलकत्ता गैलरी। देन द छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय, विच इज कॉल्ड एज वन ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस म्यूजियम। भारत में जो कुछ 5-6 गिने चुने म्यूजियम नेशनल इंपॉर्टेंस जिन्हें दिया गया है, उसमें एक संग्रहालय है जो 10 जनवरी 1922 को स्थापित हुआ। नाउ 100 ईयर्स उसको कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये संग्रहालय जिसका उस समय का इंडो शासनिक स्टाइल बिल्डिंग देखते हैं, और रिसेंटली अभी उसका नया बिल्डिंग भी बना है कुछ साल पहले, और यहाँ का कलेक्शन भी ये उस बिल्डिंग का सारा ये देख सकते हैं। इस म्यूजियम में भी जाते ही अंदर एंट्री करते ही लेफ्ट साइड वॉल पर आपको जो है पूरा मुंबई का सारा इतिहास जो है वो दिखाई देता है। दिस इज अनदर ब्यूटीफुल, दिस इज मम्मी गैलरी, जहाँ पर सिर्फ मम्मी रखा नहीं गया है। हमारे यहाँ पर नामपल्ली गार्डन हैदराबाद में भी जो आर्कियोलॉजी म्यूजियम है, वहां पर भी मम्मी रखी हुई है, मगर मम्मी का पूरा टेक्निकल डिटेल्स के साथ में जानकारी अगर मिले तो बच्चों को ज्यादा और इंटरेस्ट निर्माण हो सकता है, जो यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो वी नीड टू केयर फॉर सम थिंग्स, सारी इंफॉर्मेशन हम कैसे दे सकते हैं। अनदर थिंग, वहाँ का जो लेबोरेटरीज है या वहाँ पर जो कार्य किए जाते हैं वो प्रैक्टिकली हम देख सकते हैं वहां जाकर के। तो ये भी बड़ी अच्छी बात यहाँ दिखाई देती है। इसका दूसरा एक स्पेशलिटी इस म्यूजियम में जो चिल्ड्रन म्यूजियम उन्होंने बनाया वो भी बहुत सुंदर, जिसे उन्होंने अमेरिकन बैंक्स के फाइनेंस से बनाया है। इट इज अ ब्यूटीफुल म्यूजियम, और उसके जो म्यूजियम के बारे में बच्चों ने जो डेफिनेशंस उसमें म्यूजियम में लिखे हैं वो मुझे बड़े अच्छे लगे, जो मैं मेरे सारे सेशंस में यूज करता हूँ। अगेन नाउ वी आर ऑन द 4th फेज, प्री इंडिपेंडेंस इरा 1928 से लेकर 1947 तक हम देखेंगे। तो यहाँ पर जो है कई सारे ऐसे म्यूजियम जो अराउंड 105 म्यूजियम जो इस समय में बने। तो द रिपोर्ट सजेस्टेड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू टेक स्टेप्स टू इम्प्रूव देयर फंक्शनिंग। तो सिर्फ म्यूजियम बनाना इतनी बात सीमित नहीं रहेगी, उसके एक्टिविटीज क्या रहेगी। तो फंक्शनिंग होना चाहिए, एक्टिविटीज होनी चाहिए। तो इस फेज में हम ये देखेंगे। तो ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 to 1945 पूरे दुनिया भर में जो कुछ हो रहा था, तो उसको देखते हुए हम इसको सोचते हैं। तो सेंट्रल म्यूजियम इंदौर 1929 में स्थापित हुआ। ये नररत्न मंदिर से नाम से जाना जाता था। होलकर जी ने बाद में इसे म्यूजियम में कन्वर्ट किया। पहले तो उनके फैमिली का सिर्फ कलेक्शन था, बाद में धीरे धीरे जो है लोकल में जो भी बेस्ट है उसको भी कलेक्ट किए हैं। नाउ दिस इज द सेंट्रल म्यूजियम इंदौर, जो वहाँ के जीपीओ के बिल्कुल बाजू में है। तो अभी रिसेंटली इसको रिनोवेट किया गया है, मगर फिर भी क्या स्थिति है हम देख सकते हैं। दिस इज आउटसाइड, मुझे क्षमा करना, फिर ये मैं क्षमा चाहते ये कहूंगा कि बाहर में जो है म्यूजियम के बिल्डिंग के बाहर सराउंडिंग कोर्टयार्ड में जो मूर्तियां रखी हुई है, बहुत सुंदर मूर्तियां सालों से वहां पर इसी तरह से पड़ी हुई है। कुछ उसको उन्होंने इस तरह से उसके एक ये बना करके पेंसिल जैसा बना करके उसके ऊपर बनाया स्थापित किए है, मगर बाकी बहुत सारी आज भी ऐसे ही पड़ी हुई है। तो थोड़ा हमको ध्यान देना होगा, क्योंकि जिस समय में क्यूरेटर को बैठने के लिए सिर्फ एक चेयर और टेबल हुआ करता था, जैसी एसी ऑफिस बने हुए हैं, केबिन बने हुए हैं, मगर ये पड़ी हुई मूर्तियां उस समय से लेकर के जब मैंने पहली बार फोटोग्राफी की थी उस समय से आज भी वैसे है। 2007 में मैंने पहले फोटोग्राफी की थी, रिसेंटली 2022 में गया तो देखा आज भी उसी तरह से उसके हालात है। So very sorry for to say that, but we need to care about it. Then उमेद भवन पैलेस म्यूजियम, गवर्नमेंट म्यूजियम जोधपुर का, जो 1930 में बना, तो महाराजा उमेद सिंह जी के द्वारा स्थापित किया गया। तो ये उस समय का एक बेस्ट म्यूजियम जो बना
आज भी आप देख सकते हैं कि इसके कंपेयर में भारत में ऐसे मेरे ख्याल से शायद कुछ ही म्यूजियम होंगे जो इतना ब्यूटीफुल व्यू और ये सब देखते हैं। और पैलेस को कैसे हम यूज कर सकते हैं, अलग अलग तरीके हो सकते हैं उसको, होटल में, गेस्ट हाउस में, म्यूजियम में, जो चाहे ऐसा कन्वर्ट करके हम बना सकते हैं। बट मल्टीपर्पज यूज के साथ में कैसे उसको हम बेस्ट मेंटेन भी कर सकते हैं, उसका एक सबसे बेहतरीन उदाहरण मुझे लगा। और आज की तारीख में आप संग्रहालय में जब प्रवेश करेंगे तो ये सारी बातें वहां पर आप देख सकेंगे। तो दिस इज द इनसाइड व्यू ऑफ द म्यूजियम। देन इलाहाबाद म्यूजियम, प्रयागराज, यूपी, 1931 में जो एस्टेब्लिश हुआ। कलेक्शन इज वंडरफुल, अराउंड 14,000 बीसी से लेकर 2000 बीसी तक का सारा कलेक्शन यहाँ पर है। बट फॉर मी अनदर बेस्ट थिंग इन दिस म्यूजियम इज दैट द कलेक्शन ऑफ द बुक्स। म्यूजियम की अपनी लाइब्रेरी होनी चाहिए। अराउंड 25,000 बुक्स आर देयर इन दिस म्यूजियम, क्योंकि म्यूजियम सिर्फ शो नहीं होता है, इट्स अ रिसर्च सेंटर, इट्स अ स्टडी सेंटर। तो उस एंटिक्विटी जो भी साहित्य है उसका अध्ययन करने के लिए हमारे पास रिसर्च जो मटेरियल है वो भी होना चाहिए, बुक्स हो, रिसर्च पेपर्स हो, जो भी मटेरियल होना चाहिए। तो दिस इज द बेस्ट लाइब्रेरी म्यूजियम इन विच आई वाज विजिटेड। सो ये उस म्यूजियम का अंदर का व्यू है। काफी सारे जो रिनाउंड हमारे जो साहित्यिक है तो उनकी लिखी हुई सारी रचनाएं जो है हम यहाँ पर देख सकते हैं। And the Odisha State Museum, Bhubaneswar, another beautiful museum which I was visited, which was established in 1932. There are the different galleries, especially यहाँ का जो शिल्प दालन है और उसके साथ साथ यहाँ का कॉस्ट्यूम्स और coins और galleries, these all are the wonderful galleries over here. See, this is the coin galleries. और लास्ट में भी जो मैंने बताया था, इसके म्यूजियम के 3rd फ्लोर पर इसका जो ऑफिस है वहां जरूर विजिट करके जो बहुत सारे बुक्स उन्होंने म्यूजियम्स के बारे में पब्लिश किए हैं वो भी जरूर परचेस करें। इट्स अ वंडरफुल कलेक्शन। राजवाड़े संशोधन मंडल म्यूजियम, धुलिया, 1932, अनदर ग्रेट पर्सन, लेजेंडरी पर्सन इन महाराष्ट्र हु वाज वर्कड हार्ड फॉर द म्यूजियम। जैसे हमारे यहाँ पर पहला मैंने उदाहरण दिया था कि राजा दिनकर केलकर जी ने प्रयास किया, जैसे वी.के. राजवाड़े, विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े जी ने प्रयास किया। जैसे पूना में भारत इतिहास संशोधन मंडल बना, बाद में दत्तवामन पोद्दार जी और ग खरीद जैसे लोगों ने उसको आगे बढ़ाया। उसी तरह से धुलिया में आकर के उन्होंने राजवाड़े संशोधन मंडल की स्थापना की। गांव-गांव घूम करके जिस व्यक्ति ने हजारों की तादाद में लगभग 14,000 मैन्युस्क्रिप्ट और 30,000 हिस्टोरिकल मूडी डॉक्यूमेंट्स लेके आए। He was not only collected the manuscripts and the documents, but he published around 42 volumes. So this is a great work. अभी रिसेंटली इसका नया बिल्डिंग भी बना है, दूसरा 1 करोड़ 80 लाख रुपए उसके लिए खर्च हुआ। तो यहाँ पर इस म्यूजियम में भारत का पहला जो फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1936 में, उसके बारे में संबंधित बहुत सारी जानकारी उपलब्ध है। उसके साथ साथ धुलिया और आजू बाजू के एरिया का भी बहुत सुंदर कलेक्शन उपलब्ध है। देन वर्धा के म्यूजियम्स, वर्धा वेयर महात्मा गांधी वाज लिव्ड, जहाँ पर 1938 में मगन संग्रहालय बना और सेवाग्राम आश्रम प्रदर्शनी भी बनी है। इट इज एन लाइक सेवाग्राम आश्रम प्रदर्शनी इज लाइक ओपन स्काई म्यूजियम, मगन संग्रहालय है। अभी तो रिसेंटली एक नया म्यूजियम भी वहां पर बना हुआ है। बट व्हाई दिस म्यूजियम इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, ग्रामोद्योग और ग्राम विकास, विलेज इंडस्ट्रीज एंड उसके डेवलपमेंट्स के बारे में अगर आप अध्ययन करना चाहते हैं तो एक बेस्ट म्यूजियम है। सो यू कैन सी ओवर देयर दिस ऑल कलेक्शन। अभी यहाँ पर भी जो है डॉक्टर विभा गुप्ता जी बहुत अच्छा कार्य कर रही है। देन आई वाज विजिटेड भवानी संग्रहालय ग्रंथालय औंध, व्हिच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1938। सो ये ऐसा एक संग्रहालय है जिसका नाम चित्र संग्रहालय एवं ग्रंथालय ऐसा रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी पेंटिंग्स का जो कलेक्शन है, राजा रवि वर्मा या बाकी सारे उस समय के जो हमारे वेस्टर्न महाराष्ट्र के जो ग्रेट आर्टिस्ट थे उनका कलेक्शन यहाँ पर है। उसके साथ साथ यहाँ की लाइब्रेरी भी बहुत रिच कलेक्शन है। तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड देयर एंड यू कैन सी सम ऑफ द स्टैचूज। ओके, डेक्कन कॉलेज रिसर्च इंस्टीट्यूट म्यूजियम पुणे, 1939। मैंने कुछ फोटोग्राफ यहाँ नहीं दिखाए हैं क्योंकि मेरा अपना ये पीएचडी का चल रहा था, उस समय मुझे कुछ रेस्ट्रिक्शंस दिए गए थे, मुझे क्षमा करना। तो डेक्कन कॉलेज रिसर्च इंस्टीट्यूट म्यूजियम पुणे, व्हिच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1939। महाराष्ट्र में, नॉट ओनली इन महाराष्ट्र, पूरे भारत में आर्कियोलॉजी के फील्ड में जिन्होंने सबसे ग्रेट वर्क किया, ऐसे सांकलिया जी, शांबा देव, ऐसे कई सारे लोग कि जिन्होंने कई जगह पर एक्सकैवेशन किया हुआ, जो मटेरियल कलेक्ट किया, आज भी जो बेस्ट कलेक्शन जहाँ पर अवेलेबल है। बट म्यूजियम के जो हॉल और ये सारे ये है आज भी उसी समय बना हुआ ओल्ड उसी तरह से दिखाई देता है। इसका कारण है क्योंकि अभी नया म्यूजियम बन रहा है, उसके लिए सैंक्शन हो चुका है बिल्डिंग और उसका सभी रेडी है।
These all are the collections over there, इनामगांव, जोरवे, दाइमाबाद, नेवासा, जहाँ जहाँ पर एक्सकैवेशन किया वो सारा मटेरियल यहाँ पर हम देख सकते हैं. This is one of the richest archaeological collection in all over India. So ये सारा उसकी गैलरीज है. These are the new galleries of this museum. तो डॉक्टर वसंत शिंदे जी जैसे ग्रेट लोगों ने यहाँ पर कार्य किया है. So now the post independence period from 1947 to 2021. So last 25 years आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं. कई सारे अलग अलग विषयों पर म्यूजियम बने, ऐसे म्यूजियम जिनके नाम हमने कभी सुने नहीं इसके पहले. क्राफ्ट म्यूजियम, आजादी के पहले क्राफ्ट म्यूजियम नाम का शब्द हमने नहीं सुना, मगर जो यहाँ दिखा है. हेल्थ म्यूजियम, यहाँ हम देख सकते हैं. आयुर्वेद शालाओं को हमने देखा, बट हेल्थ म्यूजियम जो आयुष डिपार्टमेंट के द्वारा स्थापित किया गया, जैसे हमारे यहाँ पर हैदराबाद में हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज ऑफ मेडिसिन का 4th फ्लोर पर जो म्यूजियम बना हुआ है. सो लाइक दैट म्यूजियम. देन द टेक्सटाइल म्यूजियम जैसे कलकत्ता हमारा अहमदाबाद में बना हुआ है. So such type of the museums which was established in this period and हमारी भारत की आज़ादी के बाद हमारी भारत की तरक्की, हमारे भारत का सारा साइंस एंड टेक्नोलॉजीज को दिखाने के लिए जो म्यूजियम बने. So ये देख सकते हैं. Then this is the first example after the independence, National Museum New Delhi, which was already there in the President राष्ट्रपति भवन में ये सब कलेक्शन था. बाद में इसे शिफ्ट किया गया और अभी तो इसका और भी नया लुक कुछ दिनों बाद हम देख पाएंगे. So this is the National Museum. This is the Bronze Gallery. National Museum. भी ये सारा मिनिएचर पेंटिंग गैलरी और ये सारा देख रहे हैं. तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर कभी विजिट करेंगे तो फ्री गाइडेड टूर्स का एक यहाँ पर आपको अनुभव मिलेगा, आनंद मिलेगा, उसको जरूर लीजिएगा. और कई बातें यहाँ से सीखने लायक है. मैं अभी ज्यादा डिटेल में नहीं करूँगा. BR मणि जी जैसे लोगों ने यहाँ पर लेक्चर पहले दिए हुए हैं. So they worked hard for this. Then Calco Museum of Textiles, Ahmedabad, 1949. अम्बालाल साराभाई और उनके फैमिली ने जिसको बनाया और आज भी जो जिसको चला रहे हैं. तो दिस इज वन ऑफ द वंडरफुल म्यूजियम अबाउट टेक्सटाइल्स. भारत में मेरे ख्याल से शायद 4-5 ही ऐसे टेक्सटाइल म्यूजियम जो बने हुए हैं, उसमें से एक बेस्ट म्यूजियम है. मेरी 5वीं किताब जो थी म्यूजियम्स आर्कियोलॉजी एंड कल्चर, उसका कवर पेज के तौर पर मैंने इस म्यूजियम का फोटोग्राफ यूज किया था. तो दिस इज द इनसाइड व्यू ऑफ दिस ऑल दिस थिंग्स. टेक्सटाइल को कैसे प्रिजर्व करना है, इसका अगर अध्ययन करना होगा तो इसके लिए ये बेस्ट एग्जांपल है. Then the Salaji Museum, Hyderabad, which is another national importance museum, 1951. तो यहाँ के कलेक्शंस के बारे में यानी जितनी बात करें कम है, स्पेशली यहाँ का आउटसाइड से ही. जैसे हम जाते हैं तो कहाँ पर आपको कितना समय है, अगर आपके पास में 1 घंटा है, अगर आपको सिर्फ मैन्युस्क्रिप्ट गैलरी देखना है तो इजीली कहाँ जा सकते हैं, वो बाहर देखकर ही समझ के वहां जाना है. मेरे पास, मैं जब भी विजिट के लिए जाता था तो इस तरह से एक गैलरी एक बार देख लेता था. तो लाइक दैट देयर आर द वंडरफुल कलेक्शंस. ये मार्बल आर्ट गैलरी का सिर्फ एक फोटोग्राफ लिया है. अराउंड 2700 photographs I have of this museum. Then the National Gallery of Modern Art, which was established in 1954. हमारी संकल्पनाओं को हम कैसे साकार कर सकते हैं उसको समझने के लिए एक सुंदर म्यूजियम मुझे लगा. भारत के कई सारे जाने माने कलाकारों ने, लगभग 2000 से ज्यादा आर्टिस्ट ने मिलकर के जो यहाँ कलेक्शन, ये उनका जो उनके द्वारा बनाए गए कलेक्शन को हम यहाँ देखते हैं. एंट्री करते ही जब हमें ये दिखाई देता है, ये कैप्शन मैंने नीचे लिखा है, न्यू कॉन्सेप्ट्स ऑफ आर्ट बॉर्न हियर. तो नई संकल्प, कभी सोचा नहीं था ऐसा भी कोई पेड़ हो सकता है, मगर यहाँ जाकर के वो समझा, तब लगा कि चलिए क्रिएटिविटी को हमें साकार, हमारे भारत में हमारी जो नई जनरेशन है, हमारे बच्चे हैं, उनकी संकल्पनाओं को साकार करने के लिए कहीं ना कहीं एक माध्यम जो है संग्रहालय के द्वारा खड़े किए गए. Then the Namgyal Institute of Tibetology, Gangtok, Sikkim. I was visited here because of Governor Srinivas Patil ji, and then I saw this museum. डिंगसपाल के लोग जो वहाँ पर कार्य कर रहे हैं. प्रज्ञा पारमिता जो एक ब्यूटीफुल कलेक्शन है हमारे मैन्युस्क्रिप्ट केस में, और ये म्यूजियम का बिल्डिंग, ओल्ड बिल्डिंग. एंड देन दिस इज द कलेक्शन. दिस इज अ स्मॉल वन म्यूजियम, बट व्हाट इज द स्पेशल थिंग, यहाँ का कलेक्शन तो ब्यूटीफुल है ही, उसके साथ साथ ऊपर में गए तो वहां पर आपको वुडन प्लंक पर कार्विंग करके लिखे गए कई हजारों मैन्युस्क्रिप्ट वहां पर आपको मिलेंगे. सो प्लीज विजिट दैट कलेक्शन टू. देन नेशनल गांधी म्यूजियम दिल्ली, 1961, जहाँ पर अभी डॉक्टर अन्नामलाई जी काम कर रहे हैं. उस समय ये स्थापित किया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और उनके आग्रह से. गांधी जी के डेथ के बाद जब उनका खून हुआ, उसके बाद में ये संग्रहालय स्थापित किया गया. ये निःशुल्क संग्रहालय है और अभी इसका रिनोवेशन का कार्य चल रहा है. उसमें तो अभी ई गांधी म्यूजियम भी बनाया जा रहा है. ये सभी अभी जो रिनोवेट किया गया उसके बाद. एंड द बिरला इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम कोलकाता, 1962 में जो बना. So such type of the museums related with industry, technology, science of India, and wonderful galleries over here. So उसके अलग अलग जो यूनिट्स यहाँ पर मैंने बताया.
उसके साथ साथ में इसके कई सारे प्रोग्राम चलते हैं जो हमारे स्कूल और कॉलेजेस में होना है। कॉलेज में हमारे साइंस लैबोरेटरीज होते हैं, थोड़ा सा उसको अगर हम इस म्यूजियम से सीखेंगे तो उन लैबोरेटरीज को हम अपने म्यूजियम एक्सपीरियंस में कैसे चेंज कर सकते हैं, उसके लिए एक रोल मॉडल हम कह सकते हैं। Then the Vishwesvaraya Industrial and Technological Museum, Bangalore. This is another wonderful museum regarding this topic. हमारे यहाँ का सारा ये टेक्नोलॉजीज और ये समझने के लिए बहुत, मेरा 2.5 साल का बेटा अथर्व, उसको भी मैं यहाँ इस म्यूजियम में ले गया था और 2.5 साल के बच्चे को भी उसके बारे में बहुत क्यूरियोसिटी लगा। जैसे ही प्रवेश करते हैं, लेफ्ट साइड में ऊपर केस में डायनासोर का जब ये देखते हैं, वहां से लेकर के लास्ट तक एक बहुत अलग अनुभव इस म्यूजियम में आपको प्राप्त हो सकता है। शंकर्स इंटरनेशनल डॉल्स म्यूजियम, दिल्ली 1965। तो एक अलग विषय हम कह सकेंगे कि हमारी बचपन की यादों को दुनिया के सामने हम कैसे रख सकें और उससे हम क्या सीख सकें। So here there are around 150 types of Indian costume dolls and around 6,500 exhibits from almost 85 countries. So ये बहुत सुंदर बना कलेक्शन बाई के शंकर पिल्लाई जिन्होंने इसको बनाए। आज भी पति पत्नी जब वहाँ आते हैं, विजिट करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। ये उसका आउटसाइड व्यू है और इनसाइड व्यू, मगर अभी थोड़ा सा संग्रहालय तो बहुत सुंदर है, कुछ सेक्शन बहुत सुंदर है, मगर वहाँ पानी वगैरह जो पर्कुलेट अभी हो रहा है उसको थोड़ा ध्यान दे करके कार्य करने की आवश्यकता है। देन डायरेक्टर ऑफ स्टेट आर्कियोलॉजी म्यूजियम, रीजनल म्यूजियम, सरकारवाड़ा संग्रहालय 1975 में जो बना। इस म्यूजियम की भी विशेष बात यह है कि कलेक्शन बहुत छोटा है, मगर एजुकेशनल एक्टिविटीज और ये बहुत सुंदर है। उसी तरह से उन्होंने इस पोर्ट्रेस जिसको हम कह सकेंगे उसको बहुत सुंदर तरीके से आज भी संजोए रखा है। भुजंग सर, प्लीज कंक्लूड। प्लीज कंक्लूड। ओके यस, ओके, सॉरी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय 1978। ऐसे समय के अनुसार जितना हो सकता है उतना ही हम देखें। मैं इसका एक पीडीएफ फाइल भी सभी के साथ शेयर करूंगा, हो सके तो सब लोग एंजॉय करें। और उसके साथ साथ जो है अलग अलग विषयों के जो म्यूजियम अभी बने, सुप्रीम कोर्ट म्यूजियम या ऐसे अलग अलग म्यूजियम, सो अक्षरधाम म्यूजियम, ये जहाँ पर मैं 8 साल मैंने कार्य किया, ये भारत का पहला ऐसा म्यूजियम जिसको ग्रिया और लीड्स का प्लैटिनम अवार्ड मिला। और म्यूजियम्स, आर्काइव्स, लैबोरेटरीज, लगभग 250 लोग रह सकते हैं इस तरह का गेस्ट हाउस। एंड दिस इज द फर्स्ट म्यूजियम इन इंडिया विच इज सेल्फ सस्टेनेबल म्यूजियम। 8 करोड़ रुपए हमारा ये है, एक्सपेंसेस है, मगर हम वो अर्न कर लेते हैं। और दुनिया भर में हमने जो एग्जीबिशंस किए, शहर के, गांव के लोगों के लिए जो बनाया वो सारा है। राष्ट्रपति भवन म्यूजियम, ऐसे अलग अलग म्यूजियम हमारे देश में जो बने उसको मैंने यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया। समय के अभाव में हम सब नहीं देख सके, मुझे क्षमा करना। ये अभी रिसेंटली 2022 में जो जिसे नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया, प्रधानमंत्री संग्रहालय, और जो अभी उसका इनॉग्रेशन होना बाकी है, इंडियन एजुकेशन हेरिटेज म्यूजियम। डॉक्टर ओम शिवा लिगाड़े सर भी इस कमेटी के मेंबर है और मैं भी इसका कार्य कर रहा हूँ। देश विदेशों में ऐसे संग्रहालयों को हम देखें, समझें और इसको लेकर के हम आने वाली जनरेशन को क्या दे सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका जो एजुकेशनल पर्पस है उसको तो हम सही तरीके से समझकर यूज करें। बस इतना ही मैं विनती करता हूँ, मैं रुकता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कुछ गलती हुई हो तो मुझे आप सभी क्षमा कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद बोबड़े सर। इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स होंगे और बाद में मैम जयश्री कुलकर्णी मैम इस सेशन को कंक्लूड करेगी। कोई क्वेश्चंस, क्यूरी, प्लीज। एक आध क्वेश्चन ही लेना है सर, एक आध क्वेश्चन लेना है, इसके बाद अगले सेशन का टाइम है। हाँ, वन क्वेश्चन सर। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत अच्छा व्याख्यान रहा। और एक ही सवाल है, प्रिजर्वेशन एंड मेंटेनेंस में बोलिए थोड़ा सा, एक दो सेंटेंस। प्रिजर्वेशन एंड मेंटेनेंस। और एक इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं कि 1814 में डॉक्टर नैथेनियल वेलिस ने जो पहली म्यूजियम बनाई थी वो वनस्पति विज्ञान के माहिर थे। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ सर, थैंक यू सर, ज्वाइन करें सर। यस, मैं जयश्री कुलकर्णी मैम से विनती करता हूं कि इस सेशन को कंक्लूड करिए। जयश्री कुलकर्णी मैम। नमस्कार सर, नमस्कार। मैं सर्वप्रथम शिक्षक दिन के अवसर पर मेरे शिक्षक भाइयों को हार्दिक बधाई देती हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। भुजंग बोबड़े सर जी ने जो अनुभूति हमें दिलाई है, क्योंकि संग्रहालय कोई सिर्फ संग्रहालय नहीं, वो एक अनुभूति है हर संस्कृति या मानवीय जीवन की, और इस अनुभूति से हमें उन्होंने वाकिफ कराया, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ।
उन्होंने रामायण काल से आज तक का संग्रहालय का सफर हमारे सामने प्रस्तुत किया। उन्हें एक्चुअली टाइम बहुत कम मिला, लेकिन उन्होंने इस जो भी वक्त मिला उसमें ये सब दिखाने का प्रयास किया। उन्होंने आधुनिक भारत में मतलब 18th सेंचुरी से 21st सेंचुरी तक का जो विकास भारतीय संग्रहालय का हुआ है वो 5 स्टेप्स में बताया, और पुरातन वस्तुओं से लेकर रेल या टॉयलेट वगैरह जो संग्रहालय रहते हैं, ये सब हमने अभी फोटोग्राफ बहुत कम देखे, लेकिन सर का काम बहुत है। मैंने उनका काम नजदीक से देखा है। उनका खुद का संग्रह भी बहुत है। हमारे यहाँ उनके संग्रह का जो एक दिन का प्रदर्शन रखा था, उसमें मैंने देखा है सर का संग्रह बहुत बड़ा है। तो उन्होंने इन सब बातों का विश्लेषण इतने अच्छी तरह से हम तक पहुंचाया, इसके लिए मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने ये बताया कि ओपन एयर म्यूजियम से इको म्यूजियम, वर्चुअल म्यूजियम या पॉपअप म्यूजियम तक भारत के संग्रहालय का किस तरह से स्टेप बाय स्टेप विकास हुआ है, और म्यूजियम का महत्व क्या है। भारत में स्थित जो विविध संग्रहालय है, उन संग्रहालयों के माध्यम से हम शिक्षा में क्या कर सकते हैं, मतलब शिक्षा में उनका महत्व क्या है, अभ्यास या शिक्षा में बच्चों को पढ़ाने में भी इसका उपयोग हो सकता है, ये बातें उन्होंने बताई। इस तरह से श्रीमान भुजंग बोबड़े सर जी ने संग्रह से लेकर संग्रहालय तक का म्यूजियम का जो सफर है विस्तृत रूप से हमारे सामने प्रस्तुत किया। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद देती हूँ। अंत में गोलवलकर कॉलेज रेवा के माध्यम से श्री प्रोफेसर स्कंद मिश्रा जी ने जो आयोजित किए हुए इस नेशनल वेबिनार के एक कड़ी में जुड़ने का अवसर मुझे मिला, इसके लिए मैं तहे दिल से उनकी शुक्रगुजार हूँ। फिर से उनको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, क्योंकि बहुत वक्त हो चुका है और अगले सेशन का हम सब इंतजार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मैम। अब आगे सेशन के लिए मैं ये सब सेशन हैंड ओवर कर देता हूँ मिश्रा जी के पास। प्लीज मिश्रा जी सर। धन्यवाद प्रोफेसर ओम शिवा सर, डॉक्टर जयश्री कुलकर्णी मैडम, मिस्टर भुजंग बोबाडे जी। बहुत ही अच्छा लेक्चर है, और म्यूजियम की, पूरे भारत के म्यूजियम की आपने शुरुआत से लेकर के और अब तक की पूरी झांकी यहाँ पर प्रस्तुत की है। निश्चित रूप से, क्योंकि मैं थोड़ा क्षमा चाहूँगा कि समय का अभाव था, इसलिए जो है पूरा का पूरा हो नहीं पा रहा है, क्योंकि आज ही हमको 7 लेक्चर करा करके और वैलिडेटरी सेशन भी करना है। तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और आपका जो यहाँ पर लेक्चर था बहुत ही उम्दा है, और कई तो म्यूजियम हमें खुद भी मैं जानकारी नहीं थी, क्योंकि मैं एक्चुअली वनस्पति शास्त्र का विद्यार्थी हूँ। लेकिन जब हमने ये कार्यक्रम किया तो थोड़ा सा मैंने गूगल और लोगों से चर्चा करके और ये जानकारी ली, लेकिन बहुत सी जानकारियां आपने यहाँ पर हमको दी जो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। आगे चल करके हम जरूर इन म्यूजियम को, जब कभी हमारा नेक्स्ट सीरीज आएगा, तो इनमें से हम आपसे चर्चा करके जो महत्वपूर्ण, क्योंकि कांटेक्ट पर्सन भी चाहिए एक्सपर्ट बोलने के लिए इन म्यूजियम के, तो हम आपके माध्यम से वो जानकारी प्राप्त करेंगे। और निश्चित रूप से कुछ जो महत्वपूर्ण म्यूजियम हैं उनकी एक श्रृंखला का पर एक व्याख्यान आपसे भी आपका भी रखेंगे, जो नेक्स्ट बचे हुए म्यूजियम हैं। हालांकि कुछ म्यूजियम तो मैं स्वयं जा चुका हूं, जैसे कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली, यहाँ के म्यूजियम को मैंने देखा है। लेकिन कुछ ऐसे म्यूजियम, क्योंकि आप शोध के छात्र उस पर शोधार्थी हैं, इसमें लगातार काम करते रहते हैं, तो जैसे हम लोग वनस्पति शास्त्र के विभिन्न इंस्टीट्यूट में जाते हैं, ऐसे आप भी हर जगह आपने बृहद रूप से इसका सर्वे किया है, आपने देखा है। तो यहाँ पे आपने जो जानकारी दी हमारे ऑडियंस को, हमारे स्टूडेंट्स को बहुत लाभदायी होगी। हम आप सभी तीनों लोगों को अपने महाविद्यालय की ओर से, मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग की ओर से हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। Eminent speaker Dr. R.P. Harisa, postdoctoral research fellow and project manager, Ashoka Trust for Research in Ecology and the Environment,
A-Tree, A-T-R-E-E, A-Tree, Bangalore. Chairperson, Dr. M.U. Sarif, Head, BSI Southern Regional Center, Coimbatore, and co-chairperson, Dr. Veena Pani Dubey, Professor Botany Department, CMD College, Bilaspur, Chhattisgarh. Welcome all of you, sir and madam. And I am requesting to Dr. M.U. Sarif, sir, please chair the session, and Dr. Veena Pani Dubey, please co-chair the session, and Dr. Harisha, eminent speaker. So please chair the session and introduce the brief introduction of our eminent speaker. Yes. Good afternoon, everybody. Here, Skand Mishra ji, our ex-joint director Anis Ahmad Ansari Saab, and my co-chairman Dr. Veena Pani Dubey, and my eminent speaker Harisha RP from Atri, Bangalore. Good afternoon to everybody. Good afternoon. Friends, at the outset, I thank MS Golvalkar College authorities for giving me an opportunity for chairing this session in this 10-day webinar, detailed webinar series conducted by MS Golvalkar. Hats off to MS Golvalkar College for arranging such a big webinar, national level webinar. And it is not a joke to arrange the webinar, calling all people from all different walks of life, different disciplines, and arranging such a very good webinar is really a great Herculean task what Skand Mishra ji has taken up. I congratulate him for this biggest achievement. And at the outset, I just again, in particular, thank Skand Mishra ji for giving me an opportunity to chair the session. And I thank Dr. Veena Pani Dubey also for co-chairing this session. Friends, today's lecture in this session is by one eminent speaker, Dr. Harisha RP of Atri, Ashoka Trust in Ecology and Environmental Bangalore, a very good organization committed for biological sciences and especially for conservation biology. And Harisha is a conservation biologist working at Ashoka Trust of Environmental Ecology and Environment at Bangalore. As a formality to speak, to introduce the speaker to the audiences, Harisha RP is a postgraduate from PG Center of Kolar, affiliated to Bangalore University, and he has obtained his doctorate degree from Bharatiya University, Coimbatore, and his specialization for his doctoral degree was on traditional knowledge of wild food plants. Besides having his doctorate degree in this traditional knowledge, he is really a committed conservation biologist presently associated with Ashoka Trust of Environmental and Ecology at Bangalore. And with regard to his special interest of his subject, he is specialized in enterprise-based conservation. Then he is also specialized in natural resource management, and he is specialized in sustainable livelihoods of different communities. And he is also specialized in documentation promotion of traditional knowledge associated with many of the tribal communities. Of course, documentation of traditional knowledge nowadays is a very, very important terminology, very important bilingual subject, we can well say. Of course, cultural biodiversity also has taken a lead. National Biodiversity Authority also is completely concentrating on the preparation of people's biodiversity register, in which all the information related to traditional knowledge also is being to be incorporated. So these are all the very important nowadays, very important aspects. And today he is delivering a lecture on a very important, interesting topic, weeds to wealth. Weeds to wealth, community-led initiative in Malai Mahadeshwara Hills of Karnataka. Of course, friends, these weeds are considered as undesirable plants in wrong places like that. But Dr. Harisha has taken up lantana, which is treated as a unwanted weed, and he has generated much of the economy by making use of this weed plant, and especially his work is in this conservation center, to which he is a coordinator at Hills, and he has made many of the livelihood ways for many of the tribals who are living in Hills. Really a Herculean task and a very, very good commitment from the part of Ashoka Trust, I can very well say, and for which the responsible person is Harisha RP. So Harisha RP
Harisha Api has, besides his different ways, different branches of interest, he has having nearly 20 years of research experience, and besides that, he has coordinated in many of the teaching and internship programs of Ashoka Trust of Bangalore. So he has published many of his research papers in many of the peer-reviewed journals, and he has contributed many of his book chapters in many of the books which are being published by this science center at Chennai. So with this background, I wish Dr. Harish Arpi will be making all the audience still-born for this for his presentation on unwanted weed lantana camera, and making the way for the livelihood of many of the tribals of this tribals of Hills. Besides that, he is having RP. This one, Harisha RP is also a life member of International Society of Ethnobotany, as well as he is a life member of Indian Science Congress, and even the member of many of the other scientific bodies of our country. So with this background, I now request Harisha RP to take the responsibility and make his presentation, a lively presentation, before the August gathering of this national webinar. Thank you very much. Over to Harisha RP. Thank you. Thank you, Mohammed Sharif sir, for a wonderful introduction. So, and also I'd like to thank you all for the invitation from the government Rewa College institution. It's very proud to be here and then share my work which we've done in, at least in Karnataka and other places. So I just I'll click on my I'm not able to share this. Hello, can you hear me, sir? What happened, Dr. Harisha? You can't share your PowerPoint? Harish? Yeah. Harish? Can you hear me, sir? Yeah, I am hearing. You can't share your PowerPoint. Harisha RP, we cannot view your PowerPoint. Hello? Hello, Harisha? Yes, the slides are not visible still. Yeah, that only we are not. Must be he is arranging, I think, I suppose.
Harish, what happened, Dr. Harish? We cannot hear you and we are not getting your PowerPoint. अभी वो लेफ्ट कर गए हैं मीटिंग से, शायद फिर से जुड़े। अच्छा अच्छा, हाँ, You cannot hear him. no, I'm trying his cell phone also. He's not lifting cell. Okay. फिर चला गया। ले भाई खोल दे, इसी में खोल दे। इतना हो गया। फिर इसमें जाना पड़ेगा पीछे। क्या फोन से बात हो पा रही है? नहीं, फोन से नहीं। डॉक्टर हरीश, व्हाट द प्रॉब्लम डॉक्टर हरीश? नहीं, फोन से भी मैं ट्राई किया, नहीं हुआ। नहीं, अभी वो लगे तो फोटो आई अभी जस्ट। हाँ हो, अभी ज्वाइन हुए हैं। चलिए चेक कर लेना चाहिए पहले। हाँ अच्छा, आ रहा है। Yes. Yes. Yeah, it is coming. Please proceed, sir. Dr. Harish, Dr. Harish, we are now seeing your files. You please carry on. Hello? Dr. Harish, can you hear me? Unmute yourself, sir. Harish. Okay. Hello, can you hear me, sir? We just heard you, Dr. Harish. Yes, sir. Can you hear me, sir? Yeah, we are hearing you. Just your PowerPoint is not seen now. Yeah, now it is coming. It's coming. Yes. Oh. Yes, you can start. So, you can start. You can see my slides now, sir. Can also hear my voice. Yes, we can see. Yes. We can see. Okay. Thank you, sir. Please, thank you very much. Please conclude 30 minutes, sir. Please conclude within 30 minutes, sir. Yes, sir. Okay. I will answer, no problem. So, I mean, this is about our work on lantana, which is a weed is infected across India, even across globe. Is a major threat and problem for the natural forest as well as biodiversity. Dr. Harish, you bring your speaker a little bit near. The sound is very less. You take your speaker near to you. Speaker. Okay, sir. Can you hear me now, sir? Voice is clear now, sir? Yes. You can speak now. So this community is also affecting livelihoods of the local community in the forest area. So this is the worst invasive plant. So this is the Hills forest landscape. You can see a beautiful valley this is where we are working intensely on lantana problem. Of course, we are expanding to the southern states of India. So this is, if you go back to history,
So lantana invasion happened in India in 1860 by British as an ornamental dart and introduced to Indian landscapes. So now it's become a big problem across. If you see that distribution of lantana across the globe, this is a places where actually a lot of infection and then the problem is creating across globe in especially forest areas. This is the extent of growth of lantana camera in the natural forest area. So this is a beautiful flower of lantana. I mean, this is one of the 10 worst weed in the world. This is a natural forest area where you can see the mat of lantana. There is no other native species. It's fully occupied by lantana. And it's affecting the health of the forest, also affecting the biodiversity, also affecting a lot of livelihoods of local community. But if you see that local people are really good in make use of anything available in the forest or even in farmland. But indigenous people have used invasive species just as an interesting and it reverse as a history of their introduction. Many invasive species find in place in local livelihoods and culture. It is not a new thing, but still, I mean, if you see the extent of problem and the scale of problem and the extent of problem, I mean, you really need to think about it and then how to think a plan for management of this invasive species. So, a tree is used to escape of animals where we are working. So this is I mean in our earlier study in 2002 shows that Evanese forest areas covered by 70% of lantana in the forest area. So native fauna flora is affected very much and the livelihoods of local community, and also it's an indicator of degraded forest. So I'm introducing the Soliga native tribal community in the this landscape, especially in southern Karnataka. Soliga is a tribal community found in southern Karnataka. They are forest dwellers and bamboo, so traditional bamboo weavers, basket weavers. But they also collect and then make some livelihoods out of the non-timber forest produced available in the forest. So, I mean, it's all affected by because of lantana infection. If you see their socio-economic profile in 1999, when we studied first studied initially, so they're very much dependent on forest for livelihood, like collection of MTFE and also collecting the fuel wood and selling it. Of course, they also used to collect bamboo for weaving basket and selling in local market, but it's very negligible. So this is the kind of livelihood they had in 1999. Promoting this use of lantana by the tribal communities in southern India. So initiated by IQAC in 2002, after studying an intensive study on lantana distribution in MMS. So we came to know that this is a problem. What can we do? People are doing what they're doing it. We went and then trained a few Soliga youths in Dehradun. So, and then came back and then started Lantana Craft Center in MMS in 2004. So this is our
strategy of this initiative, we found this. We need some technology and then product development and then diversification of product. Of course, you need to impart this knowledge to skill to the community, and especially youths and women, and also how to link this into the local market or even in the big market like big cities like Bangalore. So this is the strategy, which is basically our objective is to enhance the livelihood of local community and then biodiversity conservation by controlling. So this is the innovation breakthrough happened when one of the French intern came to AT and then visited MMEs, and then he taught us how to bend the lantana by boiling the sticks. This is how people been using various ways to boil the sticks. Basically, earlier we used to have a tar dum and then boiling the sticks both sides. But now we evolved that model, and then we have a barrel, it's a steel barrel which you can put all the sticks and then boil it even more than 100, even to 300 kgs of lantana, you can boil it at a time. And then this advantage of this boiling stick is basically peel off the bark easily, and then it enhances quality of the sticks, and then cleaning, and then also it enhances the beauty of the lantana sticks itself. So these are the advantages. This is a big major breakthrough happened in 2005 by our intern from France Institute. So Lantana Craft Center we established in MMEs. This is one of the Lantana Craft Center in our Community Conservation Center, established in 2008 actually. So you can see it's a big lantana sculpture also. In this lantana center, many people are working on different products. We'll take order and then deliver the products based on the order. We are really not keeping the stock of the furniture. This is a training module you develop to impart this skill to different community in different forest areas. Basically, our craftsmen will go there and then train people in different forest areas based on the request. So this is a training module we developed, and then it usually take 10-15 days to really understand and then prepare, process the sticks, and then make the frame of the furniture and start the completion of the furniture. You see the trainings in different forest areas in and around MMEs. So we focus mainly women and also youths in collaboration with local forest departments. Then we trained around mainly and then around 400 people in and around MMEs. So this is a kind of a product you develop and produce right now. So many around 86 different products right now you are producing and then selling it in the market. It's very cheap compared to even bamboo and then cane furniture. So durability is also good. We have been using this lantana furniture from past 20 years. So good durability. These are the products, different products. These are some utility products. The product diversification is continuous, and then we are having different products based on customers' customization, or even different designers from different institutes who can come and then they spend time with the carpenters in MMEs and then design new products. So Lantana Craft Center, right now we have 3 craft centers in MMEs, forest area. Around 210 people are working from home scientific families. They are earning 500 to 800 per day. Furniture, around 51 products
And then utility products are 36 different products we have. Of course, we also recently in 2016 we started elephant sculpture making by using lantana. This is one of the collaboration with the NGO called Shola Trust in near Guti. I think you people are well aware of Guti. This is a marketing strategy we developed in 2008. So we basically need to impart this skill to group the artisans, and then register as a cooperative society, and then designing unit, a marketing center, shopping outlets. I mean, also we have been continuously exhibiting these products in different exhibitions across the country. So this is the logo we developed, Lantana Craft Center, eco-friendly, conservation-friendly product. I mean, this is the evolution of our product. So initially we tried, making basket out of lantana, but it didn't work. Attracted by any market. So we just dropped that idea and then started furniture from the idea of ESCO in Dehradun. Then we evolved a lot of products have evolved from many products, and then right now we are in the construction of live elephant sculpture using lantana sticks. These are different products, utility products especially. This is one of our Lantana Craft Center where different NGOs come and visit our Lantana Craft Center and explore. And then also they request for the training in their forest area. We'll go and then organize, train people there. So these are our Mr. Murugesh, who is a master craftsman. He's been working with us for the past 20 years. He's a Soliga, belongs to Soliga community. And the other craftsmen you can see from our community conservation center where the lantana elephant sculpture completed and then ready to transport it to basically Cochin to export it to UK. So one of the UK family funded for this project. So there are around 100 live elephant sculpture exported to London, UK. So these are the process. Different stages of elephant sculpture making on lantana. Basically, initially, this sculpture is fabricated with steel. Steel fabrication is done with live elephant architecture. Basically architecture work on the steel fabrication, and then later just transported to Lantana Craft Center, where craftsmen will fabricate this with lantana sticks. This is the final product, and this is exported to UK, where people trying to shift it to different vehicle and transport it. This is a latest product design. So one of our customer, based on customer feedback, we designed this product. Sofa set means fast moving product. It's a very beautiful sofa set. You can see here. And many other utilitarian products also based on customer will develop and design and then sell it with the orders. I would say 18 years. Every year at least producing around 20 orders will get 25 artisans working in Lantana Craft Center means 7 to 8 lakhs per year they are earning. Stick selling also, especially women and then many people in the village, they go for collection of sticks and then supply to Lantana Craft Center. They also earn money, around 3 lakhs per year. And then we also
sent a master captain to train people in different places based on the request from NGOs and then especially forest department. They will have a request for us to train people in forest area where actually lantana problem is there. So they also earn around 2.5 lakh per year. So elephant culture, I mean 6 to 7 elephant produced per year. So around 35 artisans work on that, and then it takes 10 lakhs per year. So yeah, as I said, 3 lantana crop center in MMS, 20 master captains. They usually focus on going and training people in different forest areas. Around 400 people trained on site in MMS. So 40% of the women. 740 people trained outside MMS in different states like Maharashtra, Kerala, Andhra, Tamil Nadu. And 130 household income increases this time from 15 years. Craftsmen earn around 1.7 crores in total. And also we are thinking and then exploring different utilization of this lantana, economically viable, and then also how to scale it up. All these products, if it is really going well with the market. So we tried besides extracting some chemicals out of plant leaves and flowers, agarbatti, especially from wood powder and sticks powder, particle board. Also we tried, and a paper. We also had a collaboration with some of the entrepreneur, and then developed paper out of lantana bark. Of course, some essential oils and then insect repellent from leaves and flowers and briquettes. Of course, it's very old, but still, but it can be done, but it's quite expensive. It's a lot of challenges, and then I would say very competition exists in the market, because since processing lantana sticks and then making briquettes is quite expensive compared to any ready-made briquettes available in the market. So we are really thinking about how to promote it and popularize this kind of stick products. This is some product. Paper is made out of lantana bark, and also some crates. Basically cement crates using lantana waste like bark and other used waste out of after crops and craft. You can see some of the papers and crates. And this is a particle board recently tried, but we are really facing problem of expanding and marketing this kind of product because cost is very high making these products initially. Maybe in the large scale it's possible, but now it's quite expensive. Especially particle board are very expensive compared to existing particle board available in the market. So also we are monitoring this lantana distribution in density of lantana in adjacent forest area or BRT Tiger Reserve as well as in the MMS Wildlife Sanctuary from past 20 years. This is a kind of, you can see that dark red is high density areas in the MMS Wildlife Sanctuary and BRT Tiger Reserve. So also we are estimating biomass, what is the per hectare, what is the biomass, and now we can, basically strategy to develop strategy to make use of these resources and then start a new lantana crop center where potential resources, and then we can decide based on the biomass and then density of lantana. This is villages in MMEs particularly where we started lantana crop centers, and then this is the kind of impact we made from past 15 years. You can see it around the villages. You can see
disappearing of lantana. And now, earlier, initially, people used to get lantana within just around their even farmland, even house. Plenty of lantana was there. Now, they are really walking around at least 3-4 kilometers inside forest to get the lantana. That much impact we made in enemies around. This basically lantana density is went down. Utility products, especially from lantana, and then trained people also. For 40 women actually participated in training program, and also of course Shola Trust helping us in elephant family to develop and introduce live elephant lantana sculpture. Of course, many other NGOs and then funding agencies are also helping us to diversify the products and then market these products. These are the areas where we train people in other than MMLs. These are actually very, it's not so very old data, but right now, so these are the places where we train people till 2021. There are 700 people in different forest areas and 5 southern Indian states like Kerala, Maharashtra, Tamil Nadu. Mr. Harisha, please. Yes. ये वॉइस कहाँ से आ रही है? वॉइस बहुत कम आ रही है. Oh, okay. So these are the exhibitions, and then can you hear me, sir, now? Yes. Oh, these are the lantana exhibitions. Harish, some disturbance at the background. Mr. Saab is pointing to that disturbance at the background. Some sounds are coming. Yeah, it's good. Okay, sorry for this. This is the exhibitions. So these are exhibitions, and then we actually received best stall award in especially Krishi Mela, farmers meet happening every year in Bangalore, and in GKVK, Gandhi Krishi Vignana Kendra, Bangalore. So you are participating in this exhibition, and then you received the best award many times. This lantana use profile. Hello. The low cost, high volume, local scale, simple technology, and then sustain local markets. Demonstrated a successful promotion of invasive species, enhanced local livelihoods, restoring native diversity. Of course, you are facing challenges like access to expansion. These are the challenges we are facing right now. So our future plan is expanding new and networking, facilitating development of marketing and strengthening linkage through tribal-based cooperatives, and fine-tuning the product and adapting the technological innovations. So this is our future plan. And then for more details, really you can Google it, lantanacraft.org. You can see more detail on the product and industry, and then also they have uploaded lantana craft training video. There you can see whole starting to end process of lantana product making in the video itself. So thank you. And these are the funding agency helped us to develop this. Thank you very much for listening to this talk. Thank you, sir. Thank you, Dr. Harisha, for a good presentation. Now the topic is open for discussion. Any this one is you can clarify. I will ask you. Hello. Oh, Dr. Harisha. Yeah, tell me, sir. Are you hearing? Yeah, I can hear it. Tell me, sir. It is lantana camara or some other, because some hybrids are also in garden. No, this is lantana camara, sir. Second is,
what is the success rate of removal from the forest? That is percentage achieved in the forest for removal of this disease, because this is very injurious to the health of the. That is what is MM? Yeah, I think you can. Did you observe in one of my slides showing that like a different crop center in different villages, where I mean the successful rate was around 60%. So I mean people usually won't cut all the sticks, but they collect selected stick only they will collect it, but the remaining sticks they use it as a fuel, boiling the sticks. So that way they repeating. I mean harvesting happen every 3 years once, so that lantana spread is under control and managed very well in MMLs. Now, my question was the removal from the forest area. That is what I am telling. That Yes, how much is being removed from forest? What is the success? That is what I am. This is also a good point. Yeah, I mean, so you are, I mean, almost in our wildlife sanctuary is around 941 square kilometer, but we are concentrated only in two ranges, forest ranges, that's around 17 square kilometer. So you have almost covered everything, and then we control, and then very well, is very much under control, Telangana control, yeah. And then you, generated 1.7 crore. Oh, very good. And then, I noticed, I don't know whether you notice or not, around many people get using got the job, and then created livelihood for many people, many families in the MMS region. One suggestion I will add, you can compare with the calamus, the extent of calamus and extent of lantana. That should be one aspect of your stuff in future. Yes, yes. That will pave the way for this improvement of selling and quality. Right. Yeah, I mean, you have been getting a lot of requests from different forest areas across the country now to train people in different forest areas. So we are being busy in conducting training now. Instead of just Dr. Harish, yes, sir. Really what Dr. Ansari sir pointed was really nice. Of course, the technology, the standardization of the work is good. Yes, some more plants like calamus can be added to this program, and we can diversify the things such that the tribal people can get more generation of economy. That is really good. Of course, Soligas community is really a very committed community, and they are doing good work. And making use of this unwanted weed lantana to be used. Of course, the empty mind is a devil's hut like that. At least we have made a way to them to just make their earning, and in their own place, making earning is really a great thing, very good program. Especially Lantana Craft Center program is really a very appreciable program I can well think of. Like that, we can diversify to some other weeds. Of course, I wanted to give a great responsibility. Parthenium weed also you can think of how to eradicate it. It has become a great menace in many of the cities. But lantana is, I think it is a perennial weed rather than an annual weed. But Parthenium is an annual weed rather than a perennial. You can think of some way. Thank you very much. That is good. Yeah, thank you, sir. I mean, actually, just for your point, even Parthenium also people have started using and exploring extracting dye out of whole plant. That is good. That is good. Yeah. That is good. Also, not only in Parthenium, also Eupatorium. Eupatorium. Promelina auditorium. Also, they are using and making dye out of. Sure. Like that, we have to such that their population be reduced to a certain extent. Yes. That is Yes. Thank you, sir. Thank you. Dr. Veena Pani Dubey, please, madam. Sir, co-chair. Madam, you can put on your mic. Please put on your mic, madam. मैडम आप म्यूट होइए वीणा पानी मैडम
सुनाई नहीं दे रहा है, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। माइक खोलिए आप। मैडम आप माइक खोलिए, अनम्यूट करिए अपने को, माइक बंद है आपका। आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं सुनाई दे रही है, आवाज नहीं आ रही है मैडम, आवाज नहीं आ रही है मैडम, आवाज नहीं आ रही। फोन कीजिए, फोन। हेडफोन बाहर करिए, हेडफोन निकाल दीजिए। हाँ हाँ, अब बोलिए, माइक आपका काम नहीं कर रहा है। बिल्कुल आवाज नहीं आ रही मैडम। मिश्रा साहब, मैं ही समराइज कर दूंगा, मैडम की आवाज नहीं आ रही है। हाँ हाँ ठीक है, आप बोल दीजिए सर। अच्छा, anyway, at the outset I congratulate Dr. Harisha RB from ATRI for presenting a interesting talk on this lantana weed, and he has just started his talk that when lantana was introduced from the British in the year 1960, and it has become a 10 most worst weed of our country. And then in 2002, ATRI has started the community work in this Zoological committee of this Malai Mahadeshwara hills of Karnataka, and in which many of the lantana craft centers were opened, and lantana stick boiling process was done, and it was done by the French intern who just joined the program at Hills. This lantana craft center, which was established, it started making many of the utility products as well as furnitures. To the extent of 51 furniture products were made and 36 utility products were made. That is really a very good achievement. And all the Zoological communities, their completely livelihood program was changed, and annual income went up to 1.7 crores. That is really a very great achievement. And one important achievement is elephant sculpture from this lantana sticks. That is also a very important notable work from this ATRI center, I can well say. And many of the programs were done, and even many of the economically important products are like agarbatti products, herbicide, toothpaste powder, then paper, essential oil also from this lantana weed was also generated, which is an additional income for this tribal community of that area. Really, and even this Dr. Harish has carried out lantana diversity variation in the elevation area also. That is also a noteworthy achievements. And besides that, this program has made way for institutional linkages also. That is really a very great thing. Many of the institutes, they can be linked together, and the economy can be further, it can be enhanced. Really a very great and interesting lecture presented by Harisha. I congratulate Dr. Harisha for this commendable work in this Zoological community of Hills. And at the end, I congratulate even ATRI Center also for taking such type of program, which will be very much on the way of conservation of its biodiversity. Friends, today biodiversity has become a necessity rather than a fashion, and it has become a sovereign property of any nation under consideration. We have to completely conserve this biodiversity, and one way conserving this unwanted weeds and bringing out the economically products and income generating products is really a notable work. Such type of work has to be taken up in many of the areas and many of the centers. I once again congratulate Harisha and ATRI for this commendable work. And at the end, I thank MS Golvalkar College in general and Dr. Skan Mishra for giving me an opportunity to chair this session. And even I congratulate, I also extend my wishes to Dr. Veena Pani Dubey, Professor of Botany from CMD College for co-chairing this session. And thanks to one and all. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Yes, madam. मैडम आवाज हाँ सर ने कंक्लूड कर दिया है, आप कुछ कहना चाहती हैं, बोलें। हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद गोलवलकर कॉलेज को कि उन्होंने ये ऐसा एक मैराथन वेबिनार रखा है जो करीब 10 दिन का है, और इसमें बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन हमको मिल रही हैं अलग अलग विषयों पर।
तो ये बहुत ही अच्छा एक समागम हुआ है और आपको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ डॉक्टर हरीश को, उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी। उस समय मैं पूछ रही थी जिस समय मेरा माइक काम नहीं कर रहा था कि आइसोनिया वर्ल्ड्स वर्स्ट वीड्स में डॉक्टर होम ने एक किताब लिखी है जिसमें इसका वाटर हाइसिंथ का भी जिक्र है। तो वाटर हाइसिंथ के यूटिलाइजेशन पे भी अत्रि में कुछ काम हो रहा है क्या, ये मैं जानना चाहती थी। बाद में उनसे पूछ लूंगी मैं, अभी शायद वो चले गए हैं। थोड़ा समय का वो है, वो बाकी मैं फोन शेयर कर दूंगा आपको, तो आप चर्चा कर लेते हैं, है ना जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और हरीश साहब को मैं बहुत बधाई देना चाहती हूँ और मेरे चेयरमैन शरीफ साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार नमस्कार। Thank you very much, ma'am. Thank you very much, ma'am. Please Google our Lantana craft product whenever you talk about this. Oh, okay, sir. Okay, I'll see. For more, please go link. Okay, thank you. Okay. Thank you, Dr. M.U. Sharif Saab, Dr. Beena Pani Dubey Madam. Thank you, Mr. Saab. Thank you for putting me for the for given good lecture and chair and co-chair the session. Thank you, all of you. Thank you, sir. Next session, our eminent speaker, Dr. Mohan Lal, Associate Professor, Ancient History and Archaeology, Indira Gandhi Tribal National University, Amarkantak. Chairperson, Dr. Shivkant Bajpayee, sir, Superintendent Archaeologist, Archaeological Survey of India, Jabalpur. Co-chairperson, Dr. Madam Bhamini A. Mahida, Chief Curator, Science Center, Sardar Vallabhbhai Patel Museum, Surat, Gujarat. Welcome all of you, sir. Bajpayee, sir. जी सर, नमस्कार। वेलकम सर। जी जी, धन्यवाद। मैडम जी सर, नमस्कार। भावनी महिदा मैडम। थैंक यू। अभी लेक्चर चल रहा है। डॉक्टर मोहनलाल सर, प्लीज वेलकम। एंड जी सर। I am request to Dr. Bajpayee sir, please chair the session, and Madam Mahida co-chair the session and introduce our eminent speaker, Dr. Mohanlal. Okay, sir. Bajpayee sir. Yeah, okay. So, firstly, I would like to thanks to organizers for giving an opportunity to recite this session, and I am happily introduced to our eminent speaker, Dr. Mohanlal Chadhar. Presently, he is an associate professor in Amarkantak Tribal University. Actually, he has started his career from the Sagar University as a lecturer, and today he is going to be present his paper बुंदेलखंड का पुरातात्विक पुरास्थल एरण मूर्ति कला के संदर्भ में। मैं यहाँ पर एक बात ये कहना चाहूँगा, एंड आल्सो आई वेलकम टू आवर को चेयरपर्सन मैडम भामिनी ए माहिदा मैडम, आई वेलकम यू। सो एरण एक ऐसा शहर है कि जिसके बारे में डॉक्टर मोहन का जो परिचय है वो एरण के कारण ही जाने जाते हैं। डॉक्टर मोहन प्रारंभिक रूप से उनका जो शिक्षण कार्य हुआ, प्रारंभिक शिक्षा हुई, वो सागर विश्वविद्यालय के प्रोडक्ट है। वहीं से उन्होंने एमए और पीएचडी किया और बाद में उन्हें वहीं पर व्याख्याता के रूप में कार्य करने का सौभाग्य मिला। और उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि मध्य प्रदेश में जब अमरकंटक में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई तो वहां पर उन्हें पुरातत्व के विभाग को कहें कि नए सिरे से स्थापित करने का और विकसित करने का मौका मिला और कुछ समय तक वे वहां पर विभागाध्यक्ष रहे और वर्तमान में वहां पर वे एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में काम कर रहे हैं। डॉक्टर चढ़ार ने कुल 12 पुस्तकें लिखी हैं। उनके 81 शोध पत्र विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं। इसके अलावा उन्होंने
बहुत सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सेमिनारों में सहभागिता की है और अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें 2 गोल्ड मेडल भी मिले हैं सागर विश्वविद्यालय से, जिनमें से एक अत्यंत प्रतिष्ठित गोल्ड मेडल डॉक्टर हरि सिंह गौर मेडल भी उन्हें प्राप्त हुआ। इसके साथ ही डॉक्टर चढ़ार जो है बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। वो पुरातत्व के साथ साथ योग में भी उनकी दखल है और वर्तमान में वे योग का विभाग भी अमरकंटक यूनिवर्सिटी में देख रहे हैं। इनकी पुस्तकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण, वैसे तो उनकी जितनी 12 पुस्तकें हैं सभी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनमें जो सबसे पॉपुलर पुस्तक है, कहेंगे जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा होती है, वो इरण की होती है, इरण का सांस्कृतिक परिचय। और उन्होंने एंसेंट आर्ट एंड आर्किटेक्चर और आर्कियोलॉजी के ऊपर भी बहुत सारा काम किया है और मूर्ति कला के ऊपर उनका विशेष कार्य है। और इरण, जब भी इरण का नाम आता है आप कहीं भी मध्य भारत में कहेंगे कि, तो मैं उन्हें वो जो परंपरा एक चली आ रही है इरण की, कि अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1870 के दशक में इरण का जब सर्वे शुरू किया, तब से लेकर प्रोफेसर के डी वाजपेयी, श्याम कुमार पांडे, बी.डी. झा और बाद में ये डॉक्टर मोहनलाल चढ़ार, इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। और चूंकि इरण जो है इनका नेटिव प्लेस है, मतलब इनका ग्राम भी है, और हिंदी के बहुत अच्छे वक्ता हैं डॉक्टर चढ़ार और अच्छे स्तर पे अपने शोध पत्र प्रस्तुत करते हैं, तो मैं डॉक्टर चढ़ार का हार्दिक स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में और उनसे अनुरोध करूंगा कि वे बीना नदी के किनारे इस महत्वपूर्ण पुरा स्थल के बारे में अपनी जानकारी प्रस्तुत करेंगे। और इरण के बारे में एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह बात है कि इरण कभी एक विकसित शहर हुआ करता था। आप ताम्रपाषाण कालीन से लेकर वहां पर जितने भी उत्खनन हुए 1960 से लेके अद्यतन 1920-21 तक, ये सारे उत्खनन इस बात की गवाही देते हैं कि कभी यह अत्यंत महत्वपूर्ण शहर था। वो चाहे वहाँ के सिक्कों के मामले की बात हो, चाहे वहाँ की मूर्तिकला की बात हो, या वहाँ पे मिलने वाले नगर और उनकी बात हो, ये सारे जो सारे तथ्य हैं इरण को एक नगर के रूप में परिभाषित करते हैं। और गुप्त काल में इरण अपनी कहें कि चतुर्दिक ऊंचाइयों को स्पर्श कर रहा था, किंतु आज जो इरण है, इरण का वह गौरवशाली अतीत या गौरवशाली वैभव हमें दिखाई नहीं देता है। एक महानगर किस तरह से एक ग्राम में परिवर्तित हो गया, उस पर भी हम लोगों को शोध की आवश्यकता है और उसकी भी विवेचना हम लोगों को जरूर करनी चाहिए। एक और महत्वपूर्ण तथ्य मैं आप लोगों के सामने जरूर रखना चाहूंगा कि इरण वो पूरा स्थल है जहां पर सबसे पहले भारत में सती प्रथा के प्रमाण मिलते हैं। 510 ईस्वी के भानुगुप्त के अभिलेख की चर्चा हमेशा होती है, जिसमें गोपराज की पत्नी के सती होने का वहां पर जिक्र मिलता है। और यह परंपरा सिर्फ 510 ईस्वी में एकमात्र नहीं है। 510 ईस्वी से प्रारंभ होकर इरण में यह परंपरा लगभग 18वीं शताब्दी तक दिखाई देती है और वहां पे 16 से अधिक सती स्तंभ, अभिलिखित सती स्तंभ प्राप्त हुए हैं। इस पर भी डॉक्टर चढ़ार का महत्वपूर्ण कार्य है और उन्होंने इसके ऊपर भी शोध पत्र प्रकाशित किए हैं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ डॉक्टर चढ़ार को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वे आएं और अपना प्रेजेंटेशन हम सबके सामने रखें। डॉक्टर मोहनलाल सर, धन्यवाद, प्रणाम। स्कंद मिश्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने आज हमको यहाँ बोलने का अवसर दिया। और अगर मिश्रा जी सुन रहे हैं हमको, तो हमारे यहाँ लाइट नहीं है कल से, तो हमारा लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया। हमने अपना पीपीटी आपके मेल पे भेजा है, तो अगर आप वहाँ से शेयर कर देंगे तो हम मोबाइल से जोड़ के बोल देंगे। अभी हालांकि हम इसको जो है ना, जितनी बैटरी है उतना तो शेयर हम कर ही देते हैं, तो वहाँ अगर आप कर देंगे तो बड़ा आसानी होगी, लोग फोटोग्राफ्स वगैरह इरण के देख पाएंगे। हेलो, हाँ सर, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। ये ओपन दिखने लगा प्रेजेंटेशन? हाँ सर, दिखने लगा। हाँ तो सर आप अपने मेल में, अगर हमारी ये बीच में खत्म हो जाती है बैटरी,
तो आप अपने मेल में हमारा ये पीपीटी है उसको वहां से शेयर कर दें। हम कोशिश करते हैं सर जी। जी जी बताओ सर। नमस्कार। आज के एयर पर्सन माननीय डॉक्टर सेवाकांत वाजपेयी सर, जो जबलपुर सर्किल के अधीक्षण पुरातत्वविद हैं और हमारे मार्गदर्शन भी करते रहते हैं। हम लोग काफ़ी पहले से जुड़े हैं और उनका यहाँ आना एरण के लिए एक वरदान सिद्ध हुआ है, इसलिए कि एरण में भारत का प्रथम सती स्तंभ लेख है और वो लगभग 70-80 वर्ष से नीचे जमीन में पड़ा था। उसमें 2 अभिलिखित हैं, वो खराब हो रहे थे और सर से हम लोगों ने आग्रह किया और सर ने कहा कि हम जो है ना जिस दिन एरण जाएंगे उसी दिन उसको हम खड़ा कर देंगे। हमने अनेक अधिकारियों से चर्चा की, तब नहीं हो पाया। सर ने उसको एक अपनी पहली विजिट की, उनके लिए हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। और ऐसे जब पुरातत्व में काम करने के लिए जो दिन रात लगे रहते हैं, उनके चेयर पर्सन आज हैं वो हमारे इस सेशन के, उनके लिए हृदय से धन्यवाद और उनका आभार। ये बुंदेलखंड का पुरातात्विक पुरास्थल एरण मूर्ति कला के विशेष संदर्भ में, इसका मध्य प्रदेश के अनेक नगरों में सांस्कृतिक विकास हुआ। इन नगरों में एरण बुंदेलखंड का प्राचीनतम सामरिक एवं सांस्कृतिक केंद्र रहा है। एरण का महत्व अपने कला वैभव के कारण विशिष्ट रहा है। एरण एक ऐसा केंद्र है जो अनेक कालखंडों में सांस्कृतिक प्रकाश स्तंभ का कार्य करता रहा है। मानवीय जीवन की निरंतर विकासशील धारा की दृष्टि से इस प्राचीन स्थल का अध्ययन भारतीय संस्कृति का वास्तविक स्वरूप प्रस्तुत करता है। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर के पुरातत्व विभाग द्वारा जो उत्खनन कार्य व सर्वेक्षण किए गए, जिनके परिणाम स्वरूप एरण तथा समीपवर्ती स्थलों से प्रागैतिहासिक, आदिऐतिहासिक तथा ऐतिहासिक युग के अत्यंत महत्वपूर्ण अवशेषों की प्राप्ति हुई है, जिनसे एरण का महत्व स्पष्ट होता है। श्रीधर वर्मा का अभिलेख, समुद्रगुप्त का अभिलेख, बुद्धगुप्त का अभिलेख, पूर्ण शासक तोरमान का अभिलेख, भानुगुप्त का अभिलेख, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल के अनेक सती स्तंभ लेखों से एरण का महत्व उद्घटित हुआ है। एरण गुप्त काल में समुद्रगुप्त ने इसे अपना स्वयंभोग नगर बनाया और कुछ समय समुद्रगुप्त अपनी पत्नी, पुत्र, पौत्रों सहित एरण में रहा। इस समय एरण का विकास चरमोत्कर्ष पर था। एरण को सागर जिले का प्राचीनतम ऐतिहासिक नगर होने का गौरव भी प्राप्त है। यह प्राचीन काल के प्रमुख राजमार्ग से जुड़ा हुआ था। एरण से एक राजमार्ग विदिशा होकर उज्जैनी तथा दूसरा राजमार्ग एरण से देवगढ़, एरच, मौरानीपुर होते हुए मथुरा जाता था। राजपथ पर स्थित होने से इस स्थल का अपना विशेष महत्व था। भारतीय सभ्यता और संस्कृति के विकास में एरण का विशेष महत्व रहा है। इस प्रदेश के अनेक पुरास्थलों के उत्खननों से प्राप्त सामग्री से ज्ञात होता है कि यहाँ पर धर्म, अध्यात्म, साहित्य, कला और ललित कला का सम्यक विकास हुआ है। भारतीय कला के इतिहास में एरण का महत्वपूर्ण योगदान है। मध्य प्रदेश के सागर जिले की वर्तमान बीना तहसील के अंतर्गत एरण ग्राम प्राचीन एरी कृण आज भले ही एक सामान्य ग्राम हो, किंतु प्राचीन काल में इसे भारत का एक विशिष्ट सांस्कृतिक स्थल होने का गौरव प्राप्त था। भौगोलिक स्थिति की हम बात करें तो एरण मध्य प्रदेश के सागर जिला के बीना तहसील में सागर नगर से 75 किलोमीटर उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। विदिशा से इसकी दूरी 72 किलोमीटर है। एरण बेतवा प्राचीन बेत्रवती की सहायक बीना नदी प्राचीन वेड़वा के तट पर स्थित है। बीना नदी उत्तर पश्चिम एवं पूर्व दिशा से एरण को अपने घेरे में लेकर अर्धचंद्राकार रूप में प्रवाहित होती है। एरण को स्वाभाविक सुरक्षा प्रदान करती है। दक्षिण दिशा में ताम्रपाषाण काल में निर्मित सुरक्षा दीवार बनी है। नदी के मोड़ से बने प्राकृतिक अर्धवृत्त के भीतर सुरक्षा दीवार का निर्माण किया गया था। एरण से प्राप्त ताम्र मुद्राओं के पृष्ठभाग पर निर्मित चिन्हों से भी उक्त तथ्य की पुष्टि होती है। कनिंघम महोदय के अनुसार इन मुद्राओं पर अंकित अर्धवृत्त पुराने एरण नगर की स्थिति को प्रदर्शित करता है तथा बीना नदी का चिन्ह बीना नदी प्राचीन वेणवा का संकेत करता है, जिसके तट पर एरण नगर बसा हुआ था। भौगोलिक दृष्टि से एरण का महत्व अधिक रहा है क्योंकि इसके एक ओर बुंदेलखंड तथा दूसरी ओर मालवा का भूभाग रहा है।
अतः यह बुंदेलखंड तथा मालवा के मध्य प्रवेश द्वार के समतुल्य था। पूर्वी मालवा की सीमा रेखा पर स्थित होने के कारण यह दसाण तथा चेदी महाजनपद को भी जोड़ता था। भारत में एरण की स्थिति आप देख सकते हैं मैप में, ये सागर जिले में उसकी स्थिति। बीना नदी जो है वहां अभी भी नाव चलती है, वहां नाव से बीना, यहाँ से बीना शहर की दूरी लगभग 7-8 किलोमीटर पड़ती है, नाव से लोग जाते हैं और काफी विशाल जल यहाँ वर्ष भर रहता है और प्राकृतिक सौंदर्य यहाँ देखने को मिलता है। बीना नदी का ये गूगल अर्थ से लिया गया एक मैप है। ये जो ये आप देख रहे हैं यहाँ, ये नदी अर्धचंद्राकार रूप में इसको सुरक्षा प्रदान करती है और चौथी ओर यहाँ सुरक्षा दीवार है। यहाँ गुप्तकालीन मंदिर बने हुए हैं, काफी सुरम्य वातावरण यहाँ का देखने को मिलता है। पहुंच मार्ग की बात करें तो एरण तक जाने के लिए 3 मार्ग हैं। पहला मार्ग खुरई होकर जाता है। सागर बीना सड़क मार्ग पर खुरई रेलवे स्टेशन से 4 किलोमीटर की दूरी पर निर्तला नामक ग्राम से एरण तक 16 किलोमीटर पक्की सड़क है, जो सिलगांव, लेटवास, धनसरा, जाऊखेड़ी ग्राम होकर जाती है। दूसरा मार्ग बीना भोपाल रेल मार्ग पर स्थित मंडी बामोरा रेलवे स्टेशन से जाता है। रेलवे स्टेशन से एरण तक 12 किलोमीटर की पक्की सड़क है, जो गौहर, दंसरा, जाऊखेड़ी ग्रामों से होकर जाती है। तीसरा मार्ग तहसील मुख्यालय बीना एवं रेलवे स्टेशन बीना से नौगांव, म्यूली, कोरजा, सतोरिया ग्रामों से होकर जाता है। सतोरिया ग्राम तक 8 किलोमीटर की पक्की सड़क है। सतोरिया से बीना नदी तक 1 किलोमीटर कच्चा मार्ग है। इसके बाद बीना नदी को नाव द्वारा पार करके एरण पुरस्थल पहुंचा जा सकता है। नामकरण की बात करें, जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम ने सर्वप्रथम प्राचीन एरीकरण नगर की पहचान एरण से की। एरीकरण नाम इस क्षेत्र व नगर दोनों के लिए प्रयुक्त होता था। एरण की प्राचीन संज्ञा एरीकरण अथवा एरकर्ण अनेक अभिलेखित मुद्राओं अभिलेखों में मिलती है। एरण की जनपदी मुद्राओं में एरण, एरकर्ण, गुप्तकालीन अभिलेखों में एरीकर्ण, सांची अभिलेख में एरकिन के रूप में एरण का उल्लेख हुआ है। एरण से प्राप्त समुद्रगुप्त के अभिलेख में एरण का नाम एरीकर्ण लिखा गया है। भानुगुप्त के प्रतिनिधि गोपराज का अभिलेख तथा हूण शासक तोरमाण के अभिलेख में भी एरण का नाम एरीकर्ण उल्लेखित है। रेपसन महोदय ने एरकर्ण को एरकर्ण पढ़ा है। एरण उत्खनन से प्राप्त गजलक्ष्मी की मुद्रा में एरण का प्राचीन नाम एरीकर्ण उल्लेखित है। एरण से प्राप्त अभिलेखित ताम्र मुद्राओं के अग्रभाग में एरण का प्राचीन नाम ब्राह्मी लिपि में एरकर्ण मिलता है। अभी हाल में एरण से प्राप्त एक पूर्व मध्यकालीन सती स्तंभ में एरण का नाम एरणी लिखा हुआ मिला है। मध्यकालीन व आधुनिक काल के सती स्तंभों में एरण का नाम एरण बत्तीसी लिखा गया है। अतः इससे स्पष्ट है कि प्राचीन कालीन एरीकर्ण एरकर्ण का नाम गुप्त काल में एरीकर्ण हुआ, पूर्व मध्यकाल में एरणी हुआ, मध्यकाल व आधुनिक काल में इस ग्राम का नाम एरण बत्तीसी हुआ। मुगल काल में एरण मुख्यालय 32 ग्रामों का केंद्र था, इस कारण ही इसे एरण बत्तीसी कहा जाता है। वर्तमान में अधिकांश लोग इस गांव को एरण बत्तीसी के नाम से जानते हैं। प्राचीन काल में एरण जनपद प्रदेश तथा विषय के रूप में प्रसिद्ध था। हूण शासक तोरमाण के अभिलेख में एरण का उल्लेख विषय के रूप में हुआ है। नगर और प्रदेश के रूप में प्रसिद्धि का उल्लेख गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के एरण अभिलेख में स्वयंभोग नगरे एरीकर्ण प्रदेश से अभिलिखित है। इतिहासकारों ने स्वयंभोग नगरे का अर्थ आमोद प्रमोद का नगर लगाया है। इससे स्पष्ट होता है कि समुद्रगुप्त ने इस रमणीय स्थल पर कुछ समय निवास किया होगा। एरण से मिट्टी की एक मोहर मिली है जो आकार में गोल है। उसके ऊपरी भाग पर गजलक्ष्मी का अंकन है और निचले भाग पर एरीकर्ण गोमिक विषयाधिकरण से लेख अभिलिखित है। इससे स्पष्ट है कि गुप्त काल में गोमिक नामक विषय एरीकर्ण भुक्ति के अधीन था। बुद्धगुप्त के अभिलेख में इस क्षेत्र का नाम कालिंदी नर्मदो मध्य अर्थात यमुना और नर्मदा के मध्य प्रदेश के रूप में उल्लेख किया गया है। ये पहली बार है कि नर्मदा का उल्लेख किसी अभिलेख में, गुप्तकालीन अभिलेख में एरण से मिलता है। एरण से प्राप्त शक शासक श्रीधर वर्मा के अभिलेख में एरण प्रदेश का उल्लेख अधिष्ठान के रूप में मिलता है। अधिष्ठान का आशय नगर से लिया गया है। भुक्ति तथा विषय के रूप में सीमा विस्तार क्या रहा होगा इसका पूर्ण ज्ञान तो नहीं मिलता है। इसकी भू संरचना है तो बड़े बड़े टीले वहां देखने को मिलते हैं। इसमें हमने डिटेल दिया है, टाइम उतना है नहीं इसलिए हम शॉर्टकट में इसको, ये टीले हैं, वहाँ बड़े बड़े टीले वहां मिलते हैं जहां नवपाषाण कालीन संस्कृति, ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति से लेकर निरंतर आधुनिक काल तक की संस्कृति का एक क्रमबद्ध जो जानकारी हमें यहाँ उत्खनन में मिली है, खुदाई में मिली है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी पिछले वर्षों में खुदाई की है, उसमें भी इस तथ्य की पुष्टि हुई है। सर्वेक्षण उत्खनन की बात करें तो एरण को खोजने का श्रेय ब्रिटिश कप्तान टी.एस. बर्ट को जाता है। 1838 ईस्वी में इन्होंने बुद्धगुप्त का एरण अभिलेख व तोरमाण का 12 मूर्ति लेख खोजा। उसी वर्ष जेम्स प्रिंसिप ने पाठ और अनुवाद सहित उसे प्रकाशित कराया। उसके जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम और फेथफुल फ्लीट ने इस अभिलेख का संपादन किया। 1874-75 ईस्वी में जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम ने यहाँ विस्तृत सर्वे किया और उन्होंने अपने ग्रंथ रिपोर्ट ऑफ टूर इन बुंदेलखंड इन मालवा में प्रकाशित कराया।
1959-60 ईस्वी में सागर विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग द्वारा इस क्षेत्र का सर्वेक्षण प्रोफेसर कृष्ण दत्त वाजपेयी जी के निर्देशन में किया गया और उत्खनन कार्य के लिए यह प्रस्थल चुना गया। सागर विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग द्वारा 1960 से 1965 ईस्वी में प्रोफेसर के.डी. वाजपेयी व उदयवीर सिंह के संयुक्त निर्देशन में उत्खनन कराया गया। इस उत्खनन में 20 खदानें ली गई। इस उत्खनन से मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणकालीन पुरास्थल एरण प्रकाश में आया। डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय सागर के पुरातत्व विभाग द्वारा ही दूसरी बार 1984 से 1985, 1986 से 1987 ईस्वी में प्रोफेसर सुधाकर पांडे व डॉक्टर विवेक दत्त झा के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया। इस समय 12 खदानें ली गई, जिससे एरण में नवपाषाण कालीन संस्कृति, कायथा व ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के पुरावशेष प्राप्त हुए। तीसरी बार 1998 ईस्वी में डॉक्टर विवेक दत्त झा के निर्देशन में उत्खनन कार्य करा गया और भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा 2020-21 ईस्वी में एरण में उत्खनन कार्य किया गया। इन सभी उत्खननों से एरण की ताम्रपाषाण संस्कृति पर विशेष प्रकाश पड़ा है। ये जहां आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन कराए गए, ये उसमें नदी के किनारे उसको यहाँ इंडिकेट किया गया है। ये जो है नदी को ये मैप के द्वारा यहाँ दिखाया गया है। ये उत्खनन में ताम्रपाषाण काल में जो फर्श बनाए जाते थे मकानों के, वो यहाँ दिखाया गया है। ये वहाँ सुरक्षा दीवार मिट्टी की मिली है, उत्खनन में इसकी पुष्टि हुई है, उसके लिए देखने के लिए एक्सकवेशन किया गया था। और एरण के इतिहास के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सागर जिले के प्राचीन स्थल एरण में जो उत्खनन कराए गए उनसे नवपाषाण काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक के अनेक महत्वपूर्ण पुरावशेष मिलते हैं। ये एरण के समीप भापसोन घाट, छपरेट घाट, रेता घाट, बस 1-2 किलोमीटर के अंतर में ये पुरापाषाण कालीन उपकरण वहां से काफी बड़ी संख्या में मिलते हैं। ये एक्सकेवेशन में और कुछ सरफेस से ये न्यूलिथिक सेल्ट वहां से मिली है, नवपाषाण कालीन कुल्हाड़ी वहां से मिलती हैं। ये उत्खनन में ये टेराकोटा फिंगराइंस मिलती हैं। ये जो एनिमल फिंगराइंस हैं यहाँ जो है बड़ी मात्रा में मिली है। ये एक चालकोलिथिक गोल्ड डिश मिला है जो 2.5 सेंटीमीटर का है। वेट जो है मेजरमेंट और वेट जो है 20 ग्राम इसका है। ये चालकोलिथिक कल्चर की जो पॉटरी है, मालवा पॉटरी, बड़ी मात्रा में बड़ी सुंदर ढंग से बड़ी इसको बनाया गया है। ये ह्यूमन फिंगराइंस वहाँ से मिली हैं, ये एनिमल फिंगराइंस हैं। ये सेमी प्रीसियस स्टोन है, कीमती पत्थरों के मनके हैं, बीड्स हैं जो श्रृंगार आभूषण में उपयोग किए जाते थे। ये मिट्टी के बर्तन बड़ी संख्या में मिलते हैं। यहाँ उत्खनन में 3268 आहत सिक्के मिले थे जो लगभग 3री सदी ईसा पूर्व के थे। और इसके बाद यहाँ एक सिक्का मिला, पहला भारत का पहला अभिलिखित सिक्का जिस पर धर्मपालस लेख लिखा हुआ है। भारत का पहला अभिलिखित सिक्का है। अभी तक जितने सिक्के मिले हैं उसमें सबसे पहले की स्क्रिप्ट इसमें मिलती है। ये ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में अभी सुरक्षित है। एक शीशे का बांट मिला था जिसमें इंद्रगुप्त नामक राजा का, स्थानीय राजा का यहाँ उल्लेख मिलता है। ये 460 सिक्के हमको मिले थे रिसर्च के दौरान, अभी हमने डोनेट कर दिए थे डॉक्टर सर हरि सिंह और विश्वविद्यालय संग्रहालय में। 460 ये सिक्के हैं, एक छोटे से मिट्टी के बर्तन में हमको मिले थे। और ये जो है इसमें 5 धातुओं का मिश्रण है। इसमें एक तरफ 4 और 5 चिन्ह बनाए गए हैं और पृष्ठभाग पर 1 या 2 बनाए गए हैं। ये पंचमार कॉइन्स हैं, आहत सिक्के हैं। ये बड़ी संख्या में सूर्य, अर्धचंद्र, उज्जैनी चिन्ह इत्यादि इन पे मिलता है। ये धर्मपाल का कॉइन्स है जिस पर धर्मपाल लिखा गया है। इधर एरकर्ण लिखा गया सिक्के हैं। ये शीशे का बांट है। ये अभी हाल में कुषाण कापर कॉइन्स हमको मिले हैं ईरान से। वशिष्ठ का एक कॉइन्स है, बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब कनिष्क जो है विदेशी जो शासक थे कुषाण, यहाँ तक उनके सिक्के मिलते हैं, इसकी पुष्टि भी हो रही है। शक शासकों के काफी बड़ी मात्रा में वहां से सिक्के मिलते हैं। ये उनके सांचे मिलते हैं, सिक्के ढालने के सांचे मिलते हैं। ये सिक्के हैं, ये जो शक शासकों में लगभग यहाँ से 7 और 8 शासकों के सिक्के मिलते हैं जिनके लेख हम लोगों ने पढ़े हैं। इस प्रकार के शक शासकों के सिक्के हैं। ये सील है, रंजो महाक्षत्रप पुत्रस रंजो महाक्षत्रप विजय सेना लिखा है रिवर्स। नाग शासकों के काफी बड़ी संख्या में यहाँ सिक्के मिलते हैं। गुप्त काल के सिक्के मिलते हैं। ये गुप्त काल में एक हमको अभी सील मिली थी, प्रोफेसर आलोक श्रोत्रिय सर जो हमारे गुरु हैं, आज शिक्षक दिवस है, शिक्षक के बल पे ही हम सब सीखते हैं। उनके लिए कोट धन्यवाद है। उनने इसमें जो है पढ़ा था, इसमें लिखा है गुप्तकालीन महादंड नायक कस्य वट्टी गल्लस, गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि में है और संस्कृत इसकी स्क्रिप्ट है।
ये वहां से एड़ी किरण विषयाधिकरणस इसमें लिखा गया है। ये ईरान से इस प्रकार की सीलें मिलती हैं। वहां से रामगुप्त के सिक्के मिले हैं, जो गुप्त वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था। वो समुद्रगुप्त का बड़ा बेटा था, उसके बाद उसका छोटा भाई चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य होता है। उसकी पुष्टि ईरान और वैसनगर से ही होती है। ये ईरानपुरा स्थल है। ये लगभग 47 फीट का ये है। और ये पिलर जो आप देख रहे हैं, ये पिलर, इस पे गड़ोर हैं, ऊपर हाथ में सर्प लिए हैं। बड़ी ही सुंदर कलाकृति है ऊपर। और लगभग 5-5.5 फीट की ये प्रतिमा है। और ये जो अशोक के समय में जो कैपिटल बनाए गए, जो पिलर बनाए गए, कॉलम बनाए गए, उस समय जो है उसमें इस तरीके के पिलर बनाए जाते थे। वो जो है उसको ये वो परंपरा को यहाँ देखने को मिलते हैं। विष्णु का मंदिर है, वाराह का मंदिर है। ये 1838 ईस्वी का फोटो है और ये इस तरीके से था। फिर आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको काफी सुंदर किया है। अभी ये जो है ना, अभी इसका भी काम चल रहा है। वाजपेयी सर अभी इसमें निरंतर लगे हुए हैं। जो काई इत्यादि लग गई, उसको भी वो सब काम अभी चल रहा है। ये जो है ये एएसआई के पहले 1838 ईस्वी के आसपास जो है इस तरीके से ये था। बाद में इसको सिस्टमेटिक बना दिया गया। तो इसमें जो है यहाँ गरुड़ासीन विष्णु हैं, जो किसी मंदिर की पहचान होती है कि जो ललाट बिंब पर किसी जो देवता हैं उसी को समर्पित मंदिर होता है। तो ये विष्णु को समर्पित मंदिर है। ये विष्णु की अद्भुत प्रतिमा है। मंदिर भी अद्भुत है, क्योंकि गुप्त काल का इस प्रकार का मंदिर कहीं भारत में मिला नहीं। ये मंदिर थोड़ा भूमि को जमीन में खोद कर इसका गर्भगृह नीचे बनाया गया है। इस प्रकार के मंदिर ये पहला ही मंदिर है। और इसमें यहाँ गंगा यमुना का चित्रण किया गया है, नागबलरी का सुंदर चित्रण किया गया, भगवान विष्णु के 10 अवतारों का यहाँ सुंदर चित्रण किया गया। विष्णु की लगभग 13 फुट 5 इंच की ये प्रतिमा यहाँ है। ये भारत की इतनी विशाल प्रतिमा, विष्णु की पहली प्रतिमा यहाँ से मिलती है। ये वाराह हैं, जो पहले जब ये टूट गया था मंदिर उस समय थे। फिर बाद में एएसआई ने इसको इस तरीके से किया और बाद में अब ये इस तरीके से आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको बना दिया गया है। इसके ऊपर ये सामने अगर वक्ष स्थल पर देखें तो इधर हूर शासक तोरमाण का अभिलेख है, जो लगभग 5वीं सदी ईस्वी का है। और इतनी विशाल प्रतिमा, ये लगभग 14 फीट लंबाई है इसकी, 5 फीट 5 इंच चौड़ाई है, 12 फीट ऊंचाई है। इतनी बड़ी, इतनी विशाल प्रतिमा, इतनी प्राचीन प्रतिमा भारत में पहली बार किसी पुरास्थल से हमको देखने को मिलती है। ये एक निरव वाराह की प्रतिमा है, सागर विश्वविद्यालय के म्यूजियम में रखी हुई है। इसमें गुप्तकालीन ब्राह्मी में महेश्वर दत्तस और वाराह दत्तस ये लिखा हुआ है। ये इसको बनाने वाले पिता पुत्र हो सकते हैं, या कोई इसको बनाने वाले कोई डोनेटर भी हो सकते हैं, डोनेट करने वाले। वो ये भारत की सबसे सुंदर निरव वाराह की प्रतिमा है जो ईरान से मिली है। ईरान पुरास्थल में जो मॉन्यूमेंट है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधीन, उसी स्थल से मिली थी। कनिंघम महोदय ने इसको अपनी पुस्तक में ऐसी जानकारी दी है। एक ही प्रतिमा अभी हाल में वहां से मिली है। ये वहाँ एक राजेंद्र हैं, वहाँ उनके घर में ये रखी हुई है। बड़ी सुंदर प्रतिमा है। ये जो अभी हमने पहले आपको प्रतिमा दिखाई, ये इसी की कॉपी है, बिल्कुल सेम। तो इसको जो है हो सकता है कि पहले बनाने से पहले इसकी एक आकृति बना लेते होंगे, छोटी आकृति, उसके बाद फिर इसको जो है बड़ी आकृति में वहाँ रूप परिणित किया जाता होगा कलाकारों का। ये बड़ा एक उत्तम उदाहरण वहां से हमको मिलता है। ये इस तरीके से जो पीछे इसकी डिजाइन है, सेम डिजाइन वो निरव वाराह की जो सागर विश्वविद्यालय में प्रतिमा है वहाँ है। ये नरसिंह की प्रतिमा वहां से मिलती है, 3-4 प्रतिमा वहां से मिलती हैं, ये सागर विश्वविद्यालय के म्यूजियम में है। ये वहाँ अभी पड़ी हुई है ईरानपुरा स्थल पर। ये नरसिंह की प्रतिमा है। अगर इसको यहाँ सेट कर दिया जाएगा तो ये भी बड़ा सुंदर हो जाएगी। और ये हमें लगता है वाजपेयी सर के कर कमलों से ही होती है। ये सूर्य के रथ के घोड़े वहाँ दिखते हैं। बहुत सारी ऐसी प्रतिमाएं टूटी हुई भी पड़ी हुई हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज यहाँ है कि यहाँ ये 4 पिलर लगे, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लगा दिए थे। यहाँ कृष्ण जन्म की सुंदर चित्रण यहाँ है। कृष्ण जन्म से लेकर कंसवध तक के गुप्तकालीन कला में यहाँ चित्रण किए गए हैं। यहाँ बताना उल्लेखनीय है कि गुप्तकालीन कला में जो कृष्ण जन्म का एक सिस्टमेटिक चित्रण है वो इधर से मिलता है।
ये हमारा लैपटॉप जो है बंद हो गया सर, तो अब वो जो है अगर संभव हो तो वो कृष्ण लीला के फोटोग्राफ्स दिखा देंगे तो हम उसको और बोल देंगे, या हम ऐसे ही बोलें बगैर फोटोग्राफ्स के। मिश्रा जी। सर मोबाइल से अभी आप बोलिए, तब तक हम ये डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। चलिए हम बोलते हैं सर। आप मोबाइल से बोलिए। तो हम आपको बता रहे थे कि एरणपुरा स्थल पर कृष्ण जन्म से लेकर और कंस वध तक के बड़े ही सुंदर चित्रण हैं। इतने प्राचीन भारतीय कला में कहीं भी पूरे भारत में कहीं से नहीं मिलते, इतने सिस्टेमेटिक। अब यहाँ जो है कृष्ण जन्म का भी दृश्य दिखाया गया है। कृष्ण जन्म के बाद जो माया जो कन्या के रूप में यशोदा के यहाँ जो पुत्री जन्म लेती है उनका भी दृश्य दिखाया गया है। बलराम का जन्म का भी दृश्य दिखाया गया है। अश्विनी कुमारों को वहां सुंदर चित्रण किया गया है। इसके अलावा जब कृष्ण का जन्म होता है तो वो वासुदेव लेके जाते हैं यमुना पार करके नंदगांव, तो उसका सुंदर चित्रण वहां किया गया है। दोनों बच्चों को एक्सचेंज करते हुए दिखाया गया है। वहां से कन्या को लेते हैं, कृष्ण को वहां सौंपते हैं, वो बड़ा ही सुंदर दृश्य वहां चित्रण किया गया है। इसके अलावा कृष्ण कंस को मारते हुए दिखाया गया है। वो आकाश में आकाशवाणी वो कन्या करती है दुर्गा के रूप में, देवी के रूप में, कि तुमको मारने वाला पैदा हो गया है। उसका बड़ा ही सुंदर चित्रण एरण की कला में हमको देखने को मिलता है। जब कृष्ण थोड़े बड़े होते हैं, कृष्ण जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उसमें जब उनको बहुत सारे राक्षस मारने को आते हैं तो उनको भी चित्रित वहाँ किया गया है। उसमें जो है हम देखते हैं कि सक्टासुर एक बैलगाड़ी के रूप में आता है। सक्टासुर का बैलगाड़ी के साथ बड़ा सुंदर चित्रण, नीचे कृष्ण लेटे हुए हैं बच्चे के रूप में, उसको ऊपर उछालते हुए दिखाया गया है। गोवर्धन पर्वत को उठाने वाला दृश्य वहां दिखाया गया है। वहां जो है ना कालिया नागमर्दन का सुंदर चित्रण किया गया है। दो वृक्ष होते हैं अर्जुन के, यमला अर्जुन वृक्ष की कथा हमें कृष्ण लीला में मिलती है, उनका उद्धार करते हुए दिखाया गया है। माखन चुराते हुए वहां दिखाया गया है। वासुदेव का और जो है चित्रण भी वहां बीच बीच में किया गया है। यशोदा का चित्रण बीच बीच में किया गया है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो है वहां एक तृणावत राक्षस आता है आंधी तूफान के साथ, उसका चित्रण वहां किया गया है जिसको कृष्ण मारते हैं। और जो है जब अक्रूर जी आते हैं कंस को, पंच जब वो पहुंचाता है कृष्ण को लेने यज्ञ में, तो वो उसका चित्रण है कि वो जब लेके जाते हैं तो यमुना में स्नान करते हैं, तो स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं नीचे, तो वो यमुना में कृष्ण दिखते हैं, और जब ऊपर देखते हैं तो वो रथ में बैठे होते हैं। उसका एक सुंदर चित्रण वहां किया गया है। इसके अलावा जब वहां पहुंचते हैं, मथुरा पहुंचते हैं, तो वहां कुबड़ी की चिकित्सा करते हैं, कुब्जा की चिकित्सा करते हैं, उसका बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया है। धोबी के घाट पे कपड़े धोने वाला एक चित्रण है, वो ही वहां उत्कीर्ण किया गया है। फिर यज्ञशाला का दृश्य वहां बताया गया है। इसके बाद जो है जब कंस को वो मारते हैं तो कंस को मारते हुए कंस उनके नीचे पैरों में पड़ा हुआ है, और उसको जो है वहां वो पूरा चित्रण वहां किया गया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कृष्ण लीला का और भी का चित्र बहुत अच्छा है, क्योंकि नाग के रूप में बलराम आते हैं तो वहाँ शेष नाग का एक भव्य चित्रण किया गया है। वो ये दिखाता है कि जब उनका जन्म होता है और उनके माता पिता जो हैं वासुदेव और देव की हाथ जोड़े प्रार्थना करते हुए उनकी विष्णु की दिखाए गए हैं। ये अपने आप में एक मतलब गुप्तकालीन कला, भारतीय कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण हमको देखने को मिलता है। तो इसके बाद और हम निरंतर बाद में भी हमें बहुत सारी मूर्तियां मिलती हैं। राम की मूर्ति एक वहां पे मिली है, परशुराम की मूर्ति मिली है, त्रिविक्रम का स्वरूप मिलता है जिसमें वामन अवतार की चर्चा जब मिलती है, 3 पैर में पूरे आकाश और पृथ्वी को नाप लेते हैं, उसका बड़ा ही सुंदर चित्रण वहां किया गया है। इसके अलावा हम देखते हैं कि गांव में अगर हम देखते हैं तो एक गांव में एक बुद्ध का एक सिर भी मिला हुआ है, और भी मंदिर लगभग वहां 5 से 6 मंदिर रहे थे। उन मंदिरों की द्वार शाखाएं पूरे गांव में पड़ी हुई हैं, और उन द्वार शाखाओं में भगवान विष्णु के 10 अवतारों का चित्रण उसमें किया गया है।
तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि गुप्तकालीन कला में वहाँ बहुत सारे मिलते हैं। हाँ, अब जो है अगर हम शैव धर्म की बात करें, शैव संप्रदाय की बात करें, तो शैव संप्रदाय में हमको वहाँ से शिवलिंग मिलते हैं। वहाँ लगभग 3री सदी ईसवी का एक प्राग गुप्तकालीन जो है एक बड़ा ही सुंदर मुखलिंग मिला है, जो वहाँ अभी एक टीले पर ही रखा हुआ है। अभी हम तो वाजपेयी सर से आग्रह करेंगे कि अगली बार जाएं तो उसको आप जरूर देखें, बड़ा ही सुंदर और काफी अर्लीस्ट है। हम तो कहते हो सकता है वो और अर्लीस्ट हो सर, वो जो है वो और अर्लीस्ट हो सकता है, क्योंकि हमें लगता है उस पर कुषाण कालीन जो है पूरी कला उसमें दिखाई देती है। एकावली है, ओंठ जो है उनके मोटे बनाए हुए हैं। इसके अलावा गुप्तकालीन शिवलिंग वहां से नंदी काफी बड़ी संख्या में मिलते हैं, 4 नंदी वहां से गुप्तकालीन हमको मिले हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो है वो मध्यकालीन और आधुनिक काल के कुछ सती स्तंभ वहां से मिलते हैं। उनमें जो है एरण के लोकल राजाओं की जानकारी, वहाँ की योद्धाओं की जानकारी, उन अभिलेखों में ये भी मिलता है कि अंग्रेजों की फौज से लड़ते हुए कई लोग मारे गए और उनकी पत्नी सती हो गई। तो ये जो कल्चरल सीक्वेंस है वो हमें सती स्तंभों से भी दिखाई देता है। और वहां से मुगल मराठा काल के सिक्के मिलते हैं, सल्तनत काल के सिक्के मिलते हैं। जो ये बाद के कालों तक एरण जो है एक बड़े नगर के रूप में रहा, और उसकी ख्याति इसलिए रही कि ये जो है राजमार्ग पर स्थित था, प्रमुख राजमार्ग, व्यापारिक राजमार्ग पर स्थित था। और अभी हाल में जो है डॉक्टर शिवाकांत वाजपेयी सर जो हमारे मार्गदर्शक भी हैं और काफी जो है दिन रात लगे रहते हैं एरण के लिए। उनने अभी सती पिलर को जो खड़ा किया उसका पूरा उसको सुरक्षा प्रदान की। इसके लिए उनको जो है जितनी उनकी प्रशंसा में बात की जाए वो बहुत कम है, क्योंकि आज टीचर्स डे है, इसमें टीचर्स भी जुड़े हैं और आप सभी लोग कुछ ना कुछ जानकारी देते हैं। आप सभी को टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ हम अपना ये लेक्चर खत्म करते हैं, टाइम वैसे भी कम है आपका, तो हमें अनुमति दें। नमस्कार। धन्यवाद डॉक्टर मोहन, आपको थैंक बहुत यू सुंदर। डॉक्टर मोहनलाल। एक्चुअली लगता है फाइल वो बड़ी है तो लोड करने में समय लेती है। बहरहाल हम लास्ट तक मेरी लोड हो जाती है तो हम उसको यूट्यूब के माध्यम से उनकी जो आपके डायग्राम हैं उनको हम यूट्यूब में जोड़ेंगे। अभी हम इंतजार कर रहे हैं उसको, तो इसके बाद हम उसको जोड़ लेंगे। और डॉक्टर वाजपेयी साहब प्लीज कंक्लूड करें। जी, धन्यवाद डॉक्टर मोहन, आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन यहाँ पर हम सबके सामने रखा। जितना भी आपने दिखाया वो बहुत सुंदर था, और निश्चित रूप से एरण के बारे में अभी उतना काम नहीं हुआ जितना काम होना चाहिए। एरण में कंजर्वेशन की बहुत ज़रूरत है और संरक्षण का कार्य बहुत आवश्यक है। कई बार होता है कि हम लोग खुदाइयाँ करके छोड़ देते हैं और वो चीज़ें वैसी ही पड़ी रहती हैं। इट इज़ ए काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन। अगर हम लोग उसको सुरक्षित नहीं रख सकते हैं तो हम लोगों को उसकी खुदाइयाँ नहीं करनी चाहिए। तो इस विषय पे हम लोग जरूर काम करेंगे, और अभी जो काम चल रहा है वो चलता रहेगा। आपने अपने व्याख्यान के माध्यम से जो एरण के प्राचीन नाम के बारे में जिक्र किया एरिका, इससे संबंधित एक अभिलेख समुद्रगुप्त का अलेक्जेंडर कनिंघम को 1875 में मिला था, और वो अभिलेख आज कोलकाता संग्रहालय में रखा हुआ है, वहां पर आज भी देखा जा सकता है। इसके अलावा जब हम लोग एरण की बात करते हैं तो एरण, जैसा कि मैंने पूर्व में कहा था, एरण कभी एक समय में वैभवशाली नगर था, और अगर आने वाली खुदाइयों में पुरातात्विक उत्खनन और सर्वेक्षण के माध्यम से शायद ये भी संभव हो कि एरण कभी राजधानी नगर भी होने की संभावना है। क्योंकि जिस तरह से देखिए यहाँ पे जिस तरह से सांस्कृतिक अनुक्रम प्राप्त होता है और जिस तरह से वहाँ पे वैष्णवाइट मूर्तियां मिलती हैं, वो मूर्तियां अद्भुत हैं। मैं जब बेंगलोर में अधीक्षण पुरातत्वविद के रूप में काम कर रहा था तो होयसला शासकों के मंदिरों में रामायण, महाभारत और कृष्ण लीला के जो अंकन हैं वो एक साथ मिलते हैं, और कुछ कुछ मंदिरों में तो इतने अद्भुत अंकन हैं कि उनमें पूरी की पूरी कथाएं हैं। चूंकि उनका जो कालखंड है या टाइम फ्रेम है वो काफी बाद का है इन कंपैरिजन विद द गुप्ता रूलर्स, लेकिन इसके बावजूद भी मतलब ये जो परंपरा की शुरुआत हुई है कृष्ण लीला
के कथा के अंकन की, और हमारे यहाँ राम कथा के अंकन की। हमारे पड़ोस के क्षेत्र में मतलब छत्तीसगढ़ मध्य, जो कभी मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, वहां के महेशपुर नामक क्षेत्र से भी इस तरह की बहुत सारी प्रतिमाएं कृष्ण कथा की मिली हैं। लेकिन उसमें कालखंड का अंतर है। जो हमको यहाँ पे गुप्त काल में चीजें मिल रही हैं वो परंपरा अनुसार क्रमानुगत रूप से थोड़ा सा 7वीं 8वीं 9वीं शताब्दी 10वीं शताब्दी वाजपेयी साहब, ये खुल गई है फाइल, तो थोड़ा सा हम एट ए ग्लांस फोटो जो है वो यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं। बिल्कुल। आप अपना वो व्याख्यान वो उद्बोधन चालू रखिए। जी। तो एरण के ऊपर जो काम है वो काम करने की बहुत आवश्यकता है। और मैं यहाँ पे चूंकि आज सभी विश्वविद्यालयों में या महाविद्यालयों में पढ़ाने वाले रिसर्चर शोधार्थी हैं, सभी को शिक्षक दिवस की तो बधाई देना ही चाहूंगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो हमारा मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में आप सभी लोगों ने बांधवगढ़ का नाम सुना होगा। उसका नाम मैं इसलिए लेना चाह रहा हूं कि अभी वराह का जिक्र आया कि एरण का जो वराह है वो शायद भारतवर्ष के प्राचीनतम और विशालतम वराह प्रतिमाओं में से एक है। इसकी फोटो दिख रही है स्क्रीन में सर। जी। बुंदेलखंड में वराह के पूजन की और पृथक से उनके मंदिर स्थापित करने की एक अद्भुत परंपरा है। ये परंपरा शायद पूरे भारतवर्ष में कहीं पर नहीं है। आप चाहे मझौली का वराह देख लीजिए या बिलहरी का विष्णु वराह देख लीजिए, ये पृथक से मंदिर बनाए गए हैं। मतलब वैष्णव, ये पूरा क्षेत्र जो था वैष्णव धर्म को समर्पित क्षेत्र था, वैष्णवाई क्षेत्र था, जहां पर आपको वराह की प्रतिमाएं बनाई गई हैं। और ये वराह की जो प्रतिमाएं हैं, ये एक वराह नहीं है, इस तरह की दर्जनों वराह की प्रतिमाएं हैं जो स्वतंत्र रूप से बनाई गई हैं और उनके स्वतंत्र मंदिर हैं। मतलब जबलपुर के पास में आप मझौली जा सकते हैं, बिलहरी में आप जाके देख सकते हैं, विष्णु वराह का मंदिर देख सकते हैं। तो इस तरह की जो परंपरा है बड़ी अद्भुत है। और इसी से जुड़ी एक जानकारी ये है कि हाल ही में जबलपुर मंडल जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो बना है, इट इज ए न्यूली क्रिएटेड सर्किल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया व्हिच इज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ 2020 इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। हम लोगों ने एक सर्वे की शुरुआत की थी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में। क्योंकि आज समय नहीं, कभी हम लोग उस पर जरूर जिक्र करेंगे। लेकिन बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का हम लोगों ने 1 महीने तक लगातार सर्वे किया और उस सर्वे में जो जानकारी आई वो बड़ी अद्भुत है। और मुझे लगता है वहां पे जो वराह की प्रतिमा हमको मिली है वो जो एरण का वराह है उससे भी विशाल प्रतिमा है। और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व इस मायने में सबसे महत्वपूर्ण है कि वहां पर वैष्णव कल्ट का बहुत ज्यादा प्रभाव रहा और वहां पे भगवान विष्णु के दशावतार की जो प्रतिमाएं हैं वो मोनोलिथिक हैं, बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हैं। मतलब 20 फीट 32 फीट 30 फीट 40 फीट की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हैं। और उनका एएसआई ने इस बार एक विस्तृत डॉक्यूमेंटेशन किया, जो कि 1938 में एनपी चक्रवर्ती साहब ने उसका पहले कभी सर्वे किया था। उसके बाद सिस्टमेटिक सर्वे कभी हुआ नहीं, उन्होंने सिर्फ अभिलेखों को लेकर काम किया था। हम लोगों ने जब इस बार इसका सर्वे किया, 1 महीने तक वहीं पर पूरी टीम थी, तो उस सर्वे के दौरान ये वराह प्रतिमा प्रकाश में आई। और सिर्फ वराह प्रतिमा नहीं, इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारी सामग्री, लगभग हमको 2 दर्जन से ज्यादा नई केव्स मिली हैं, 3 दर्जन के आसपास नए ब्राह्मी के अभिलेख मिले हैं, शंखलिपि के अभिलेख मिले हैं और दर्जनों लूज प्रतिमाएं मिली हैं, मतलब स्केटर्ड स्कल्पचर्स मिले हैं। इस तरह का मतलब बांधवगढ़ के और कुछ इतनी महत्वपूर्ण सामग्री जो प्रकाश में आई है वो छत्तीसगढ़ के साथ साथ मध्य प्रदेश के इतिहास को भी नए सिरे से रेखांकित करती है और नए तरह से उसके इतिहास लेखन की मांग भी करती है। क्योंकि हम लोग जब भी बात करते हैं इस सर्वे के दौरान हम लोगों को कुछ नए ट्रेड रूट भी दिखाई दिए, नए ट्रेड रूट मिलते हैं। जब भी हम लोग व्यापारिक पथों की बात करते हैं, यात्रा पथों की बात करते हैं, तो हमारे सामने सिर्फ पूरे भारतवर्ष में जो खाका आता है उत्तरापथ का, दक्षिणापथ का, यही आता है। लेकिन जो इन पथों को कनेक्ट करते थे वो पथ कहाँ चले गए, वो सारे पथ कहाँ विलुप्त हो गए, उनकी हम लोग बात नहीं करते हैं। तो इन पथों को बड़ा व्यापारिक पथ बनाने वाले जो छोटे छोटे इंटरकनेक्टेड पथ हैं वो कहाँ चले गए, उन सारे पथों को भी हम लोगों को देखने की और रिव्यू करने की जरूरत है। क्योंकि सर्वे के दौरान अनेक बार ऐसा होता था कि हमारे साथ जो फॉरेस्ट गार्ड होते तो बताते छत्तीसगढ़ से हाथी आ गए, हाथी आ गए। हम लोग एक दिन पहले जाते थे, हमको हाथी नहीं दिखते थे, तो एक स्वाभाविक जिज्ञासा हुई कि ये हाथी इतनी जल्दी कैसे आ जाते हैं। तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व भी छत्तीसगढ़ को जोड़ने का काम करता है, वहां भी इंटरकनेक्टेड रूट है और ये वही रूट है जो पुराने व्यापारिक पथ के रूप में काम करते थे। तो अब मुझे लगता है कि जो हमारा एरण है, एरण एक बड़ा समृद्धशाली नगर था और व्यापारिक मार्ग पर भी स्थित था।
और देखिए वहां पे बड़े बड़े जो वैष्णव कल्ट के मंदिर बने हैं, उसके पीछे एक और कारण है कि जहां भी नदियां उत्तरगामी होती हैं, उत्तर दिशागामी होती है, जैसे यहाँ पे भी ये पश्चिमोत्तर दिशागामी है। जैसे छत्तीसगढ़ में महानदी उत्तर दिशा के लिए टर्न लेती, तो जहां जहां पे भी नदियां उत्तर दिशा की ओर घूमती हैं, वो स्थान बड़े पवित्र माने जाते हैं। और वहां पे हमेशा बड़े बड़े जो है सेटलमेंट, आपको बड़े मंदिर मिलेंगे, राजधानी नगर मिलेंगे। छत्तीसगढ़ में तो सिरपुर का राजधानी नगर वहीं पे बना हुआ है। तो इस तरह से चाहे आप श्रीरंगपटना की बात कर ले, कहीं की भी बात करिए आप, या कावेरी नदी के किनारे, तो जहां पर नदी उत्तरगामिनी होती है वहां पे महत्वपूर्ण हमको मंदिर मिलेंगे या महत्वपूर्ण कुछ तरह की संरचनाएं मिलती हैं। तो आपने आज ये जो इतना अच्छा व्याख्यान यहाँ पर प्रस्तुत किया, और एक बार फिर से एरण के गौरवशाली अतीत को हम सब लोगों के सामने रखा है, उसके लिए मैं आयोजकों की ओर से, विशेष रूप से स्कंद मिश्रा सर की ओर से आपका विशेष आभार व्यक्त करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि हम लोग इस तरह के आयोजन हमेशा करते रहेंगे। और ये जो शोध पत्र है, किसी की भी जिज्ञासा हो, ये डिस्कशन के लिए भी ओपन है, और किसी की भी जिज्ञासा हो तो वो लोग डॉक्टर मोहन से इस संबंध में संवाद कर सकते हैं, अपनी जिज्ञासा सामने रख सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर वाजपेयी साहब। आपने चेयरपर्सन के रूप में यहाँ पर जो व्यूज दिए अपने, वो निश्चित रूप से एरन के बारे में, क्योंकि आपके ये जो जहाँ आप जबलपुर के ऑफिसर हैं, और ये सब एरिया जो रीवा, बांधवगढ़ एरिया, रीवा और सागर एरिया आपके क्षेत्र में ही है, और आपने उसका गहन अध्ययन किया है। और डॉक्टर मोहनलाल जी ने एरन पर जो कार्य किया अपना, निश्चित रूप से ये महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि जो चीज का बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं है, वहां से अपन यदि ऐसी जानकारी प्राप्त करते हैं तो निश्चित रूप से ये भी बहुत उपयोगी होती है, क्योंकि जैसे धोलावीरा, लोथाल, इसकी जानकारी तो बहुत पहले से स्टूडेंट्स को, रिसर्च स्कॉलर्स को और जो प्रख्यात पुरातत्वविद हैं उनको है, लेकिन ऐसी जो छोटे छोटे जगह पर और इस तरह की बड़ी चीजें थी कभी, और आज उनका फिर से जानकारी प्राप्त हो रही है। ये खासकर विषय के जो विद्यार्थी हैं उनके शोध के लिए और उस क्षेत्र के लोगों को जागरूक करने के लिए ये महत्वपूर्ण कदम है। निश्चित रूप से हम सराहना करते हैं जो फील्ड में रह करके आप काम कर रहे हैं, उसमें भी शोधार्थियों को मदद मिलेगी। और डॉक्टर मोहनलाल जी ने जो अपना यह कार्य किया है और इसके बाद भी लगातार वो यहाँ पर उस पर अपना ध्यान बनाए हुए हैं, और निश्चित रूप से यहाँ पर उन्हें बहुत अच्छी व्याख्यान प्रस्तुत किया है। मैं दोनों को धन्यवाद देता हूँ सर। इस वेबिनार में आप लोगों ने जो समय दिया और व्याख्यान दिए, अपने व्यूज साझा किए, सभी को मैं अपने महाविद्यालय की ओर से और मध्य प्रदेश हायर एजुकेशन की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सर एक मिनट सर, मैं अपने जो को चेयरपर्सन हैं डॉक्टर भामिनी, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट हाँ, कि भामिनी महिदा मैडम ज्वाइन करनी है क्या? प्लीज। हाँ प्लीज। हाँ प्लीज पुट योर रिमार्क्स हियर मैम, प्लीज। हाँ भामिनी मैडम प्लीज अपने व्यूज शेयर करें। बात भी हुई थी जुड़ने की। भामिनी महिदा मैडम, सूरत गुजरात से भामिनी महिदा मैडम, चीफ क्यूरेटर सरदार वल्लभ भाई पटेल म्यूजियम सूरत। सर वो इसमें है नहीं। अच्छा, तो मैंने सर फोन लगाया था नहीं, है मैडम है, दिख तो रही है। हाँ मैडम है, मैडम है। मैडम आवाज आ रही है आपको? हेलो, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ वही, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। भामिनी महिदा मैडम।
आवाज नहीं जा रही है उन पर। सर ठीक है सर। हाँ, मैं पुनः धन्यवाद देते हुए और मैडम को भी डॉक्टर श्रीमती आप सभी को नमस्कार प्रणाम। हम धन्यवाद देते हैं। तो अगला सेशन इमिनेंट स्पीकर, बहुत ही अच्छी टॉक होने जा रही है, अंगली टॉक भी, और निश्चित रूप से ये भी हमारे एंशिएंट हिस्ट्री आर्कियोलॉजी विषय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। डॉक्टर गुरमीत सिंह सिद्धू, प्रोफेसर गुरु गोविंद सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजियस स्टडी, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, पंजाब। डॉक्टर गुरमीत सिंह जी। Yes, sir. I am there. हाँ, yes, sir. Welcome, welcome, sir. So can I start my paper now, sir? Wait, sir. Wait, sir. Okay. Thank you. Chairperson Dr. M. Nambirajan, Joint Director General, Archaeological Survey of India, New Delhi. Dr. Nambirajan sahab, welcome. Yeah, well, thank you so much. A special guest, Jaspal Kaur, Professor Jaspal Kaur Kog, madam. प्रोफेसर जसपाल कौर काग मैडम, चंडीगढ़ से। शायद प्रेजेंट हो जी। अच्छा, यस मैडम, वेलकम वेलकम। हाँ जी, थैंक यू सो मच। वेलकम। हाँ, तो welcome all of you, and I am requesting to join the director Dr. Nambirajan Saab, please chair the session, and Madam Professor Jaspal Kaur ji, a special guest of the session. So please introduce our eminent speaker, Dr. Nambirajan sir. Thank you, Professor Skand Kumar Mishra, for inviting me to chair this session. It's a very important lecture we have now. I'm happy to chair this session. Professor Gurmeet Singh Sidhu is an eminent scholar. He is professor in the Department of Religion, Sikhism and Sociology of Religion, Punjabi University, Patiala. He is also the professor in charge of the Guru Gobind Chair, funded by the Ministry of Culture, Government of India. He is very widely acclaimed for his scholarly pursuits. He has written 14 books on religion and spirituality, and he has also have published 48 research papers on wide-ranging issues on religion. Some of the books published by him include The Meaning of Life, Interfaith Understanding and Buddhism, Beyond Otherness, Sikhism, New Mythical Experience and Interfaith Dialogue, etc. So he has written in Punjabi, Hindi and English on very valuable additions to the scholarly world. And he has also guided 9 PhD scholars so far, and apart from guiding the MPhil students, his work in the field of religion and literature has been recognized by the government of Punjab in 2017 when they awarded him for his contributions to literature. And I'm also happy to have with me the co-chairperson, Professor Jaspal. Welcome, ma'am, to join this session. Today, Professor Gurmeet will be speaking on socio-religious heritage of Punjab. We are all eagerly waiting to hear the talk by Professor Gurmeet. We are running late, but I think we can have sufficient time to listen to the lectures. I think
approximately 30 to 40 minutes lecture, and then we can take some questions. Professor Gurmeet, you can start your lecture. Thank you, Dr. Saab, for your, I think, remarkable words about me. As you know, today I am talking about the relationship between religion and heritage. Please give me some time. I am sharing my, I think, PowerPoint with you. So just wait 1 minute. Hello, can I audible, sir? Yeah, we are able to listen you. Okay, sir. Thank you. My topic of talk is religious heritage of Punjab. So the main objective of this talk is to understand the relationship of religion and heritage. As you know that from the very beginning, people visited the sacred places for the recreation, freshness, and attaining peace of mind. Main center of human civilization are developed on the sacred places. People feel safe and secure in the holy places. In fact, they want to live in the presence of holy. As per Marshall Ade was very prominent scholar in the field of religious study. He also visited India and lived there, and he has a lot of work prepared an encyclopedia of religion. Marshall Ade writes that sacred time and space is very important in a religious experience. No doubt modernity creates secularization, but after the experience of modernity, people are returning to sacred. In the current trend of tourism, culture tourism, especially religious tourism is emerging trend. In this talk, we will try to understand the significance of religion and heritage. On the context of this talk in Sikhism, I will try to give some views on the for the beginning of Sikhism from Guru Nanak, and in the middle, the preparation of Adi Granth and the creation of a Khalsa. So main focus of my talk will be Golden Temple. But before by talking, I will want to share with some important issues. For example, the heritage word inherited from old French means heritage, and its connotation go to the ancestors. When we're talking about the religion, there are two types of heritage. Generally, scholars are studying the heritage. One is sacred, another one profane. But there is difference between both of kind of heritage. Generally, in sacred heritage, people want to visit again and again, but
in compared to the sacred heritage, in the profane or sacral heritage sited are generally people visited in the life 1 or 2 times. I give you 2 examples. One example is from Amritsar. There is a Jallianwala Bagh. As you know that the incident is very significant in Indian freedom movement. Jallianwala Bagh is very near to Golden Temple. Generally, the people of Punjab, when go to the Amritsar, they also visited Jallianwala Bagh, no doubt. But they not visited Jallianwala Bagh frequently. Generally, they regularly visited the Golden Temple. For the local Amritsar peoples, maybe Sikh or Hindus, they regularly visit the Golden Temple for their recreation, freshness, and peace of mind. Second example is from Delhi. As you know that Delhi, where the Guru Tegh Bahadur Sahib was martyred by the Mughals, उनके धर्म परिवर्तन के लिए उनका जो शहादत की गई थी, वो that place is Chandni Chowk. That is sacred place. लाल किले के नजदीक है. There is Gurdwara. People visit this Gurdwara regularly. And recently in the I think 90s ਦੇ ਵਿੱਚ इंडियन गवर्नमेंट ने एक गुरु तेग बहादुर मेमोरियल एक डेवलप किया है, जो मेन रोड है दिल्ली to पंजाब जाने वाली, उस रोड में गुरु तेग बहादुर साहब मेमोरियल है. But nobody visited that kind of place. So first of starting my talk, I want to explain one thing, that religion is very significant in a heritage, from the connotation of world and from the recreation also. So that is why I selected this. My title of talk is a religion and heritage. So in this context, the heritage of Punjab is very important. Punjab is a land of composite culture. As you know, all are know that Punjab is a center of Sindh Ghati civilization. There is a, I show you one a picture that is from nearby the Ropar, there is Sangol. This is a symbol of Buddhism. In Punjab also, there is a one place, Kadam, that is very interconnected with Guru Nanak Dev, Shri Ramchandra Ji. So there is a different type of places are there, but in my talk that I already discussed, that I am focusing on Sikhism. The Sikhism is start from the Guru Nanak. As you know, the Guru Nanak laid a foundation of Sikhism. So the town of Sultanpur Lodi is a spiritually rich center of Sikhism. Guru Nanak announced the world his first spiritual message on the land of Sultanpur Lodi. Historically, after Sri Nankana Sahib, the birthplace of Sri Guru Nanak Dev Ji, that is in Pakistan, and the second place of Sri Kartarpur Sahib, that is also in Pakistan. Recently, government of India gave a passage from Punjab to Kartarpur. So two places are important in Pakistan, Nankana Sahib and Kartarpur. So third place that is very important, very significant in Sikh heritage, that is Sultanpur Lodi. It is the only town which is deeply and spiritually connected with the life of Sri Guru Nanak Dev Ji. Guru Nanak Dev Ji spent more than 14 years of his life in Sultanpur Lodi. After some time, in 1487, he was married to Bibi Sulakhani at Batala. Guruji brought to Bibi Sulakhani here and had two sons, Baba Siri Chand and Baba Lakshmi Chand, born to the couple.
Bibliographical accounts called Janamsakhi tells that as a routine at Sultanpur Lodi, Baba Nanak used to take a bath in some kind of river called Kalibi. Then spent a long hours engaged in the Naam Sivaran. The sacred place is known the Thada Sahib, which is situated in Sultanpur Lodi. Some part of my paper I am skipping because lack of time. The Guru Nanak started dialogue with the spiritual leader at the time. In this picture, you can see that Guru Nanak was talking with the Siddhas. They are called as Siddh Ghost. Siddh Ghost is the Bani of Guru Nanak, is also included in Guru Granth Sahib. One talk of Guru Nanak Dev Ji is Siddha in Batalas, Chal Batala talk. So there is a, this is very interesting for interfaith dialogue, and the heritage of Guru Nanak gives a message for peace and mutual cooperation and mutual understanding. Through the dialogue, Guru Nanak Dev Ji started a new kind of faith, a new identity. So the identity of this formation is generally very popular in the world, that is a golden temple. So now we are talking about Guru Golden Temple. Golden Temple is announced, called in 3 names. One is Darbar Sahib, second is Harimandir, and the third one is Golden Temple. Golden Temple name is very popular in these days. So when the Golden Temple is situated in Amritsar. The Amritsar city was established by the 4th Guru, Guru Ramdas Ji. Guru Ramdas Ji purchased a land here, and he established a new center of Sikh artisans. He called 52 some kind of craftsmen there, and they settled in Amritsar. As we're talking about that, when the Guru Amardas located this place, this Amritsar center becomes very popular and very attractive to the religious devotees of Gurus. The Sikhs came to meet the Guru, and they serve for the community. The Guru Ramdas developed a new kind of center. He started a new kind of religious practice there. Then the Guru Arjan Dev Ji, the 5th Guru of Sikh traditions, he prepared Adi Granth. Now we call it Sri Guru Granth Sahib. Adi Granth was installed in this Darbar Sahib called Golden Temple in 1604, 1604 में, and it is a very, I think, significant to know that this is the only Granth, only scripture in the world religious tradition that is prepared by the founders of a faith. Generally, we have some scriptures. We have a Bible, 2 type of Bible, Old Testament and New Testament, Quran, and another different kind of scripture of various religious traditions. But the nature of Sikh scripture is very different. First thing is that it is a very, I think it is a treasure of our heritage of ancestors. In this Guru Granth Sahib, Guru Nanak Bani talked about the Siddhas, called Siddh Ghost is also included. Secondly, the Bani is arranged in the ragas. Our classical ragas, 31 ragas, are chosen by the Guru Arjan Dev Ji to select this Bani. Third thing, that the contributors of Guru Granth Sahib are 36. Generally, people have their own scripture, the message of their own religion. But in Guru Granth Sahib, we have a
Bani of different contributors. They are belong to the different parts of India. So in this Bani, different kind of contributors and different dialects also. All dialects are prepared on the meters of Raga and in a Gurmukhi. So Guru Granth Sahib is very significant in a Golden Temple. 20 or 24 hours the people are listening Bani there. The main features of Guru Golden Temples are, one is Naam Simran, Bani singing called Kirtan. Another one is Seva, community service. And the architecture of Golden Temple is also important. As you know that Golden Temple has 4 doors. Generally our religious places we have some single door to enter, but Guru Arjan Dev Ji prepared this new kind of religious institution that is very open to all. Everyone, anybody from any religion easily can enter in a Golden Temple, sit here, listen the Bani, and take a free food called langar. Langar is also important in a Golden Temple. Langar is prepared by the community. It is the sacred food. Langar is not only food. That langar is a sacred food prepared by the peoples and from their earnings. Guru Nanak Dev Ji gives the 3 important features of his religion. First is Kirtan Karo, Naam Japo, and Vand Shako. These 3 principles are employed in Golden Temple. People give their donations called Daan, and they serve here for Seva, and they take Ishnan there. There is Srovar. The Golden Temple is the center in the Srovar. Naam, Daan, Ishnan are the 3 component of Sikh heritage. Second and a third place that is very important in Sikh heritage, that is Anandpur Sahib. Guru Gobind Singh created a Khalsa here. Khalsa is a common brotherhood. In this Khalsa, this is a new kind of Sikh army. As you know that Sikhs are fighting against the invaders, and ultimately they won. In Indian freedom movement and in the fights against the Mughals, Khalsa army create a new history. Generally we read the history, but the Sikhs create a new kind of history. In this Sikh history, you know that Guru Gobind Singh have 4 sons. 2 were martyred in Fatehgarh Sahib. छोटे साहिबजादे के बारे में आप जानते हैं कि एक की उम्र 5 साल से दूसरे की 7 साल से, उनको और कहा गया था कि वो अपना धर्म परिवर्तन करे, मगर बच्चों ने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया, उनको जिंदा एक दीवार में चिन दिया गया और उन्हें शहीद कर दिया गया था। और दूसरे जो उनके बड़े साहिबजादे थे वो चमकौर की जंग में शहीद हो गए थे। 4 पुत्र शहीद होने के बाद गुरु गोबिंद सिंह माछीवाड़े में पहुंचे थे। माछीवाड़ा is also very important in Sikh heritage. Here the Guru Gobind Singh announces the word ਜਾੜ ਦਾ ਸਾਨੂੰ 70 ਚੰਗਾ ਬਿੰਗ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹਿਣਾ। और in Talwandi Sab is also very important place in Sikh heritage. Here जब गुरु गोबिंद सिंह जी को जब बात बताई गई कि आपके 4 पुत्र शहीद हो गए हैं, तो आगे आप क्या करेंगे, तो गुरु गोबिंद सिंह ने क्या कि 4 मुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार. Then Guru Gobind Singh moved to Nader Sahib. The birth of Guru Gobind Singh was Patna, and his activities in Punjab, and he moved to Nader Sahib, Maharashtra. So the Sikh heritage creates a interconnection with the different localities. As you know that Patna, Nader Sahib, Maharashtra, and Punjab. These are main, I think,
These are hearts of our country. So Sikh heritage and culture gives us new, I think, insights to live a peaceful life. So in this talk, मैं थोड़ा ब्रीफ में ही बात की है, क्योंकि मुझे पता है कि सेशन काफी पीछे चल रहा है। जो आपके किसी के कोई भी किसी किस्म के कोई क्वेश्चन होंगे उसके बारे में हम बात कर लेंगे सर। थैंक यू वेरी मच। Professor Gurmeet, you have completed your lecture or cut short your lecture? Yes sir, मैं कट कर दिया है। नहीं, still time is there, you can speak 5 minutes. सर गुरमीत सिंह सर, आप अभी 10 मिनट आगे माने ले सकते हैं इसको। हाँ, थोड़ा और जानकारी दें, अच्छा रहेगा। अच्छा चल रहा है, अच्छा रहेगा। अगर मुझे सब कोई क्वेश्चन आ जाए पार्टिसिपेंट से, फिर मैं थोड़ी बात थोड़ा पंजाब के बारे में बहुत अभी जो ऑडियंस है उनके नॉलेज कम है, तो प्रश्न नहीं करेंगे, आप बोलिए, अच्छा रहेगा। तो जैसे हम पंजाब के बारे में बात कर रहे थे कि पंजाब सिंध घाटी की सिविलाइजेशन का सेंटर है पहले से, और शुरू से जहाँ डिफरेंट काइंड ऑफ कम्युनिटीज में एक डायलॉग रहा है। जो मैं बात अभी करना चाह रहा हूँ वो बात ये है कि जनरली जो स्कॉलर हैं वो क्या करते हैं कि हेरिटेज में रिलीजन को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते। बिकॉज आई एम स्टूडेंट ऑफ रिलीजियस स्टडी, सो मेरे लिए तो ये है कि जैसे मैंने आपको बात बता रहा था कि मर्शा लाडे बात कर रहे थे कि लोग क्या समझते हैं, जैसे मॉडर्न एक एटीट्यूड टूवर्ड्स ऑफ हेरिटेज, वो समझते हैं जैसे हेरिटेज प्लेस जैसे फ्रिज है, टेलीविजन है, या ऐसी कुछ रेलिक्स एकत्र कर ले, दैट इज हेरिटेज। बट दिस इज द विजिबल हेरिटेज। रिलीजन इज अ इनविजिबल हेरिटेज। Invisible heritage means religion is not manifested directly in the heritage, but religion is a nexus of heritage. Ancestors जो हमारे पूर्वज हैं उनके साथ जो कनेक्शन है मनुष्य का, वो धर्म की वजह से बनता है। वो मर्शा लाडे ने तो जहां तक भी कहा कि अगर कोई कहता है कि मैं सेकुलर हूँ, मैं किसी को नहीं मानता, तो उसके लिए उसने क्वेश्चन किया कि जो आप लैंग्वेज बोल रहे हैं कि आपने क्रिएट की है, लैंग्वेज तो आपके पूर्वजों ने क्रिएट की है, तो आपके पूर्वजों का धर्म क्या था, उनका जो भी धर्म था उसका इन्फ्लुएंस आप पर पड़ेगा। जैसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की स्टडी कर रहे हैं, इससे भी पता चलता है कि जो इंसान है उस पर उसकी जो हेरिटेज का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। जब हम पंजाब के बारे में बात करते हैं तो पंजाब का जो विशेष करके सिख हेरिटेज है वो 3-4 उसके 3 या 4 पॉइंट हम ले सकते हैं। फर्स्ट तो है इंटरफेथ डायलॉग। जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि विश्व पद्धर पे डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटी में एक टकराव की सिचुएशन बनी हुई है। रिसेंटली एक बुक पब्लिश हुई थी एसपी हिटिंगटन की, द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस। सिविलाइजेशन में जो टकराव पैदा हो रहा है, इस टकराव को कैसे कम किया जाए, इसका अल्टरनेटिव हम कैसे प्रोड्यूस करें। इसके लिए सिख हेरिटेज में फॉर एग्जांपल गुरु ग्रंथ साहिब इज अ लाइव एग्जांपल। गुरु ग्रंथ साहिब में तो जिस स्पष्ट लिखा है कि अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा कौन पले को मिले। एक नूर से सभी लोग को उपजे हैं। जब हम कहेंगे कि मेरा धर्म बड़ा है दूसरे का धर्म छोटा, तो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा। गुरु नानक देव जी के बारे में हम बात कर रहे थे कि गुरु नानक देव जी ने सभी स्थानों पर जितने भी रिलीजियस पर्सन रह रहे थे वो उस समय सिद्धों के साथ मिले, पंडित के साथ डायलॉग किया, मौलवी के साथ डायलॉग किया, मगर किसी को भी गुरु नानक देव जी ने अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए, गुरु नानक देव जी ने क्या बोला था, उन्होंने कहा कि सच्चे और सबको ऊपर सच आचार। वो कहते हैं कि ट्रुथ इज हायर, स्टिल द ट्रुथफुल कैरेक्टर इज हायर देन ट्रुथ। कि सबसे ज्यादा यू शुड इम्पोर्टेंट क्या है, यू शुड बी ऑनेस्ट टूवर्ड्स योर ओन रिलीजन, यू शुड बी
honest to your own religion. So गुरु नानक देव जी ने किसी को ने कहा कि आपका धर्म परिवर्तित करके आप सिख बन जाओ। सिमिलरली गुरु गोविंद सिंह के बारे में भी हम बात करते हैं कि एक नंदलाल गोवा जी, वो पर्शियन के स्कॉलर थे। जब औरंगजेब को पता चला कि उसने किसी आयत का अनुवाद करवाना था, किसी मौलवी से नहीं हो पाया, तो नंदलाल गोवा जी को इनवाइट किया गया कुरान की आयत का अनुवाद करने के लिए। नंदलाल गोवा जी ने ब्यूटीफुली उसका अनुवाद कर दिया। तो औरंगजेब ने कहा कि ये जो इसका धर्म क्या है, ऐसा व्यक्ति तो इस्लाम में होना चाहिए। मगर जब गोवा जी को पता चला कि मुझे वो कंपेल करेगा धर्म परिवर्तन करने के लिए औरंगजेब, तो ही शिफ्टेड टू आनंदपुर साहब। तो वो गुरु गोविंद सिंह जी के पास आ गए। तो गुरु गोविंद सिंह जी के पास रहे, और सबसे बेहतरीन गुरु गोविंद सिंह जी की जो जीवनी लिखी गई आज तक, वो नंदलाल गोवा जी ने लिखी है। बट गुरु गोविंद सिंह जी ने किसी को ये नहीं कहा गोवा जी को कि आप सिख बने, वो अपने धर्म में ही रहे, मगर काम उन्होंने गुरु गोविंद सिंह के लिए किया। तो जो हम बात कर रहे थे कि जो सिख हेरिटेज की सिग्निफिकेंस है, जैसे हम कहते हैं कि कॉमन हुड के लिए, ब्रदरहुड का मैसेज कन्वे करने के लिए, या एक पीस ऑफ माइंड। जब आप गुरबानी, जैसे हम अदर स्क्रिप्चर की बात करते हैं, गुरबानी में सुनना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल हम क्या बात करते हैं, जैसे हम वेबिनार में देखेंगे, सेमिनार में देखेंगे, लोग बोलने तो बहुत आई थिंक अतावले होते हैं, सुनने के लिए लोग इतने ज्यादा नहीं इंटरेस्ट लेते। तो गुरु नानक देव जी ने एक बात बोली है कि जब लग दुनिया रही है नानक। जे गुरु नानक देव जी की पंजाबी भी हिंदी में भी समझ आ जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब लग दुनिया रही है नानक, कि जब तक ये दुनिया है, तो आगे वो गुरु नानक देव जी कह रहे हैं, जब तक दुनिया रही है नानक कुछ सुनिए, कुछ कहिए नानक। सुनना और कहना दैट इज इम्पोर्टेंट। जब तक हम सुनेंगे नहीं किसी दूसरे की, तो समस्या का हम समाधान कैसे करेंगे। तो गुरबानी और जो हम बात कर रहे हैं कि सिख हेरिटेज एक आई थिंक लेटेंट लेवल पे क्या दूं का मत है, जो हम कहते हैं कि जो हेरिटेज जनरली लोग क्या कहते हैं कि जो पुराने किले हैं, उनको किले को आप एक बार देख लेंगे, दो बार देख लेंगे, ताजमहल भी कितने बारी देख लेंगे, मगर आपको क्या चाहिए, अपने जीवन को ट्रांसफर करने के लिए एक मैसेज चाहिए। जब हम गुरबानी की बात करते हैं, सिख हेरिटेज की बात करते हैं, तो गुरबानी में क्या कि एक तो हमारे जो 31 रागा की कंपोजिशन है वो प्रिजर्व हो गई है, कि राग के जो मीटर के हैं वो गुरबानी में उनकी विधि दसी गई है। और दूसरी बात, राग की जो कंपोजिशन को प्रिजर्व करने के लिए, और जो हमारे डिफरेंट कंट्रीब्यूटर हैं डिफरेंट प्लेसेस के, कोई महाराष्ट्र के है, कोई राजस्थान का है, कोई कहीं का, उनकी जो कंपोजिशन है उनको कंपाइल कर दिया गया एक ग्रंथ में, गुरु ग्रंथ साहिब, जिसका प्रकाश गुरु अर्जन देव जी ने करवाया था। और गुरु ग्रंथ साहिब के प्रकाश के डर से ही जहांगीर ने गुरु अर्जन देव जी को शहीद किया था। और जहांगीर की डायरी में जो लिखा है कि एक काफर अपना धर्म चला रहा है, उसकी हम दुकान बंद करना चाहते हैं। आप जानते होंगे कि लाहौर में गुरु अर्जन देव जी को तरह तरह के तसीहे दिए गए। उनको एक तत्ती तवी जो बोलते हैं, एक चूल्हा जलाया गया, उसके ऊपर एक लोहे की तवी रखी गई और ऊपर गुरु अर्जन देव जी को बिठाया गया, और फिर उनके ऊपर एक गर्म रेत डाली गई। और उनका उस समय भी गुरु नानक देव जी ने अपनी वाणी में जो कहा कि तेरा किया मीठा लागे। गुरबाणी में जैसे गुरु अर्जन देव जी की वाणी है सुखमनी, वो सुख देती है। जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि जो भी रागदार्थ वाणी है, कीर्तन है, कीर्तन से मन को शांति मिलती है। जो ये जो हमारा हेरिटेज है, जो हमारे कल्चर का एक पार्ट है, इसकी सिग्निफिकेंस सबने समझनी चाहिए। जब इसकी सिग्निफिकेंस समझेंगे तो हमें रिलीजन की इम्पोर्टेंस समझ में आएगी। जैसे मैंने शुरू में बात की थी कि जनरली आप देख सकते हैं कि आजकल टूरिज्म का जमाना है। टूरिज्म एक तो सैक्रेड प्लेसेस का है, दूसरा
सेक्रोल सो काइंड ऑफ परफेन प्लेसेस का है, मगर ज्यादा ट्रेंड जो सेक्रेड प्लेसेस के लिए ज्यादा है। जैसे लोग इंडिया के भी आते हैं, वो गोल्डन टेम्पल के लिए आते हैं, मगर बाघा बॉर्डर भी हो आते हैं, वहां उनको क्या रिट्रीट देखते हैं और कुछ नहीं है। मगर गोल्डन टेम्पल में उनको पीस ऑफ माइंड मिलता है, उनको फूड मिलता है, उनको शेल्टर मिलती है, खाने पीने का प्रबंध होता है, और शांति से वो गुरबाणी श्रवण करते हैं। और इम्पोर्टेंट बात ये कि जहाँ आके लोग एक अरदास करते हैं, प्रेयर करते हैं, जहाँ कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का अपनी सुख शांति के लिए, अपनी तंदुरुस्ती के लिए। एक इम्पोर्टेंट बात और है, गोल्डन टेम्पल जब बना था, चौथे गुरु इसमें मिथ भी इन्वॉल्व होती है हेरिटेज में। मैंने ये पॉइंट स्किप कर दिया था कि हेरिटेज में मिथ ज्यादा है। हेरिटेज क्या होता है कि रिवाइव होता रहता है, हेरिटेज ट्रांसफर होता है। हेरिटेज आई थिंक बिल्डिंग को हम हेरिटेज नहीं कह सकते। हेरिटेज जो हमारे माइंड में है, हमारी सबकॉन्शियस में है, जो हमारे अंडर करंट में है। जैसे मैं बात कर रहा था, एक फोक स्टोरी है कि जब गुरु रामदास जी ने जहाँ जो नगरी बसाई है, जस्ट गुरु रामदास जी को ये पता था कि जहाँ एक छपड़ी थी, जहाँ एक कोई बीमार व्यक्ति जिसको कोहड़ था, उसने अपनी पत्नी, उसकी पत्नी ने उसको एक आई थिंक सिर पे उठाकर वहां ले आई, और वो वहां भीख मांगने चली गई खाने के लिए, उनके पास कुछ नहीं था। जब वो वापस आती है तो उसके जो पति का कोहड़ है वो ठीक हो गया, वो तंदुरुस्त हो गया, देखने से बिल्कुल तंदुरुस्त लगा। और उसने क्या किया कि अपनी एक उंगली बचा के रख ली, ताकि वो शो कर सके कि मैं रियल पर्सन हूँ, उनको कोई लेखा ना पड़ जाए। जब उसकी पत्नी आई तो उसने बोला कि मैं आपका ही पति हूँ, तो उसे यकीन नहीं हो पाया। वो कहने लगी आप मेरे पति नहीं हो सकते। तब उसने वो अपनी उंगल दिखाई। इस जो हम एंसेस्टर की बात करते थे कि जो गोल्डन टेम्पल का जो हिस्ट्री आप देखेंगे कि पुरातत्व जड़ा पक्ष है वो हमारी फोकलोर में जाता है, जो हमारी एक ओरल ट्रेडिशन है। ओरल ट्रेडिशन में गोल्डन टेम्पल की रूट पड़ी हुई, और इसी जगह को का चयन किया गुरु रामदास जी ने अमृतसर नगरी बसाने के लिए। और जहाँ आके हम कहते हैं कि जब जो भी अमृतसर हरमंदिर साहिब में आता है, सरोवर में स्नान करता है, अरदास करता है, उनके जीवन के जो दुख हैं, कष्ट हैं, बीमारी है, सब कुछ दूर होती है। ये तो अभी भी मेडिकल साइंस भी मानती है कि पॉजिटिव थिंकिंग से ही इंसान की बीमारी दूर होगी। मेडिसिन से ज्यादा क्योरेबल है जो प्रेयर करते हैं। मेडिकल जो ट्रीटमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा मेंटल जो मेकअप है। जब हम मेंटली मोटिवेटेड होंगे कि मैं तंदुरुस्त हो सकता हूँ। मैंने गुरुद्वारे में गोल्डन टेम्पल में अरदास किया तो लोग तंदुरुस्त होते हैं, और मैंने ऐसे लोग, मेरे पास डाटा है, बहुत सारे लोग हैं हमारे डिफरेंट पार्ट से आते हैं, वहां वो प्रे करते हैं और वो अगेन एंड अगेन आते रहते हैं। सो यही सिग्निफिकेंस है रिलीजियस हेरिटेज की, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। थैंक यू सर। अभी मुझे लगता है कि काफी टाइम ले लिया। सर मैंने अपनी बात एक बारी समाप्त कर दी है। Hello, I am audible now. Yes sir, yes. Thank you, Professor Gurmeet. Very nice talk on the religious aspect, heritage and religion, the traditions, the folklore, the invisible part or the intangible part of the religion. We the archaeologists deal with the tangible part, the temples and the gurudwaras, etc. Now it's a very basic understanding of the Sikh traditions and folklores and beliefs. You are given a very nice and talk in a simple language. We all could understand it clearly. Thank you, Professor, once again. Any of the participants, if they have any questions, clarifications, they can ask. We have
about 5 minutes. Anybody can ask now. Any questions? Dear participants, anybody has got any questions, or we can close it? I think Professor Gurmeet, nobody has any questions. Once again, from the organizers' part and from my side individually, we thank you for the excellent talk you have given. We all could understand the Sikhism better now. Professor Mishra? Yes, a special guest, Madam Kaur, Madam Professor Jaspal Kaur. Yeah, Madam Jaspal, Professor Jaspal, if you have anything, any remarks, you can please make. Ma'am? Madam Jaspal Kaur. प्रोफेसर जसपाल कौर मैडम जी। हाँ जी, हाँ जी, बोल रही हूँ जी, बोल रही हूँ। आप मेरी आवाज सुन रहे हो सर? हाँ, यस सर। आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही। बंद कर। हाँ जी, हाँ जी सर, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन डॉक्टर गुरमीत सिंह ने दी है, पर उनके ऊपर चर्चा करने से पहले मैं इस वेबिनार में सुशोभित दानश्वरों, सज्जनों, विद्वानों, प्रतिभावानों और मेहमानजनों सभी को अध्यापक दिवस की मुबारकबाद देती हूँ, क्योंकि हम सभी इस तथ्य से परिचित हैं कि अध्यापक राष्ट्र के निर्माता हैं। हम जैसे गुरुओं के समान हैं, रास्ता दिखाते हैं और ज्ञान के मार्ग पर चलने का अभ्यास भी कराते हैं। मैं भी अध्यापक हूँ और यहाँ जुड़े हुए बहुत से रिसोर्स पर्सन भी अध्यापक की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सभी को प्रणाम और बधाई। और दूसरा परिणाम मैं MS गोलवकार कॉलेज रेवा के प्रिंसिपल साहब और ऑर्गेनाइजर को देती हूँ, जिन्होंने बड़े प्रयास के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर ये जैसे मुझे बताया गया कि 27 अगस्त से लेके 5 सितंबर 2022 तक बहुत से लेक्चर और वेबिनार आपने करवाए हैं। और जो आपने जो अब विषय चुना है हेरिटेज का विषय, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसके ऊपर विद्वानों ने बहुत सी रोशनी दी है, बहुत सारे पक्षों में रोशनी दी है। जैसे मैंने अभी भी सुना था, या मूर्ति कला है, या संगीत कला है, या भवन निर्माण कला है, बहुत से विषयों के बारे में विद्वानों ने अपनी रोशनी डाली है। हमें जो विरासत को संभालना है, उसकी निशानदेही करनी है, डॉक्यूमेंटेशन करनी है, प्रिजर्वेशन करनी है, और इसको जो हाईलाइट करना है, आने वाली पीढ़ियों को विरासत का ज्ञान देना है, ये सभी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। विरसे के साथ नई पीढ़ी को जब तक जोड़ा ना जाए, वो इसके महत्व को नहीं समझती। मैं एक बार फिर डॉक्टर मिश्रा जी, जिनके थ्रू मैंने आज ज्वाइन किया है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और कॉलेज की अथॉरिटीज़ का भी धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे आज ये मौका दिया है यहाँ आने का। अभी आप सब ने डॉक्टर गुरमीत सिंह जी का लेक्चर सुना है, जिन्होंने पंजाब की सामाजिक और धार्मिक हेरिटेज के बारे में आपको बहुत सारी बातें बताई हैं। और उन्होंने 3 शहरों की बात रखी है, जिनमें सुल्तानपुर लोधी है, अनंतपुर साहिब है, और दरबार साहब हरमंदर साहब है, जिनके बारे में उन्होंने विस्तार सहित बताया है। डॉक्टर गुरमीत सिंह जी के बारे में अगर मैं बात कहूँ कि वो अपने जो सब्जेक्ट हैं उसके पूरे धनी हैं। उन्होंने स्टडी ऑफ रिलीजन के ऊपर भी बहुत काम किया है, और दूसरा जो ये जो स्क्रिप्चर्स हैं, कंपैरेटिव रिलीजन्स हैं, उनके ऊपर बहुत सी व्याख्यान भी दिए हैं, बहुत सी किताबें भी लिखी हैं। उनकी जो किताबें हैं, धर्म ग्रंथ, बनतर और सिद्धांत, इसमें विस्तृत रूप में सभी धर्मों के बारे में और उनके स्क्रिप्चर्स के बारे में उन्होंने बताया है। और इसी तरह गुरु नानक चिंतन के ऊपर सिख पंथ नए युग के सन्मुख, और इसी तरह
बहुत सी और किताबें भी लिखी हैं जिनका आपने जिक्र भी किया है। सो खोज और आलोचना जगत के में उनके इस काम का पूरा नोटिस लिया जाता है और उनकी प्रशंसा भी की जाती है। सो इसीलिए उन्होंने अपना जो ज्ञान है किताबों में, गोष्ठियों में और अपने शिष्यों में बांटा है। बहुत सारे बच्चों को जो है पीएचडी कराई है। सो पंजाब के विरासती शहरों की इन्होंने हिस्ट्री के बारे में, सोशियोलॉजी के बारे में, रिलीजियसिटी के बारे में आज बहुत बढ़िया जो है वो प्रवचन दिया है। ये तीनों जो शहर हैं सिख धर्म के एक पूरे प्रीचर सेंटर हैं जिनके साथ सिख धर्म की एक रूह जुड़ी हुई है। जो सुल्तानपुर लोधी के बारे में उन्होंने बताया, ये वो शहर है जहाँ गुरु साहब जो हैं वो ज्यादा रहे हैं। उनका अपना जो बर्थ प्लेस था उसको छोड़कर जब वो बड़े हुए तो यहाँ वो काम करने के लिए अकाउंटेंट बने। उन्होंने लेखा जोखा पटवारी का जो होता है वो काम किया, पर क्योंकि उनका ध्यान भक्ति में लगा रहता था तो किसी ने शिकायत कर दी कि भाई ये तो किसी को कम तोलता है, किसी को ज्यादा तोलता है, ये तो लुटा देगा। जो उसका दौलत राय का मोदी खाना है। तो किसी ने शिकायत की तो दौलत राय ने इनको बुला लिया। ये जो बड़ी उनकी स्टोरी है, लाइफ स्टोरी। तो उन्होंने जब उसकी ऑडिट करवाई तो ऑडिट से सारा कुछ ठीक निकला, सगों ज्यादा ही निकला कि जो दौलत राय जी थे उनकी और कुछ पैसे जाते थे। सो वहां से 13 का कंसेप्ट शुरू हो गया। जो अंग्रेज हैं वो 13 के कंसेप्ट को, 13 नंबर को नैश मानते हैं। वो कहते हैं 13 नंबर ठीक नहीं है। पर हमारा सिखों में जब से गुरु नानक साहब ने कहा मैं 13 वो काउंट कर रहे थे 1 2 3 4। जब 13 नंबर आ गया, जब वो कणक तोलते थे, आटा तोलते थे, लोगों को देते थे, जब 13 नंबर आ जाता था, 12 के बाद 11 12 13, तो उनका ध्यान लग जाता था मैं 13 परमेश्वर का 13। तो वहां से जो 13 नंबर हम शुभ शगन मानते हैं। हमारी रवायतों में, हमारी जो रिवाजों में भी हम 13 नंबर को नैश नहीं मानते, हम वो गुरु साहब का दिया हुआ मानते हैं कि ये बहुत ही जो शगनों वाला नंबर है 13। सो एक तो बात मैंने ये बताई कि ये सुल्तानपुर लोधी में गुरु नानक साहब ने अपना फर्स्ट जो जॉब था वो शुरू किया। तो फर्स्ट जॉब में भी जब उनकी ऑडिट हुई तो वो ठीक निकले, तो उनका मन बेचैन हो गया कि मैं इस काम के लिए बना ही नहीं। सो यही एक जिक्र आता है काली वेईन नदी का, कि वहां सुल्तानपुर में एक काली वेईन नदी है जिसमें गुरु साहब एक बार स्नान करने गए तो वहां से 3 दिन लौटे नहीं। तो उनकी बहन यहाँ रहती थी, बेबे नान की यही उसकी मैरिड थी। उसके पति बड़े अच्छे गवर्नमेंट जॉब पे लगे हुए थे, जयराम जी। उन्होंने बहुत इनको खोजा, पर तीसरे दिन के बाद ये नदी से बाहर आ गए। तो नदी के बाहर आने के बाद जो उन्होंने शब्द बोला वो था ना को हिंदू ना को मुसलमान, कि कोई भी इस धरती में कौमों या जातियों में बटा हुआ है नहीं, सब इंसान हैं। या सभी को मतलब इस बात से नहीं समझना चाहिए कि ये हिंदू है या मुसलमान है, सभी को इंसान के रूप में समझना चाहिए। तो ये जो उनके इनलाइटेंड वर्ड्स थे वो बाहर आए। तो हम ये मानते हैं कि ये जो सुल्तानपुर लोधी का शहर है वो पहला शहर है जहां गुरु नानक साहब गए, जहां उनको इनलाइटनमेंट मिली, उनको ज्ञान मिला। सो और यही एक शहर है जहां से उन्होंने अपनी यात्राओं को शुरू किया, जिनको हम सिख धर्म में उदासीय मानते हैं। उदासीय मीन जिज्ञासा, लोगों को समझाने की, उनको जानने की, उनको बताने की। सो गुरु साहब जी को जो इनलाइटनमेंट हुई, जो ज्ञान हुआ, ज्ञान क्या हुआ कि सभी बराबर है, एक कौमकार, सभी उस एक परमात्मा के बच्चे हैं। जब सब एक परमात्मा के बच्चे हैं। हेलो, जय हिंद केम छो
सब बराबर चल रहा है ना? अच्छा ये बताओ, तुम्हारा ये अपना कबीरवाड़ और आलिया बेट Madam, you continue. Somebody else is speaking. You please continue, ma'am. Dr. APS, please mute your phone. Dr. APS. Yeah, madam, please. हाँ जी, मैं शुरू करूं? Yes, ma'am. Continue, ma'am. हाँ जी, हाँ जी। तो ये एक जब गुरु साहब को यहाँ इनलाइटेंड हुए, कबीरवाड़ के ये बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है जी। हेलो। Yes, ma'am. Continue. Somebody is talking on over phone. कि ये जो सुल्तानपुर लोधी जो डॉक्टर गुरमीत सिंह उन्होंने बड़े डिटेल में समझाया है, ये पूरा हमारे लिए एक धार्मिक और ऐतिहासिक शहर है, एक कल्चरल शहर है, जहां गुरु जी के चरणों का स्पर्श इस शहर को हुआ है। इस शहर में आकर ही उनको वो इनलाइटेंड हुए, उनको जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो प्राप्त हुआ, और यही स्थान था जहां से जाकर उन्होंने अपनी यात्राएं शुरू की, उदासियां शुरू की, और वहां जाके अपना जो प्रचार और प्रसार था अपनी शिक्षाओं का कि परमात्मा एक है, और उस परमात्मा को उन्होंने जैसे सिंबलाइज किया एक ओंकार, जो गुरु ग्रंथ साहब का पहला ही शब्द है वो एक ओंकार है, जो एका लगाया गया है, वो पूरा डिटरमिन करता है कि हम एक ही परमात्मा के बच्चे हैं, और उस हमारे अंदर जो ब्रदरहुड की भावना होनी चाहिए, और कोई कास्ट, कलर, क्रीड, सेक्स, रेस, कोई डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं चाहिए। तो उन्होंने जो एक मानवीय धर्म चलाया, मानवीय धर्म का विजन दिया, और वो धर्म तो सबके लिए सच्चा धर्म था, कोई भी वहां आ सकता था। और जैसे धर्म से वंचित थी हमारी औरतें, हमारे दलित लोग जो जिनको आज्ञा नहीं थी कि वो रिलीजियस प्लेस पे आ सके, और ना ही दलित को ये परमिशन थी, तो गुरु साहब ने जात पात, स्त्री पुरुष, जन्म, जात, रूप, रंग, वर्ण भेद सभी को नकार कर ये जो धर्म था वो सभी के लिए बनाया। धर्म का सरलीकरण कर दिया उन्होंने, सिंप्लीफाई कर दिया कि धर्म को चलाने के लिए ना तो कोई आडंबरों की लोड़ है, ना कोई आरती की लोड़ है, ना कोई कर्म कांड करने की लोड़ है, ना कोई दिखावा करने की लोड़ है। सिर्फ जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, परमात्मा को सच्चे दिल से प्यार करने की जरूरत है। सो जो उनका जो परमात्मा को सच्चे दिल से प्यार करता है तो परमात्मा उसका ही हो जाता है, और परमात्मा दूर नहीं है। फरीदा खालक खलक में खलक वसे रमाए, परमात्मा अपनी लोगों के बीच में रहता है, और उन लोगों के बीच में ही वो रमता है। सो गुरु साहब ने जो उस वक्त आप बात कर रहे थे कि भी आप पंजाब के वो भौगोलिक एरिया के बारे में बताए, तो मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ कि जो पंजाब था ये हमारा एक सीमावर्ती प्रांत था, है ना, सरहद के साथ लगा हुआ। तो जितने भी इन्वेडर्स आते थे सभी इसमें से लांग कर आते थे। जब भी इन्वेडर आते थे अपना कुछ ना कुछ छोड़ देते थे, प्रभाव डाल जाते थे, और यहाँ का लूट कर चले जाते थे। वो अस्थायी रूप से आते थे और चले जाते थे। पर बहुत देर बाद इन्वेडर ऐसे आए इस्लाम के रूप में जो अपने वापस नहीं गए, अरब और ईरान वापस नहीं गए, वो यहीं पे रह गए, और उन्होंने अपना जो शासन था यहीं पे चला लिया, और वो सदियों के लिए बस यहाँ बस गए। जब वो बस गए तो वो तो हमारे राजा थे और हम उनकी प्रजा थे, तो कल्चरल जो टकराव था वो पैदा हो गया। दोनों जो रिलीजन थे, दोनों जो कल्चर थे, सामी और इंडिया, भारत का, तो उसमें विरोध पैदा हुआ। जब गुरुओं, सूफियों, संतों ने ये देखा कि ये भारत की जनता तो नफरत में दोफाड़ हो रही है, तो उन्होंने सोचा कि चलो ये जो विरोध है ये तो राजाओं के साथ है, पर जो लोग यहाँ आके बस गए हैं तो इनमें तो एक हार्मनी स्थापित करनी चाहिए ना। सो जो ये विरोध था इसको सिंथेसिस में बदलने के लिए, एक दूसरे से अच्छी परंपराएं लेने के लिए, एक दूसरे के साथ एक प्यार का व्यवहार करने के लिए उन्होंने बहुत से हमें प्रिंसिपल दिए, बहुत से अपने आदर्श दिए, जिन
के कारण जो मुसलमान लोग थे वो भी गुर्जरों को बहुत मानते थे, क्योंकि कहते थे ना, नानक शाह फकीर, हिंदुओं का गुरु मुसलमानों का पीर। सो गुरुओं ने, सूफियों ने, पंजाब के भक्तों ने, जैसे बाबा फरीद है, कबीर है, रविदास है, नामदेव है, उन्होंने ऐसे अपने भक्ति वाले, प्रेम वाले गीत गाए कि लोगों के मनों में बस गए, कि वो लोग सोचने लगे कि ये हमें प्यार करते हैं। सो पंजाब में जो नफरत थी, जब मुगलों ने आके यहाँ अपना स्थापित किया, तो वो कम हो गई। और जब उन्होंने ये देखा कि इस्लाम के सूफीज्म में भी, और जो भगत गाने गा रहे हैं, शब्द गा रहे हैं, गुरबानी शब्द गा रही है, उनमें बहुत सी सिमिलैरिटीज हैं, बहुत सी सिमिलैरिटीज हैं, चाहे वो डिफरेंट कल्चरल ट्रेडिशन से आ रहे हैं, पर उनके जो सरोकार हैं, जो कंसर्न्स हैं लोगों के लिए, लोगों की वेलफेयर के लिए, वो साझे हैं। सो इसीलिए मतलब सिख धर्म जो पैदा हुआ, तो सिख धर्म के गुरुओं ने केवल थ्योरेटिकली नहीं कुछ किया, उन्होंने जो बाणी रची, बाणी से परवाह किया कि हम सब एक बराबर हैं, हमें एक, इसीलिए जो अभी गुरमीत सिंह उन्होंने बताया कि जो अमृतसर साहब की साजना हुई, गुरु रामदास जी ने वो शहर बसाया था, तो अमृतसर और में जो दरबार साहब की जब नींव रखी गई, तो मियाँ मीर ने रखी, जो कि एक मुसलमान फकीर था। इसलिए ऐसे ही डॉक्टर गुरमीत सिंह ने बताया कि ये 4 दरवाजे बनाए गए, चारों वर्णों के लिए साझा धर्म बनाया गया। और जो बाणी भी रची गई, जो बाणी गुरुओं ने रची, वो एक धर्म को एड्रेस नहीं थी, वो कोई सिखों को एड्रेस नहीं थी, उसकी एक भी लाइन, एक भी अक्षर ऐसे नहीं लगता कि ये सिखों को या किसी विशेष संप्रदाय को या विशेष कम्युनिटी को एड्रेस किया गया है। नहीं, उन्होंने पूरी मानवता को किया। जगत जलंदा रख ले अपनी कृपा था, सारे जगत का उन्होंने भला मांगा, वेलफेयर मांगी। जब हम अरदास भी करते हैं, जिसका जिक्र डॉक्टर गुरमीत सिंह ने किया, तो जब हम कीर्तन के बाद अरदास करते हैं, उस अरदास में भी बड़ी निर्माणता होती है, एक विनती करी जाती है, और उसके लास्ट शब्द है सरबत का भला। हे परमात्मा, उन लोगों से मिलाना जिनके मिलने से तेरा नाम चित्तावे, तेरे नाम को हम दोबारा जो है याद करें, और हम सरबत का भला मानते हैं। सो जो हरमंदर साहब था, हरमंदर साहब में गुरु ग्रंथ साहब जो लिखा गया, जिसमें 36 बाणीकरों की बाणी है, जिसमें केवल 6 गुरु हैं, गुरु नानक साहब से लेकर पहले 5 गुरु, और फिर 9वें गुरु की बाणी है गुरु तेग बहादुर साहब की। इसके अलावा 15 भगत हैं, जैसे कबीर है, रविदास है, जो मैंने पहले भी बताए हैं, जो भारतवर्ष की दूर दूर के इलाकों से है, दूर दूर के इलाकों से, जिनकी भाषा भी अलग थी, जिनका व्यवसाय भी अलग था, जिनकी जात भी अलग थी, पर फिर भी सूत्र के साथ गुरुओं ने सबको बांधा कि नहीं, कि हम एक हैं और परमात्मा की औलाद है, और परमात्मा को प्यार से हम पा सकते हैं। सो ऐसे भक्तों जिन्होंने कर्म कांड का विरोध किया, आडंबरों का विरोध किया, और एक परमात्मा को माना, उनकी बानी जो है गुरु साहब ने गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज की, और इसकी इंस्टॉलेशन जी है एक पूरे फॉर्मल ढंग से की। हरमंदर साहब में जो वहाँ एक ऊंचा स्थान बनाया जाता है, वहाँ गुरु ग्रंथ साहब की जो है इंस्टॉल किया जाता है, उसके पूरे तौर तरीके हैं, क्योंकि उसको हम गुरु मानते हैं। गुरु उसको अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये दर्जा दे दिया है कि गुरु ग्रंथ साहब को हम लिविंग गुरु मानते हैं। सो उसकी पूरी जो है मर्यादा है, जिसको सभी माथा टेकते हैं, और वो सैलानियों का गढ़ है, दूर दूर से लोग आते हैं वहां पे। और उसकी इमारत कला कमाल की देखने वाली है, कि वो पानी में बना हुआ है, और कैसे उसके दरवाजे और उसके ऊपर मीनाकारी बनी हुई है, और उसमें जो गुरबाणी का संदेश है, उस इमारत से उस संदेश का संचार वैसे हो रहा है जैसे निर्मलता, निर्वैरता, निर्भौता,
भय काहू को देतन है ना भय मानतान, ना किसी से भय मानना है ना हमने किसी को भय जो है वो देना है। सो ऐसे अमृतसर और अमृतसर में दरबार साहब की, जिसको हम गोल्डन टेम्पल कहते हैं या हरबंदर साहब कहते हैं, उसकी साधना की गई, उसमें गुरु ग्रंथ साहब इंस्टॉल किया गया। उसकी ये सिखों का एक बहुत बड़ा धर्म स्थान है, बड़ा प्रीच करने का यहाँ प्रीच किया जाता है। इसी तरह डॉक्टर गुरमीत सिंह ने अनंतपुर साहब के बारे में बताया कि अनंतपुर साहब की धरती जिसको गुरु तेग बहादुर साहब ने खरीदा था, उसका पहला नाम था बेबे नानकी का चक, बेबे नानकी नहीं, नानकी चक। ये उन्होंने अपनी माँ के नाम से खरीदा था, ये धरती का जो टुकड़ा है। और ये बात उन्होंने समझानी थी कि गुरबाणी में औरत और मर्द केवल सिद्धांतक रूप में बराबर नहीं है, बल्कि व्यवहार में भी बराबर है। इसलिए उन्होंने औरतों को मान्यता दी और औरतों के नाम पर जमीन जायदाद खरीदने को भी महत्व दिया, और उन्होंने खुद खरीदा। और उनकी बात ये थी कि जो प्रीच करते थे पहले अपने के ऊपर डालते थे। सो उन्होंने ये जो अनंतपुर साहब है, ये वहाँ बहुत बड़ा किला बनाया। वहाँ उन्होंने जो हम कह सकते हैं कि जो अत्याचारी मुगल राजे थे तब के टाइम के, जहांगीर था या औरंगजेब था, उनसे ये बात मनवाने के लिए कि हमें अपने धर्म की आज़ादी चाहिए। हम किसी को ये नहीं कहते कि आप हमारे धर्म में आओ, हम तो ये कहते हैं कि सभी धर्मों का हम सत्कार करते हैं, सभी का आदर करते हैं, पर हर बंदे को धर्म की आज़ादी होनी चाहिए और किसी के ऊपर किसी का दूसरा धर्म अत्याचार से आरोपित नहीं होना चाहिए। सो इसीलिए जो गुरु तेग बहादुर थे, जिन्होंने ये अनंतपुर साहब की धरती खरीदी थी और उसके ऊपर ये इतना बड़ा गुरुद्वारा बना हुआ है, किला बना हुआ है, उसके लिए उन्होंने ये अपनी शहादत दी थी। वो कह रहे थे कि बेशक जो कश्मीरी पंडित थे जो उनके पास आए थे कि हमें अपने धर्म की आज़ादी हमसे खोई जा रही है, हमें जबरदस्ती मुसलमान बनाया जा रहा है, तो उन्होंने तब कहा था भाजना की पकड़िए, वो छोड़नी नहीं है। ये पंजाब की परंपरा है कि एक बार प्रॉमिस हो जाता है या जिसकी रक्षा करने का प्रॉमिस हो जाता है उसको छोड़ा नहीं जाता। तो गुरु तेग बहादुर साहब ने उस वक्त जब उनका बच्चा 9 साल का था, गोविंद सिंह, तो जब उनके पास कश्मीरी पंडित आए और उन्होंने उनकी रक्षा करने की कोशिश करी। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी चीज है कि हम ये कहते हैं कि गुरुओं ने जनेऊ नहीं माना, तिलक नहीं माना, कोई भी आडंबर नहीं माना, पर जो कश्मीरी पंडित आए वो जनेऊ भी पहनते थे, तिलक भी लगाते थे, पर उन्होंने कहा नहीं, मैं इस बात के खिलाफ नहीं हूँ कि भाई कि ये जो है मैं यहाँ जनेऊ और तिलक के करके मैं इनकी हेल्प नहीं करूँगा, मैं इसलिए हेल्प करूँगा इनकी, मैं इसलिए इनके लिए अपनी जान की बाजी दे दूंगा क्योंकि इसके पीछे एक सिद्धांत है कि जब दूसरे के ऊपर विपदा पड़ती है, दूसरे के ऊपर संकट आता है, तो जो गुरु का सिख है तो उसके साथ खड़ा होता है, चाहे उसकी जान चली जाए, पर जो सिद्धांत में सच्चाई है तो उसके लिए हमें अपनी कुर्बानी भी देनी पड़ेगी। सो ये बहुत बड़ा सिद्धांत था, शहादत का सिद्धांत, कि जिसमें कोई जबरदस्ती शहादत नहीं देनी, कोई जबरदस्ती, बल्कि अपनी मर्जी से देनी है और अपने सिद्धांत के लिए देनी है। सो अगर गुरु तेग बहादुर साहब ये कुर्बानी ना देते कश्मीरी पंडितों के लिए जो उनकी सहायता मांगने के लिए आए थे, तो ये डेमोक्रेसी के लिए थी, ये रिलीजियस प्लूरलिज्म के लिए उनकी कुर्बानी थी, ये ह्यूमन राइट्स के लिए उनकी कुर्बानी थी। सो ये ही विरासत हमारे गुरुओं ने दी हमें। और बहुत सारे जो बाद में शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु करतार सिंह सराबा, ये गदरी बाबे, ये कूके, ये बब्बर, ये कीर्तियों, इन सभी ने अपना लहू डोल कर, अपनी जानें देकर अंग्रेजों
अंग्रेजों के साथ लड़ाई की और उनका अपना साम्राज्य जो था वो वापस लिया। सो आज हमें अपने विरासत से सीखना है, उन मूल्यों को अपने मन में बैठाना है जिनके लिए हमारे गुरुओं ने कुर्बानी दी है। सो अंत में मैं यही कहूंगी कि जिन लोगों को विरासत का एहसास नहीं होता उन लोगों का कोई इतिहास नहीं होता। सो हमें अपना इतिहास बनाने के लिए संसार के नक्शे में अपने आप की अपनी ग्लोरी को बताने के लिए हमें अपनी विरासत को संभालना होगा। और हमारी विरासत के पक्ष में हम ये कहेंगे कि पंजाबी बहुत अमीर है, पंजाबी की जो विरासत है वो बहुत अमीर है। गुरुओं ने बहुत कुछ दिया है उन्होंने। वो प्रोफेसर पूरन सिंह कहता है कि जो पंजाब के जवान हैं ये मौत लेने के लिए 1 मिनट नहीं लगाते। ये बेपरवाह पंजाब के मौत नू करन मखौला, ये बेपरवाह पंजाब दे मौत नू करन मखौला, मरण थई नहीं डरदे पर तय ना मनन किसे दी। सबसे बड़ा जो अंडरलाइन करने वाला फिक्रा है कि ये तय नहीं मानते, किसी का रोब नहीं मानते, ये तय ना मनन किसी की खलो जान डांगा मोढ़े थे उलार के। सो ये बहुत बड़े आदर्श जो गुरु साहिबान ने हमें दिए हैं, जिनका जिक्र डॉक्टर गुरमीत सिंह ने अपने पेपर में किया है, वो आज भी बड़े सुनहरी हैं। आप आज भी देखते हो जब भी कहीं संकट पड़ता है, चाहे कोरोना के टाइम में तो देखो ही कि कितनी पंजाबियों ने अपनी विरासत से सीखा है और उन्होंने ये अपनी जान की कुर्बानियां भी दी हैं। पर लोगों को भोजन लंगर कराना, उनको वस्त्र बांटने, उनको दवाइयां देना, उनके संस्कार करने, है ना, जहां अपने लोग भी नहीं जाते थे वहां ये लोग गए हैं। सो सिखों ने अपनी जो डिस्टिंग्विश्ड पर्सनैलिटी है, सूरबीर होने की, दाता होने की, भगत होने की, लड़ने की और दूसरे की रक्षा करने की, ये बहुत उन्होंने निभाई है और आगे भी निभाते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच। Doctor, please conclude session. नंबराजन सर हैं क्या? Yes sir. So thank you Dr. Gurmeet Singh, Professor Gurmeet Singh ji, Professor जसपाल कौर काग मैडम, आप लोगों ने पंजाब और वहाँ के हेरिटेज साइट, वहाँ के कल्चर, संस्कृति पर बहुत ही अच्छी जानकारी ऑडियंस को दी है। अब मैं अगले टॉप के लिए इमिनेंट स्पीकर डॉक्टर AP सिंह जी, IFS, एडिशनल प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर, मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन, गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, गांधीनगर, गुजरात। चेयरपर्सन डॉक्टर V. विजय कुमार, डायरेक्टर, गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिजर्ट इकोलॉजी, भुज, कच्छ, गुजरात। को चेयरपर्सन डॉक्टर उत्कर्षा मनीष चवन, असिस्टेंट प्रोफेसर इन जूलॉजी, अवनाज हजारीमल, सोमानी कॉलेज, मुंबई। Welcome all of you sir, and now I am requesting to Dr. V. Vijay Kumar sir, please chair the session and introduce our eminent speaker Dr. AP Singh sir. Please unmute yourself. Vijay Kumar, unmute your mic. Dr. Vijay Kumar sir. Very good afternoon, sir. I am inviting the last speaker of today and maybe the last speaker of this session, Dr. AP Singh. He is a very senior forest officer from Gujarat, and he started his IFS career since 1990, and he has worked with various departments and wildlife, and even the central area like National Medicinal Plant Board. And he has managed two important wildlife areas. One is the Asiatic wild lion and the Asiatic wild ass. Today, I am inviting him to deliver a lecture, enlightening lecture on management of Asiatic wild ass in Gujarat. Dr. AP Singh, sir, please.
Yes, thank you, Dr. Vijay Kumar, Dr. Misra ji, and all the eminent panelists here. It's possible to share my presentation, Yes, sir. Yes, sir. please. Yes, sir. Yes. So once again, thank you to all, and very good afternoon. And this is the last session of your long series of web series of this seminar. And perhaps last time I had delivered lecture on the Asiatic line. Now this time I thought the lesser known species and people are not knowing much about again this endemic and endangered species of Gujarat. This is called wild ass or Indian wild ass, Equus hemionus khur. Conservation status and the little run of Kutch of Gujarat is the unique ecosystem for the survival of this species. Next, please. Next, please. यहाँ से होगा नहीं अच्छा so this is the map of the Gujarat and the area of little run of Kutch and the greater run of Kutch. This is the saline desert of the Kutch and Saurashtra region of Gujarat. So it is depicted here. This is the habitat of the Indian wild ass. Next, please. Yes. So this is Equus hemionus khur, Indian wild ass. This is a subspecies of Equus hemionus found in Gujarat. Indian, it is also called Indian onager, ghudkar, khur. And this is found in Little Run of Kutch. This is very unique species of wild ass. This is one of the subspecies of this wild ass, and last century it was fairly wide distribution in the dry regions of northwest of India and the western Pakistan up to Baluchistan and Sindh. In Gujarat, there existed as far as north as Jaisalmer and Bikaner in Rajasthan and Sindh and Baluchistan in Pakistan. So this is the species actually in the adverse climatic condition and desert condition. And it was earlier found in Thar deserts and Pakistan deserts also, Sindh, Baluchistan, but now it is restricted to the our this little run of Kutch, and now distributing towards the greater run of Kutch. Next. Today, the Indian wild ass is more or less restricted to the little run of Kutch and strayed out more towards the great run of Kutch and the south on the Surendnagar towards Nal Sarovar Bird Sanctuary. It is threatened. It is the endemic to Little Run of Kutch and threatened species as per the IUCN classification. Next. Now this is a global perspective. Other subspecies of wild ass. The one subspecies found in Gujarat, but the other subspecies are also there in other countries. So we have to know the other subspecies also. So basically the two species of wild ass are reported. One is Equus hemionus and another is the Equus kyang. So Equus hemionus, the species, there are 5 subspecies are reported.
And out of 5 subspecies, 1 subspecies found in Gujarat. Now it is restricted in Gujarat. It is not found in Rajasthan and even perhaps not in Pakistan or even Iran. So another species, this is called Equus hemionus hemionus. This is the Mongolian wild ass and it is called Khulan. Another one, Equus hemionus kulan. This is a Turkmenian wild ass, Turkmenian kulan. Third one is Equus hemionus onager. This is Persian wild ass, Persian wild ass, Persian zebra or Persian onager. Fourth one is Equus hemionus hemipus. This is Syrian wild ass or Mesopotamian or Syrian onager. Fifth one I have discussed the Hemionus, Equus hemionus khur. This is Indian wild ass, or it is also called Indian onager or ghudkar or khur. The second species Equus kyang. This is called Tibetan wild ass or kyang ghurkhar. There are 3 subspecies of this Equus kyang also. They are called Eastern Kyang, Equus Kyang Kyang. This is Western Kyang found in Tibet, Ladakh, southwestern Xinjiang. Second one is Equus Kyang Holderi. This is called Eastern Kyang found in Qinghai, southeastern Xinjiang. And Equus Kyang Poliodon. This is Southern Kyang found in southern Tibet up to the Nepal border. Next. Now we have to discuss one by one. This is Equus hemionus Mongolian wild ass, Khulan. This is locally called Khulan. These all wild ass subspecies or species, they are herbivorous animal, and this species found in southern Mongolia and northern China. Earlier found in eastern Kazakhstan, southern Siberia, now disappeared due to the hunting. This from Siberia, this is no more found, and this is disappeared from the southern Siberia. It is only even earlier found in eastern Kazakhstan. It is not there now. The conservation status is near threatened as per IUCN 2015 evaluation. Current population is around 42,000 in Mongolia and around 5,000 in China. So the Mongolian wild ass especially restricted to the Mongolia and scattered population found in different part of the China bordering to the Mongolia. More than 50% distribution range lost during last 70 years. The range of these animals, this animal was quite long, but that distribution range has lost up to 50% only. So now they are surviving in 50% area, and they are also surviving in desert area, very adverse climatic conditions. Next. The next one is Equus hemionus kulan. This is Turkmenian wild ass or Turkmenian kulan. This is again herbivorous, one of the largest subspecies of onager, Asiatic wild ass, native to Central Asia. The species declared endangered in 2016. The population is under decline in the country. The species has been reintroduced in Kazakhstan, Uzbekistan, and Israel, their area of habitation. And present estimation of 2005,
it was estimated the animals remains in the range of 1295 to 1345. So 1200 to 1300 animals are remaining of this subspecies. Next. The third subspecies is Equus hemionus onager. This is Persian wild ass, Persian zebra or Persian onager. This subspecies is native to Iran. It is listed as endangered with no more than 600 individuals left in the wild and only 30 individuals living within North American institution like captivity, and wild only 600 individuals are remaining and 30 are in captivity. Until the 19th century, their population reduced from several thousand to few thousand. Since 2003, Persian onager introduced in Saudi Arabia. So the government of the different countries, they are concerned their survival and they are introducing for their existence. Next. Again. The next one is Equus hemionus hemipus. This is Syrian wild ass, Mesopotamian or Syrian onager. Again, all wild ass species are herbivorous. This is also herbivores, and this is an extinct subspecies. Now, this is this subspecies of smallest. All the wild ass, this is smallest onager, native to the Arabian Peninsula and surrounding areas. It's ranged across present-day Iraq, Palestine, Israel, Iran, Jordan, Saudi Arabia, Syria, and Turkey. Lived in deserts, semi-deserts, arid grasslands, and mountain steppes. The last known wild specimen was fatally shot in 1927 at a Ghams near the Azraq Oasis in Jordan. So this subspecies we have already lost. Now this is extinct from wild. If some Jews are having, then there is no idea. It is not found. It is available in captivity or not, but it is extinct from wild. So this subspecies we have lost. Next. Now we will discuss about the second species. First was the Equus hemionus with 5 subspecies. Now second one is Equus kyang and 3 subspecies. So this Equus kyang is also called Tibetan wild ass, kyang, ghorkar. It is one of the subspecies or subspecies are found in India in Ladakh region. So this is the largest species native to the Tibetan plateau, where it inhabits montane and alpine grasslands. Again, it is also desert. This is called white desert or alpine desert, very adverse climatic conditions. Its current range is restricted to the plains of the Tibetan Plateau, Ladakh, and northern Nepal. The kyang is closely related to the onager Equus hemionus, and in such classification, it is considered as a subspecies Equus hemionus kyang. So some of the author found not a species, but they found as a subspecies of Equus hemionus and subspecies kyang. But molecular studies indicate that it is a distinct species. So 2 species are found on the earth of wild ass, the Equus kyang and Equus hemionus. Next. Next, please. So this species, again, it is
around 2,500 to 3,000 individuals are found across the border in the Ladakh and Sikkim region of India, and a smaller population along the northern frontier of Nepal. 3 subspecies of kyangs are currently recognized, namely, as already discussed, Equus kyang kyang. This is called Western kyang and found in Tibet, Ladakh, southwestern Xinjiang. Second one is Equus kyang holderi, Eastern kyang, Qinghai, southeastern Jiang. So the Ladakh species is our Western kyang. Kyang Equus kyang kyang is the Ladakh species, subspecies, and the Equus kyang kyang polyodon is southern kyang found in southern Tibet Nepalese border. So the Eastern kyang is the largest subspecies, while southern kyang is the smallest one. The kyangs inhabit alpine meadows in steppe country between 2,700 to 5,300 meters elevation of Himalayas. Next. Now we have to discuss about the Little Run of Kutch, the wildlife sanctuary of Gujarat. This wildlife sanctuary is notified in 1973 under earlier it was Gujarat Wild Animals and Wild Birds Protection Act 1963. So here was the act. The Gujarat state came into existence in 1960, and they have enacted an act that is called Gujarat Wild Animals and Wild Birds Protection Act 1963. Under this act, the Gir Wildlife Sanctuary and this wildlife sanctuary was notified due to the peculiarity of this ecosystem and the very important flagship species of Asiatic lion and wild ass. So this sanctuary is one of the largest sanctuary in India. This sanctuary is spread over in 5 districts of Gujarat. They are Kutch, Banaskantha, Patan, Morbi, and Surennagar. As you know, the Kutch is the biggest district of India with the 45,000 square kilometer the area, the bigger than the Kerala and Haryana states itself. So it's a huge area, huge desert areas. The area of the sanctuary is 4,953.72 square kilometer, out of which 3,569.63 square kilometer, around 72% of the sanctuary is the area of Little Run of Kutch. Little Run means the saline desert. This whole area is submerged under the sea for 2 to 3 months, and this is completely saline land. And the area with salinity, the mud flats are there, the wetlands, beds are there, and the elevated area, and most of the area is engulfed by the Prosopis juliflora and pilu and other saline grasses. Halophytic, mostly halophytic vegetations are found. The sanctuary had dynamic ecosystem and unique landscape due to its geoclimatic conditions. And this condition, the Indian wildlife is surviving. This is very hostile conditions, and though out of the summer months it is saline desert and a barren flatland, but during and after monsoon it is inundated by rainwater and it's transformed into a vast seasonal wetlands. So number of resident and migratory birds are also visiting in these due to the lot of food material for the animals or birds is available. Next.
The run has mud flats on sanctuary which remain underwater for part of the year and exist as dry exposed land for rest of the year. Further, it receives both fresh water and tidal water. That is why it is a unique ecosystem suitable to the lot many flora and fauna in that ecosystem. Part of the year and existed dry exposed land for rest of the year. Further, as it receives the fresh water, tidal water during the year, so the organisms existing in the Little Run of Kutch area are well adapted in both the waters. This mosaic thus supports a wide variety of aquatic invertebrate fauna in this region. Though the sanctuary is internationally famous for the endangered Indian wild ass, but it is also an abode of a variety of other animals, birds, reptiles, amphibians, fish, and micro and macro invertebrates and plants. Next. The soils of the run are holomorphic and the halophytic vegetation chiefly composed of Pseuda, Salsola, Salicornia, Halogylon, Atriplex, Crescia, Aleurops, Sporobolus, and Halopurum occurs here. Though indigenous tree like Prosopis cineraria exist here, the exotic thorny species Prosopis juliflora has successfully spread and survived on several beds and the fringes of the run. So here during the summer, the Indian wild ass is surviving on the pods and foliage of this alien invasive species, Prosopis juliflora, across the habitats. So most of the time, this species is a negative species. This is very detrimental to the most part of the ecosystem. But the ecosystem of wild ass, this is the boon for this species. In the scarcity on pinch period, this animal is surviving on the pods and foliage of this species, Prosopis juliflora. Next. So go to back. So this is the species. It was actually surviving very, very hostile conditions, and the temperature of this area ranges from 1 degree centigrade to 50 degrees centigrade. And also you can see this animal is now, earlier in 1946, it was around 3,000. Salim Ali counted 1946 around 3,500 wild ass, and presently the population of the wild ass is on increase. And presently for 2014, the estimation was 4,451, and the current population estimation 2020 was around 6,082. In between, sometimes the spread of the different diseases, some loss happened. Now the population increasing, and the habitat is also, some Narmada canal is passing out of that. Now the problem of its crossing this canal, and sometimes it is also raiding the crops. So the farmers are also some getting problem. But by and large, the Gujarat government is committed for its conservation, and huge and very long stretch of the area of 5 districts, and this is a run saline desert, so there is no problem. And they are the very hardy animal, and around you can see 210 centimeter the length, and length is 120 length, and height is 120 centimeter. And this rain
average speed is 30 km per hour, but in some other conditions, this animal can run up to 70 km per hour for short period. So this is very, very hardy animal, and this is a flagship species of this hostile ecosystem of Little Run of Kutch. Now it is also spreading towards the Great Run of Kutch also. So slowly and slowly, the population of the species is increasing. So presently, this was the only from my side that little I prepared for this lecture. I could not complete the biology of the animal, but the habitat and present status and how government is conserving this flagship species of Little Run of Kutch. Thank you very much. It's open for questions also. Sir, your mic needs to be unmuted. Chairman, sir. Sir, are you able to hear me? This is Dr. Manoj Borkar. Good evening from Goa, Singh Saab. Yeah. Very good evening. How are you? Thank you. I'm good, sir. Thank you so much. I did attend your lecture in the last, series as well. It's always a pleasure to listen to you. Sir, I had the good fortune of visiting Little Run of Kutch in 2014. I think I entered through Patan, if I remember correctly. तो तब तो सर काफी बढ़िया था, माने अच्छी फोटोग्राफी भी हो गई हमारी, काफी सारे बर्ड्स भी दिखाई दिए थे सर. As an administrator, I would just like you to tell me what are the major conservation challenges before your department, because it's a very restricted population, as you rightly said. So any efforts in particular towards increasing the population, or maybe looking at some sort of translocation in a more compatible habitat, anything on those lines? Yeah, definitely. Yes, sir. Very good question, and that as such, because the huge area is available for this species, there is no problem at all. But you can see the population of the local habitants, around 47 villages are around the sanctuary areas are there. And most of the areas is also the salt making areas. The salt making communities are residing there, and sometime when the after monsoon season, lot of area is inundated, and lot of prawns and fish and these resources are developed, for which also thousand and thousand of birds are coming to feeding on it. That time some intervention or interaction is taking place, otherwise there is no problem at all. So the salt worker population pressure, it is increasing day by day. So we are working on it. We have delineated also the sanctuary area, and as such, the only biotic pressure is the one of the pressure, and the habitats, lot of agriculture crops, as the Narmada canal is passing through, so agriculture fields are also started. So sometimes the wild ass are also going on damaging their crops. So this sort of the man-animal conflicts, you can say, is happened. But it is a very minimum or manageable level. It is not a problem so far, because we are here, the managers are here to solving all these problems. Thank you, Singh Saab. Pleasure listening to you. Thank you. Dr. Singh, can you hear me? Yeah. Yeah, you have mentioned different species of wild ass, and in somewhere you mentioned this population reduction is due to hunting. It's meant for hunting, means it is for game purpose, or it is for meat? It is some of the the area of southeastern like Mongolia and some of the areas, it is mentioned there, they have hunted for meat also.
And here the history says Akbar is also hunted our Indian wild ass in his area of visiting of this area. But I don't know for what he has hunted, but Akbar is hunted the Indian wild ass in Gujarat also. Any other questions from any? Excuse me, sir. Uthari from BHOPAL Botanical Survey. Sir. I was a project of threatened plants of Gujarat Rajasthan by Dr. S.K. our ex-director. He is no more with Dr. P. Hazra. He was also director BSI. So I had to visit twice this little so that this is also papers were also published by me. So I to hear you to So all please share your experience as a floristic diversity of Little Run of Kutch. Yes. So this was I had opportunity to visit this old hot old days of Ladakh also with Dr. Hazra, and I running wide, and I belong to Kutch, sir. Kutch is my native place. Number of times I had opportunity to see. I'm happy to listen talk, sir. You are most welcome, and you can see the spread of this alien invasive species Prosopis juliflora in this habitat, and this species is the boon of our Indian wild ass. Thank you, sir. Thank you. Dr. Vijay Kumar? Yes, sir. Yes. You have also worked a lot in this area. You can also give your critical comments. A lot of experts are here, so they can also benefit whatever left from my lecture. You can also substantiate it. Sir, you have covered almost all the aspects, including the management part. Actually, this Little Run of Kutch, it is very unique in the world. Yeah. Greater Run of Kutch and Little Run of Kutch, this is called White Desert. Yes. It is something like Dead Sea in Israel. So anyone wants to see the White Desert, they have to come all the way to Kutch. And we have two important wildlife species. There are many, but two magnificent. That is Asiatic lion. Anybody wants to see, they have to come all the way to Gujarat. And wild ass, the subspecies, it is also in Gujarat. And this species, the population was very low earlier, but with the constant efforts of the forest department, today the population has gone very high. And the sanctuary area is also very large. Still, because of the enhancing population, the population move out of the sanctuary limits. It gets into some agricultural fields. There are some minor human-wildlife conflicts also possible. Second thing is, now the agarias, if you look at the Gujarat is the major producer of salt, in which nearly 80% of the salt is produced from LRK, Little Run of Kutch. And this is the habitat for wildlife. So there is always a conflict between the livelihood of the people as well as the wild animals. So that is also manageable. The forest department is very nicely managing. And Dr. A.P. Singh sir, he has lots of experience in this area. And he has very nicely brought out. And second, another issue is the prosopis. This prosopis is one of the top 100 invasive alien species in the world. And here the prosopis invasion is very high. And now this Little Run of Kutch, but this also provides very good habitat for hyenas, jackals, small wildlife, because the scrub can give hide. So one way it is good for the animals, other way it is bad for the agricultural. If it inverts into grassland and other things, it is bad for the, it is competition and
degrading the grassland kind of thing. So there are it is like a coins have two sides. There is a positive as well as the negative aspects. So we have to look at the positives and how to minimize the negative aspects. That we have to look at. Any other questions from anyone or any suggestions? And the little run of Kutch is not only for this wild ass. There is one endemic prawn species, Metamorphosis kutchensis. That is found only in the little run of Kutch area. And many of the people's livelihood depends on this particular endemic prawns. And it is again a seasonal business for the local villagers there. Yes, I will add one thing. Run of Kutch is famous for the branch palm. Branch palm. Palm is normally single. So run of Kutch we have happening dichotoma. It is branch. So it is found only in Gujarat. Run of Kutch. It is unique to the run of Kutch. That is what I did. One palm species. Hypheny dichotoma. It is found in run of Kutch. I think my voice is clear. Yes, your voice is clear, but it is a branched palm which is very rare, only found in run of Kutch, and it's rather endemic to that place, and it is very unique because normally the coconut palm is single stem is there. So here we have the branch palm, so it is called as Hypheny dichotoma. So this is very unique to that area. And one of the species, the caracal, is also found in this little run and great run of Kutch only. In Gujarat, it is only remained in that part only. So that is very, very important species. It is also verge of extinction only. Caracal. Hello. it is also highly endangered. Yeah, I have one question. Yes, madam. Donkey's milk, as milk is very highly priced product. I have seen many people using it as medicine for children suffering from rickets. Is it popular there in Gujarat also, in Kutch also? This product as used as a medicine, the milk of the animal. Milk of the animal. Dr. Vijay Kumar, you comment. I have no idea about it. Actually, here it is not very familiar. Here now, camel milk is very familiar. I agree. Actually, we have a special camel. It is called a Karai camel. This Karai camel have the capacity to swim in the sea. They can swim to little longer distances and feed on the mangroves. This Karai camel gives very good milk, and the milk has lots of medicinal properties, and even it is used for diabetic and many other diseases. Yeah, camel. So, yeah, camel milk. Okay, in Karnataka, this is a very popular type of medicine. Donkey's milk is being given for suffering children. Yes, camel milk is also very popular in Rajasthan also. And now they are making lots of milk products out of this camel milk because it has very high protein content. Camels. Rekha Rao pointed out in Tamil Nadu, 1 liter of this milk is around 3,000 rupees actually. For the children's, young children, they feed because to remove the mucilage and other kapha at the time of birth for the children so that their voice will be improved by feeding a few ml. So the donkeys used to keep it near the children's hospital. So it's the first milk used to give, and the rate will be around 3,000 rupees per liter. Yeah. In metropolitan cities. Supply to the whole of India where this metropolitan cities will be like that. This is the traditional So, Pandurangan sir, the lesson is that a donkey is more precious than a cow in India. Because of medicinal value. Yeah. Donkeys. And in fact, we should yes, what you told is without any much care, they are able to serve for the society. Correct.
Donkey always, precious in the sense, even Vasudeva had to touch its legs. No, that Very is true, sir. Very true. how are you, Singh? Yeah. Fine. See, I find some connection between the feeding of mangroves by the camels and also in Godavari and Krishna areas. The feral cattle, they feed on mangrove leaves, particularly Avicennia species, and their milk is highly concentrated. And in fact, one enterprising DFO, he actually, under the UBC program, he spoke to the community over there, and he had a linkage with the community and the Horlicks company. And the community were selling milk to Horlicks company because they could produce better biscuits. So these kind of innovative things should happen, particularly when they feed on what is the reason I don't know. It improves its milk quality, and also, as we see, that it also results in some medicinal properties. And in fact, in Godavari mangroves itself, the goats that feed on the mangroves, it develops some kind of a stone inside the stomach. And there are only one community which can identify the particular goat which has the stomach, which has a stone in the stomach. And then, it becomes very expensive, as Dr. Pandurangan said. When a liter of, the donkey's milk costs 2,000, that goat, they used to be sold at 20,000, 25,000, and something like that, more than that. And of course, the donkey's milk is only in some kind of small thing we get, not liters of milk we can't afford for the children. Thank you, Dr. Singhji, for your Ravi sir, just to supplement what you say, in Goa, some species of mangroves are known to have that galactagogue properties. They are actually used as fodder by pastoral communities in Goa. They actually collect the mangrove leaves and for the purpose of being used as a fodder for milch cattle. And they are reporting better yield, as ma'am says and as you say as well. Ma'am, and it's very interesting. Yeah, for stall feeding, in fact. In Gujarat also, especially along the Kutch coast, the fishermen community, they have dual kind of life. They do fishing as well as they maintain cattle. So Correct. they collect mangrove fodder and mangrove seeds. And they feed buffaloes. And the buffaloes that feeds on mangrove, they give a very good milk with more fat content. The milk is based on the fat content. So they get a very good income out of that. Sir, we are talking about cow and donkey. Actually, one cow, if it lives 20 years, the dung it produces is worth of more than 1.31 crore. The urine rate is separate. Wide range of topics to flora. How much quantum of dung and what are the products that can be generated out of the dung? It worth 1.31 crore. चलने दो, वैलिडिटी होगा. तुम जाओ, अभी इनका कंक्लूड किया नहीं है. Dr. Vijay Kumar, now conclude it and time for valedictory. Yes. Dr. Vijay Kumar sir, please conclude the session. Yeah. Now valedictory session का time आ गया. Dr. A.P. Singh, the additional piece, and currently he is working as the monitoring and evaluation wing, head of the monitoring and evaluation wing. He has given an enlightening talk on the wild ass of Gujarat and what is the issues and how the management is taking place. And as well as he has also taken us to all these other species available in different parts of the world. And what are the species extinct and all details. This is a very enlightening talk. Thank you, Dr. Sir. Thank you very much. Thank you. Hello. PRC नहीं भैया, मैं लेक्चर वाइल्ड आस के ऊपर अभी कंक्लूड हुआ है मेरा. हाँ, अभी आ जाओ, आपको चाय पिलाते हैं.
अरे कोठारी साहब नहीं सुनना है, कोठारी साहब। अरे मैं डॉक्टर दारू बोल रहा हूँ। I am happy to. वेलकम कोठारी साहब, वेलकम वेलकम कोठारी साहब। Good evening, sir. Good evening. Thank you. Thank you. सर, तो आज इस सेशन आदरणीय एपी सिंह जी के ने बहुत ही अच्छा यहाँ पर अपना मिनट व्याख्यान दिया और उसके लिए हम महाविद्यालय की ओर से उनका आभार प्रकट करते हैं। साथ ही डॉक्टर विजय कुमार सर, डायरेक्टर गाइड इंस्टीट्यूट भुज कच्छ सर का भी मैं अपने महाविद्यालय की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। महाविद्यालय हायर एजुकेशन मध्य प्रदेश शासन की ओर से जिसके तत्वाधान में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। अब मैं इंट्रोडक्टरी सेशन तो समापन कार्यक्रम है। आज से जो 10 दिवस में हम लोगों ने 72 टॉक्स कंप्लीट की हैं और उसका प्रतिवेदन यहाँ पर हम प्रस्तुत करेंगे और इसके बाद हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी प्रोग्राम शेड्यूल आप लोगों को भेज दिया था। उसमें ज़्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि यहाँ पर वैलिडिटी सेशन में विषय के प्रख्यात जो वैज्ञानिक गण हैं, जो विशेषज्ञ हैं, वो यहाँ पे हैं। हम चाहेंगे इस समय का उपयोग भी आपसे जो ऑडियंस है उनके नॉलेज के लिए इस समय को बचाया जाए, ज़्यादा उचित होगा। सबसे पहले हम अपने महाविद्यालय के प्राचार्य और वरिष्ठ प्राध्यापकों से निवेदन करते हैं कि माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करें। सरस्वती जी प्रतिमा पर और विवेकानंद जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण और धूप प्रज्वलन किया गया महाविद्यालय के प्राचार्य के द्वारा। महाविद्यालय के 10 दिवसीय वेबिनार के इस समापन समारोह वैलिडिटी सेशन में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं जो कार्यक्रम में पधारे हुए सभी वरिष्ठ वैज्ञानिक गण, डॉक्टर ए.जी. पांडुरंगन साहब, डॉक्टर सुपाली साहब, डॉक्टर ए.पी. सिंह साहब, डॉक्टर मनोज बोरकर सर, डॉक्टर टी.एस. रविशंकर जी, डॉक्टर बाबजी राव सहित सभी का यहाँ पर श्री कृष्ण जुगनू साहब, डॉक्टर भुवन विक्रम सर, डॉक्टर अनीश अहमद सर सहित सभी का मैं स्वागत करता हूँ।
महाविद्यालय की ओर से सर ये बुके के द्वारा सबका स्वागत महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा किया जा रहा है। चलिए शुरू में मैं एक छोटा प्रतिवेदन यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहूंगा जो विगत 10 दिन की गतिविधियों का है। शासकीय माधव सदाशिवराव गोलवलकर महाविद्यालय रीवा में रूसा मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग तथा नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस इंडिया के सौजन्य से एजुकेशनल एक्सीलेंस के अंतर्गत 27 अगस्त से 5 सितंबर तक 10 दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन हेरिटेज साइट्स, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, बॉटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, म्यूजियम, हर्बेरियम, आइडेंटिफिकेशन, कंजर्वेशन और मैनेजमेंट के अंतर्गत आयोजित किया गया। कार्यक्रम के वैलिडेटरी सेशन में सभी लीड एमिनेंट स्पीकर, विभिन्न सत्रों के चेयरपर्सन, को चेयरपर्सन, वैज्ञानिकों, प्राध्यापकों एवं सभी प्रतिभागियों का महाविद्यालय परिवार की ओर से स्वागत करते हैं। 10 दिवसीय वेबिनार में कुल टोटल 72 व्याख्यान प्रस्तुत किए, जिसमें से 33 व्याख्यान एंशिएंट हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, 2 व्याख्यान जियो हेरिटेज साइट और जियो पार्क, 20 व्याख्यान बॉटेनिकल प्लांट बायोडाइवर्सिटी, बॉटेनिकल गार्डन, 17 व्याख्यान वाइल्ड लाइफ, एवियन फाउना, जूलॉजिकल पार्क आदि से संपन्न हुए। व्याख्यान प्रख्यात आर्कियोलॉजिस्ट, इंडोलॉजिस्ट, फॉरेस्ट ऑफिसर्स, रेपुटेड इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों, भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालय के प्राध्यापक गण, लेखक गणों, एनजीओ के वैज्ञानिक एवं वरिष्ठ पदाधिकारियों तथा शोध छात्रों द्वारा प्रस्तुत किए गए। विभिन्न विषय के वरिष्ठ एवं अनुभवी एक्सपर्ट ने सेशन के चेयरपर्सन, को चेयरपर्सन, विशिष्ट अतिथिगण के रूप में कार्य करते हुए विषय में अपने विचार साझा किए। प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व एवं म्यूजियम के अंतर्गत हेरिटेज साइट विषय में हड़प्पा सभ्यता के साइट्स, धोलावीरा, लोथल, वीराना, द्वारिका, गंगा यमुना द्वाब के हेरिटेज साइट, एरन, भीमबेटका, गुजरात के प्राचीन शहर बड़नगर, प्राचीन राजस्थान के रूरल एरिया का कल्चरल एस्पेक्ट, मॉन्यूमेंट एवं अन्य विषय के अंतर्गत एलोरा केव्स, खजुराहो के विष्णु मंदिर, सोमनाथ मंदिर में अप्सरा के प्रेजेंस, धोलावीरा के साइन बोर्ड सील, भारत के विभिन्न मंदिरों में द्वारपालों की मूर्तियां, हड़प्पा सभ्यता के एनिमल, प्राचीन भारतीय कला में पौधे, कल्प वृक्ष, उर्वरा शक्ति, मंदिरों में स्थापित विभिन्न एनिमल्स की मूर्तियां, प्राचीन सिक्कों में पौधे एवं वनस्पति, पंजाब के सामाजिक धार्मिक हेरिटेज साइट पर चर्चा की गई। म्यूजियम के अंतर्गत उद्घाटन व्याख्यान छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय म्यूजियम मुंबई के डायरेक्टर जनरल साहब के द्वारा प्रस्तुत किया गया। भारत के प्रमुख म्यूजियम में कलकत्ता, चेन्नई, विजयवाड़ा, लखनऊ, नागपुर, जयपुर, बड़ौदा, मथुरा आदि पर भी जानकारी प्रस्तुत की गई। रिनोवेशन कार्य के अंतर्गत सूरत म्यूजियम द्वारा सूरत के प्राचीन फोर्ट, साल्वेज आर्कियोलॉजी का मॉन्यूमेंट में प्रोटेक्शन एवं संरक्षण में उपयोगिता, विषय के साहित्य एवं ग्रंथ के अंतर्गत प्राचीन भारतीय आर्किटेक्चर के मूल ग्रंथ, प्राचीन इतिहास एवं संस्कृति के ग्रंथ तथा भारतीय लोक कला, नृत्य, आदिवासी कला एवं क्रिएटिविटी तथा मीना आदिवासियों के गवरी लोक नाट्य पर चर्चा विशेषज्ञों द्वारा की गई। बॉटेनिकल गार्डन के अंतर्गत 10 बॉटेनिकल गार्डन पर चर्चा की गई, जिसमें मालावार गार्डन केरला, लायट गार्डन दार्जिलिंग, कैक्टस गार्डन पंचकुला, बीएसआई गार्डन इलाहाबाद के साथ साथ लीड बॉटेनिकल गार्डन शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर, कालीकट विश्वविद्यालय गार्डन, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ गार्डन के साथ साथ फ्लड FRLHT TDU गार्डन बेंगलोर, चंडीगढ़ प्रशासनिक बॉटेनिकल गार्डन पर चर्चा की गई। एवियन फाना के अंतर्गत राजस्थान, अंडमान, निकोबार,
अंडमान निकोबार, तेलंगाना के एवियन फाना, फॉरेस्ट आउल, वेटलैंड, मूर्थन पक्षी वाइल्ड लाइफ। यहाँ पर वर्ड मॉनिटरिंग और वर्ड पैचिंग की जानकारी तथा वर्ड सॉन्ग पर भी जानकारी विशेषज्ञों द्वारा दी गई। वाइल्ड लाइफ के अंतर्गत डिजर्ट के एनिमल पर यहाँ पर व्याख्यान हुए। बोरबियर्स का लेक्चर हुआ और आज अभी अंतिम सत्र में वाइल्ड एस पर डॉक्टर एपी सिंह ने अपना व्याख्यान दिया। साथ ही टाइगर रिजर्व के अंतर्गत मानस टाइगर रिजर्व असम एवं मानस टाइगर रिजर्व असम एवं नागर होल टाइगर रिजर्व पर चर्चा की गई। सभी व्याख्यान विषय के प्रख्यात एमिनेंट विशेषज्ञों द्वारा किए गए। महाविद्यालय द्वारा सभी व्याख्यानों की यूट्यूब तैयार की गई है। अंत में सभी इमिनेंट स्पीकर से आग्रह है कि अपने व्याख्यान के राइट अप 1 माह के समय से प्रदान करा दें, जिससे वेबिनार की प्रोसीडिंग बुक तैयार की जा सके। उक्त यूट्यूब और प्रोसीडिंग पुस्तक विषय के छात्रों एवं शोधार्थियों को उपयोगी होंगे तथा वेबिनार का प्रीसियस रिकॉर्ड होगा। अंत में मैं पुनः सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इसके साथ ही जैसा कि मैंने कहा कि यह एक संक्षिप्त प्रतिवेदन, हालांकि हमने पहले से ही प्रोग्राम शेड्यूल और जो भी व्याख्यान देना था जिन इमिनेंट स्पीकर्स को, उनकी पूरी लिस्टिंग जो है चेयरपर्सन की हमने पहले से ही प्रस्तुत कर दी थी। आप लोगों को जानकारी है। ये एक सामान्य व्यू में जो लगभग हमने प्रपोज किए थे टॉक 73 टॉक हमने प्रपोज किए थे। जो शुरू में जो प्रोग्राम हमें मिला 72 हमने कंप्लीट किए हैं। 2 लेक्चर नहीं हो पाए, लेकिन एक एडिशनल लेक्चर हमको मिला है। तो इस प्रकार से और सभी इमिनेंट स्पीकर, चेयरपर्सन, को चेयरपर्सन समय से आकर के लगभग हमारे वेबिनार में जो भी विशेषज्ञ जुड़े हैं उन्होंने समय की मजबूरी हो उसके बाद अलावा, लेकिन उन्होंने अपने सेशन में पर्याप्त समय हमें दिया है। हम इसके लिए सभी को के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि मुख्य यह है कि समय पे सब, क्योंकि यहाँ पर ये टेक्नोलॉजी में वेबिनार में यही बात है कि समय से नेट पता हो और इसके साथ ही समय से व्याख्यान हो जाए। ये कुछ व्याख्यानों में देरी जरूर हो गई है, समय लगा है। हालांकि हमने निर्धारित समय 10 या 10:30 बजे जो होता था उसमें हम शुरू कर चुके थे, लेकिन सबका सहयोग मिला। इसके लिए हम सबको एक बार पुनः धन्यवाद देते हैं। और इसके साथ ही हम अपने और विशेषज्ञों से चाहेंगे कि अपनी राय, एक ब्रीफ व्यूज इस वेबिनार में साझा करें, जिससे कि वह ऑडियंस के लिए उपयोगी होंगे। मैं सबसे पहले डॉक्टर एजी पांडुरंगन आपसे निवेदन करूंगा। योर व्यू सर। डॉक्टर एजी पांडुरंगन, formerly director JNTBGI Kerala and coordinator BR program. Dr. A.G. Pandurangan. Thank you, Dr. Mishra. Good evening, friends. In fact, I have a very great pleasure to join the valedictory session of this, what you called a marathon, probably 10 days continuously. We had a, what do you call it, an academic fest. Actually, we had enjoyed it, but sometimes what I appreciate, probably Dr. Mishra and Dr. Ansari sir are almost everywhere, all the time in the session. Whenever I join, I used to see him. Probably they together almost 70 to 80 hours for the last 10 days. They have sat and then continuously conducted the program. It's very nice.
And what I found, as scientists, we all confined to certain our own areas. But now, this program, particularly what we call the heritage sites, the tiger sanctuaries, and earlier we covered many of the botanic gardens and all. But this time, we have given more of archaeological evidences to prove our cultures actually. That was one of the fascinating, some of the cultures which we are not aware in other parts of India, we could able to listen and appreciate, because as one of the speaker pointed out, lead speaker, the culture is the product of interaction of man between man and the nature. So that means very interesting. This is it's a product while man interact with the nature, and it's having its own components like customs, belief, worship, everything. So this is really he has taken us beyond our WHOPAL. What we have learned so far is in a different subject, but now we have got exposed. And most of the speakers are all very senior subject experts, and 72, as he pointed out, the 72 presentations. And most of them, very recently, last one is Dr. Singh. Everybody has given their knowledge in a capsule form. That's the most important, which I could assimilate many of the things. And I found that Dr. Mishra used to send a message in advance. Dr. Saab, this next session is like that. Probably he might have thought that we are not attending him. It's not like that, Dr. Mishra. Probably because of our commitment, some work here and there, we may move, but definitely we will come back. And almost around 50, 52 presentations I have actually witnessed. And in fact, it has increased. So when there is a saying, when you try to know more and more, then only you can know how ignorant you are. So what we learned is not the ultimate, because that's what it gives you a very wider outlook, particularly being a country that is in India, having 8% of our global biodiversity, including human diversity, and we learn and interact and appreciate our culture, and also the importance is preserve and then pass on to our posterity. That is very important. And really, as recently, I think Manoj Borkar and Ravi Shankar pointed out, how we have enough data with the institute. We can bring out a series of publications and then policy issues, and then you can submit the data to the government even to take care of our conserving not only the wildlife and habitat management, but also the preserving our culture, because many institutes are working, but the culture, now I found that it is one eminent archaeologist presented the what you called the existing, once existed cities were now underwater, and he explained very chronologically how it has happened, how land actually being encroached by the oceans and how to prevent it. Such informations are very actually useful for our mitigating present day our crisis. That is what we know, because certain states, once even Kerala, when it was formed, over 700 square kilometers of mangrove forest, right now has come down to less than 70 square kilometer, of which only 17 to 18 square kilometer will be the real dense forest, mangroves. That means we are losing more and more the useful and productive ecosystems, and finally it will affect our existence and food system, as well as the what you call our maintaining our seashore, actually the configurations. So I really thank the organizers, particularly Dr. Rewa and his team, to put a tremendous effort to bring all the experts across the India, and what you call very valuable information. The mind, there's a lot of information which we could able to listen,
and improve, and also we can interact with them. Dr. Mishra, you can share all the experts' email address so that we can interact with them. And thank you, Dr. Vijay Kumar. After 4 years, actually, I met you in your institute. And Yes, I sir. see you now, and in between, because of the pandemic, we could not able to interact with each other. But it's very nice. Dr. Mishra gave a good chance to see you again. And I Thank hope you, sir. we look forward future also such a Sure. action and interactive sessions among our scientific community. And I thank the organizers and look forward a great day. Thank you very much. Thank you. धन्यवाद सर. श्रीमती रेखा राव मैडम. रेखा प्लीज. मैडम रेखा राव. मैडम रेखा राव. Yeah. Hey. Yes. Yes, madam. Hello. I'm so happy I could attend, I could listen to so many lectures, and it really gave me a good understanding of what Indian heritage really means. Sometimes we are confined to one single narrow field of our working area. But this session was really very wide and gave us understanding of many things about Indian fauna, flora, museum, so many things, archaeology. Yeah, that was really a welcoming approach from your side, from Rewa, that we got to know about so many things. It has really widened our knowledge about many things. I sincerely thank you for taking so much trouble. And people who are interested can really make use of this knowledge in different fields. Thank you so much for that. And we promise we'll always support you wherever, because as Mr. Zaveri Saab said, many research works are not recognized, not considered at all. And you gave us a platform to present our views. Really, most important thing, that it's not just working, it needs to reach people. You have given your efforts to do that very honorable job, very nice job of making many people understand what India is. અમે આવું જે હું શું 2 કપ થોડો પીવાનો. Dr. T.S. Ravishankar sir. T.S. Ravishankar sir, Mysore. Good evening to all the viewers and great scholars. It gives me immense pleasure to join on this valedictory note. Due to my own preoccupations and other commitments, I couldn't listen to many of the talks. Really, of this magnitude, I have never heard taking place, really covering the entire gamut of different studies. Perhaps any subject under sun and moon are discussed in these 10 days of very high magnitude, I should say. But I am very thankful as an epigraphist. You have recognized me, given an opportunity to chair a session also. So I think such activities should go on whenever from my end to share my knowledge on epigraphical studies and paleographical studies. As a humanity, it has been received a setback. There is a great need to revive. As far as my subject principle is concerned, to know our heritage. You know, I not emphasize and use this platform to say we have to revive, kindle interest among younger generation to take a very serious view, pursue epigraphical studies. There are so many records still coming to light, and it should be an interdisciplinary approach
multidimensional approach to integrate all these studies. So I'm highly thankful for Professor Mishraji, who used to often send me message from my end. And also I'll be anytime prepared to give a talk on any aspect connected with our heritage, epigraphical heritage. So I thank all the scholars who could participate very religiously in all these days and shared their views. Thank you, Mishraji, for giving me an opportunity to say a few words. Thank you very much. Thank you. Dr. Sri Krishna Jugunu, sir. Yes, sir. Dr. Sri Krishna Jugunu. शायद अभी जो नहीं पाए हैं वो मैं सर मैं आ गया हूँ। हाँ सर, मिश्रा सर, वेलकम सर। सर हाँ, कुछ अपने विचार ब्रीफ में साझा करना है सर। सर मैं बिल्कुल मुझे तो एक सौभाग्य है। मैं बताना चाहूंगा कि लिटरेचर पे हमारे 2 लेक्चर हुए हैं। आदरणीय जुगनू जी ने इंडियन आर्किटेक्चर लिटरेचर पर बात रखी है। आपके बहुत से ग्रंथ प्रकाशित हैं इस क्षेत्र पे। और दूसरी कमलेश शर्मा मैडम जो एंशिएंट हिस्ट्री और कल्चर पर जिन्हें लिटरेचर पर बात की है। तो आदरणीय जुगनू साहब से मैं निवेदन करूंगा कि अपने व्यू साझा करें। मैं तो मिश्रा जी को प्रणाम करता हूं और अपने साथ जुड़े हुए सभी साथियों को आज शिक्षक दिवस की बधाई भी देता हूं। आज टीचर्स डे है और हम सब लोगों ने आपको भी बधाई सर। ये बड़ा एक आयोजन जो रहा, रेखा जी हमारे साथ हैं, विनोद जी, मैं विजय जी को भी देख रहा हूँ, महेश जी को भी देख रहा हूँ, टीएस जी को भी। ये देखिए आप, एक इतना सुंदर सत्संग था। तुलसी हमें ये कहते हैं कि ये सब सत्संग है जहां भी ज्ञान अपने को मिल जाए। व्यर्थ की चर्चा, जिसको कालिदास व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रिया कलेहवा काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीम धाम। व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रिया कले, उनको सबको हम लोगों ने छोड़ के जो ये 27 अगस्त से लगातार यानी 9 दिवसीय एक तरह से नवरात्र है। ये नवरात्र से पहले नवरात्र है ये भादों का, जिसको मैं लोग संवाद नवरात्र कह सकता हूँ। एक तरह से रात्र का मतलब विचार होता है, मत होता है। बहुत लोग पंचरात्र था, नवरात्र था, ब्रह्म रात्र था, शिवरात्र। ये जो एक रात्र है, मत है, हम लोगों ने जो अपने अपने मत रखे हैं। मैं तो गदगद हूँ। मैं बीच बीच में कई बार मैंने ज्वाइन किया। जिस भी मित्रों का कुछ आग्रह था कि हमें आप सुने, तो मुझे लगा कि मुझे सुनना चाहिए। मैं इस पूरे आयोजन को एक ज्ञान सत्र कहता हूँ। वेबिनार या आयोजन का टाइप कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ ज्ञान सत्र के लिए, ज्ञान चर्चा के लिए जो संगीतियाँ हुई है, वो केवल बौद्ध काल की 4 संगीतियाँ ही नहीं, बल्कि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि चरक संहिता ने कितनी संगीतियों का जिक्र किया है। जब भी महामारी होती, जब भी किसी विषय पर विशद चर्चा करनी होती, उसमें एक अध्याय है जनपद ध्वंस अध्याय। सूत्र अध्याय में जो पहला खंड है उसका सूत्र अध्याय, उसमें 2 जनपद ध्वंस के नाम से उस समय जो भी महामारियां आती थी, मरकी, मरी, मरह, तो ये जो कुछ उन पर वो चर्चा करते थे कि औषधियां इस काल में अपने प्रभाव को क्यों खो देती है। तो आत्रेय और पुनर्वसु और ये जो संवाद जो चलता था, इतनी गंभीर विषय के संवाद हम लोगों को यानी ऋषियों ने हमें उत्तरकाल के लिए सौंपे। मैं मिश्रा जी को बार बार एक बात का आग्रह कर रहा हूं और आप भी उस बात पर सहमत हैं। जो कुछ भी हमारे यहाँ चर्चा हुई है, वो समग्र चर्चा कितने वॉल्यूम में बने, क्योंकि ये जो संवाद हुआ है ये सब अपने अपने क्षेत्र के विद्वान हैं। मैंने देखा कि चिड़िया से लेके बाज तक, चिड़िया से लेके बाज तक और पत्ती से लेके पेड़ तक की चर्चा इस गोष्ठी में हुई है। मैं ताज्जुब कर रहा हूँ।
मैं इस बात पर ताज्जुब भी कर रहा हूँ, आश्चर्यचकित हूँ, इतने सारे विषयों को आपने समेटा कैसे? ये जो विषय हैं, इतने विषयों को और इतने सारे ऋषियों को, क्योंकि सभी अपने अपने विषय के निष्णात, पंडित, विशारद, सब लोगों ने काम किया। तो मैं तो एक चकित हूं। परसों अलकेश जवेरी जी ने लक्ष्मी की भारत से लेकर विश्व यात्रा को परिभाषित और रेखांकित किया। उससे पहले अनीता कोरडे ने अपनी बात कही अप्सराओं पर। तो मुझे लगता है जल, थल, आकाश, बल्कि मैं तो पांचों तत्व, कितने सारे विषय मैं देखे जा रहा था। कल मणि साहब ने अपनी बातें कितनी सुंदर ढंग से कही बौद्ध स्तूपों से। वो तो खैर विद्वान है ही, हमारे अच्छे परिचित तो नहीं, लेकिन बहुत बहुत परिचित। मैं उनके सामने, मुझे भी पर्चा पढ़ने का अवसर मिला सब लोगों के साथ। ये जो संवाद एक रहा है, हम लोग सौभाग्यशाली हैं, इतने सुंदर आयोजन का हम लोग साक्ष्य पा सके, साक्षी बन सके। मुझे भी अपनी बात कहने का एक अवसर मिला। वास्तु के जो जितने ग्रंथ हैं स्थापत्य शास्त्र के, उनको हम लोग कैसे आर्कियोलॉजी के साथ जोड़ करके किसी भी स्थान, किसी भी निर्माण और किसी भी स्थल के बारे में अपना निर्णय पुख्ता कर सकते हैं। रेखा जी जानती हैं, पढ़ती रहती है और लिखती रहती है, मैं उनको पढ़ता हूँ। हम लोग जुड़े हुए हैं फेसबुक पे, तो हम लोग कई बार इस बात की भी चर्चा कर लेते हैं। एक बड़ा ग्रंथ है जिसका नाम मैंने उनसे संवाद में कहा था, और हम सब मित्रों को उसका मालूम होना चाहिए। वो ग्रंथ है मानसोल्लास। मानसोल्लास भारतीय विद्या का वो प्रतिनिधि ग्रंथ है जिस ग्रंथ में जनमानस से जुड़े, लोकप्रिय विषयों से जुड़े वो सभी ग्रंथ और उन सभी ग्रंथों का सार, मूल तत्व पारिभाषिक रूप से आ जाते हैं। सोमेश्वर ने लिखा, राजा था सोमेश्वर। तो कई बार मुझे ये लगता है कि एक व्यक्ति उस ग्रंथ को नहीं लिख सकता। मैं जो बात कहना चाहता हूं वो यही है कि इतने विषय, यदि महाभारत में केवल हमने व्यास जी का नाम दे दिया, लेकिन कितने जनों ने महाभारत के श्लोकों की रचना की होगी। भारत में जो कुछ है वो महाभारत में होना चाहिए, उसमें नहीं है इसका मतलब भारत में भी नहीं है। ये जो प्रतिज्ञा है, मैं इस वेबिनार के साथ देख रहा हूं, ये जो नवरात्र ज्ञान सत्र, इसमें ऐसे किस विषय की चर्चा बाकी रह गई? मुझे बचता नहीं है, क्योंकि मैं रोज विषय सूची देख रहा था, कितने मित्रों ने उन सबको साझा किया। यदि कोई विषय बचता भी है, मुझे लगता है राजनीति पे ज्यादा चर्चा नहीं हुई, तो दो चार पर्चे उनके भी आप लेके इस समग्र रूप को हम लोगों को सामने रखें वॉल्यूम के रूप में। ये जो कितने ही प्रकार के खंड, ये भारतीय संस्कृति की चर्चा है, इंडियन कल्चर की चर्चा है। तो मुझे बार बार ये लगता है कि इतने सारे विषय जिन पर चर्चा हुई है, एक बहुत अच्छे ढंग से नियमित, बिना गैप के, हालांकि कहीं कहीं कुछ पॉज वगैरह रहा है, लेकिन इन सब को एक चर्चा के रूप में लेके, और उन विद्वानों से भी मेरा आग्रह है जिन्होंने जो विचार रखे हैं उनको वो समग्र रूप से मिश्रा जी को प्रेषित करें। बहुत अच्छा वॉल्यूमिनस वर्क रीवा यूनिवर्सिटी के साथ, मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के साथ, और भी जो सहयोगी हैं उन सब के साथ एक संवाद बन सकता है, और इस देश की ज्ञान के रूप में एक पूजा हो सकती है। हम ज्ञानाभिषेक कर सकते हैं इस देश का। मुझे आपने अवसर दिया अपनी बात कहने का इस ज्ञान सत्र के उपसंहार के रूप में। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, वो सब लोग जो इसमें आए हैं, जयंती ते सुकृतिनो रस सिद्धा कविश्वरा, नास्ति येषाम यशकाय जरा मरण जम भयम। उन सब कविश्वरों की जय हो, उन सब ज्ञानियों की जय हो
जिनके विचारों को, जिनकी यश काय को कभी भी बुढ़ापा नहीं सता सकता, मौत मार नहीं सकती। एक बहुत खूबसूरत आयोजन आपने इस देश के हिस्से में अपने खाते में खटाते हुए हम लोगों को लोकार्पित किया है। मैं उन सब के लिए आभार ज्ञापित करता हूं और अपनी ओर से हार्दिक धन्यवाद कि मुझे भी इस आयोजन में बोलने का, अपनी बात कहने का एक अवसर दिया। ये ज्ञान सत्र परमानेंट वैल्यू का हो जाए, क्योंकि अभी ये आभासी है, ये हमारे हस्तमलकवत हाथ में आया हुआ हो जाए। आभार आपका। धन्यवाद सर। डॉक्टर AP सिंह सर, एडिशनल प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट गुजरात। थैंक यू मिश्रा साहब और आपकी पूरी वैज्ञानिकों की, ज्ञानवान लोगों की जो टीम है, जो बहुत अच्छा, अभी श्री कृष्णा साहब ने कहा, सबने सब कुछ कवर कर लिया है। मेरे लिए तो कुछ बचा नहीं है, लेकिन मुझे इसी बात की खुशी होती है कि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो हमारा सब्जेक्ट है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, फ्लोरा एंड फौना, और आज जो क्लाइमेट चेंज की जो आप प्रॉब्लम देख रहे हैं फ्यूचर के लिए, तो हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए किस तरह से उनको तैयार करना है, किसे उनको इसकी इम्पोर्टेंस को बताना है। और आपने सारे के सारे जो विद्वान हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, उनको सबको इकट्ठा करके जो इतना बड़ा आयोजन किया है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और रियली हम तो सभी आपके वक्तव्य तो नहीं देख पाए, सारे लेक्चर्स, व्याख्यान तो नहीं देख पाए, लेकिन कुछ जो भी देखे हैं वो रियली आउटस्टैंडिंग, आई ओपनर, इतनी नॉलेज, फुल ऑफ नॉलेज। तो मैं तो कहूँगा कि आप जो कर रहे हैं उसको पब्लिश करिए, यूट्यूब पर डालिए, लोग उसको देखें, भविष्य में करते रहिए। और वाइडर जो हमारे रिसर्चर हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको इसके साथ जोड़ के ये नॉलेज को कैसे आने वाली पीढ़ी तक पहुंचे, और वो हमारे जो आज रिटायर्ड जो रिसोर्सेज हैं, वो रिटायर्ड रिसोर्सेज को आपने इन्वॉल्व किया है, और उन सबको इन्वॉल्व करते रहिए। आप राइट अप करिए, उनको भेजिए, उनसे वेटेड कराइए, उसको उससे इम्प्रूव कराइए, और ये कहीं न कहीं छोटे या बड़े एक राइट अप के रूप में, एक बुक के रूप में, एक रिपोर्ट के रूप में आना चाहिए, जिससे आने वाले समय में जिसको जरूरत पड़ती है वो इस चीज के का लाभ ले सकते हैं। मैंने एक का सेशन को चेयर भी किया और एक मैंने लेक्चर दिया, लास्ट टाइम भी दिया था। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जितना सुनने से जो लाभ होता है, उतना लेक्चर देने और शेयर करने से भी उतना लाभ होता है, क्योंकि उसमें अपने आप को तैयार करना, अपने आप को अपडेट करना, अब तक कितना रिसर्च वर्क हुआ है उसको स्टडी करना, ये सारी चीज कलेक्ट करके अपना भी उतना ही विकास होता है जो सामने वाले को आप दे रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि आपकी जो सीरीज है 10 दिन की, रियली वंडरफुल, आप जो एफर्ट्स कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है, और इस तरह से करते रहिए। और मुझे तो बहुत फायदा हुआ है, इससे बहुत फायदा हो रहा है। तो मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देते हुए अपना वक्तव्य पूरा करता हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर फ्यूचर ऑल्सो। थैंक यू। धन्यवाद सर, धन्यवाद। हमारे बीच हमारे मध्य प्रदेश से के आर्कियोलॉजीज के डायरेक्टर, जो यहाँ पर टेम्पल सर्वे के इंचार्ज हैं मध्य प्रदेश के, और काफ़ी कुछ इस क्षेत्र की देख रेख का काम उनके ही हाथ में है। और उन्होंने हमारे यहाँ व्याख्यान भी दिया है और सेशन को भी शेयर किया है। मैं आदरणीय डॉक्टर भुवन विक्रम से निवेदन करूंगा कि खासकर इस क्षेत्र के बारे में अपना एक व्यू साझा करें। डॉक्टर भुवन विक्रम सर। जनों को नमस्कार, और विशेष नमस्कार हमारे प्रोफेसर स्कंद कुमार मिश्रा जी को, जिन्होंने अपने अथक प्रयासों से इतना विशाल एक वेबिनार को ऑर्गेनाइज किया। मैं मानता हूं कि वो अकेले इस काम में नहीं जुटे, इनके साथ में पूरी इनकी टीम रही होगी,
मैं उस पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इतनी बड़ी व्यवस्था इतना सुचारू रूप से चलाने के लिए निश्चित रूप से बहुत बड़ी आयोजन और प्लानिंग की जरूरत पड़ती है, और उनकी इस प्लानिंग को अनेक साधुवाद। Interestingly, the entire seminar, although I could not watch, I could not hear to listen to all the, I mean, most of the deliberations that took place during these 9 days, but still, whatever glimpses I had in between, definitely it was a great enclave of scholars who presented their research work and diversified topics. And actually this is something which an archaeologist does. It's a kind of multidisciplinary thing. And as an archaeologist, I believe that nothing is unimportant in this world. Every field of knowledge is so important in interpretation of our archaeology, and still the study of past also gives us a way forward so far as whatever problems now we are facing in the world, like biodiversity, the conservation of ecology, ecosystem, and everything that has been there in our past, and we know how they tackle. So this is all important, that it was a multidisciplinary kind of webinar where experts from diversified fields got together and exchanged their views. And definitely it was an Herculean task. And I once again thank and congratulate Dr. Iskand Mishraji and his entire team, because I know that 2 faces we have seen here, but there are plenty of faces that were behind the screen and in the backdrop, and they also deserve equal amount of thanks and congratulations. And I hope, like most of the earlier speakers have said, we'll have to contribute, because it is we that will have to contribute, and only then Mishraji can bring out a volume of it. So we all of us here present, and those who are not present here, they should actually commit that yes, we will supply the write-ups for bringing out the volume. So from my side, I can say yes, I will be sending it within time, whatever I have spoken here in this seminar, and I do expect all of us to do the same, and then expect Sri Mishraji to work on it and bring out a volume as we have said. So I mean, many congratulations to Mishraji and his team, and all of the scholars who have given their time for this to make this webinar a success. Thank you very much. Thank you very much. Hi, Bhuvanji. It's nice to see you. Pleasure to you. Yes, Dr. Bhavjirao, how are you? I'm good. Fine. And your talk is very good. And this platform has given, to be in contact with the many friends and scholars whom we had met, and over the years the contact has been lost. So it is good to be here in this webinar and see and catch up with old friends and all the scholars that we have lost contact with. Like Dr. Ravishankar. Yeah. Bye. सर बताना चाहूंगा कि पिछले वेबिनार का हमारा जो बायोस्फीयर रिजर्व का बुक है वो लगभग तैयार है। ये इस कार्यक्रम के कारण जो है इस महीने नहीं तो अगले महीने में वो आ जाएगा, जिसमें कि पूरे इंडिया के जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं उससे संबंधित करीब 30 राइटअप हैं, और इसके अलावा बॉटेनिकल गार्डन जो इंडिया के टॉप बॉटेनिकल गार्डन है, अभी हमने ये दूसरी सीरीज कराई है बॉटेनिकल गार्डन पर, लेकिन इसके पहले जो फर्स्ट लाइन के बॉटेनिकल गार्डन है FRI देहरादून, NBRI लखनऊ, कलकत्ता AGC गार्डन, इन सब पर हम लगभग 10 बॉटेनिकल गार्डन को कवर किया था, और इसी तरह जूलॉजिकल पार्क है, इन पर आधारित लगभग 50 आर्टिकल्स की एक वॉल्यूम जो है लगभग 400 पेज की है, वो तैयार हो गई। शायद अगले महीने हम उसको ला लेंगे।
और इसके अलावा जो नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व का चैप्टर है वाइल्ड लाइफ, उसमें भी 50 लगभग हमको आर्टिकल मिले हैं, उसको हम जस्ट कंपाइल कर रहे हैं धीरे धीरे, और उसको भी हम 2 या 3 महीने के अंदर, यानी दोनों वॉल्यूम, ये हमको मिनिस्ट्री ऑफ HRD के द्वारा ISBN नंबर भी मिला हुआ है कॉलेज को। और क्योंकि हमने पिछले जो 12 कॉन्फ्रेंस कराई थी, ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन कॉन्फ्रेंस नेशनल लेवल की, उसमें पूरी हमारी प्रोसीडिंग बुक बनी हुई है। मतलब हमारा जो कॉलेज है वो कॉन्फ्रेंस की 10 प्रोसीडिंग हम लोग पहले से ही कंप्लीट कर चुके हैं। तो ISBN नंबर भी है हमारे पास, और वो कॉलेज को ही मिला हुआ है, तो उसको भी हम जल्दी ही कंप्लीट करेंगे। इसीलिए हमने आग्रह किया है सभी जो लोग हैं। मैं ये नहीं चाहता कि, क्योंकि प्रकाशन की कई बार बात होती है कि अच्छे जर्नल्स में और जो रिसर्च पेपर है, तो हम रिसर्च पेपर का व्यू नहीं मांगते हैं, क्योंकि वो उनके एकेडमिक करियर से संबंधित है। एक राइटअप जिसमें कि इंट्रोडक्शन के बारे में, जो एरिया है उसके बारे में एक परिचयात्मक जानकारी, और अपनी बात उसमें लगभग बहुत लंबा भी ना हो, वो लगभग 6-7 पेज का, कुछ फोटोज भी हों उसमें, जितना मिल जाएगा तो एक रिकॉर्ड होगा कि पूरा जो है लगभग जो हमने करवाए यहाँ पर आयोजन हुए हैं उसका लाभ हमारे संस्थान को, रिसर्च स्कॉलर्स को और सभी को मिलेगा। यही मेरा निवेदन है कि जब भी समय है, पर्याप्त समय, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, क्योंकि अभी तो हम पुराने जो वॉल्यूम है उसमें हम टाइम है हमको 1-2 महीने का। इसके बाद हम चाहेंगे कि जो लोग दे सकें, उनसे आग्रह है, कोई जबरदस्ती नहीं है, पर आग्रह है हमारा कि यदि हो सके, क्योंकि लगभग हमने 200 टॉक कराई थी अभी तक इसको छोड़ करके, तो उसमें लगभग 100 टॉक के राइटअप हमको 50% मिले हुए, तो उसका हम बुक बना रहे हैं, और बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक पर हैं। बायोस्फीयर रिजर्व तो शायद पहली बार कवर हुआ है पूरे इंडिया का एक साथ, जिसमें कि जैसे BSI प्लांट का करा लेती थी, ZSI एनिमल का करा लेती थी, लेकिन हमने दोनों को लिया, और लगभग प्लांट और एनिमल दोनों के राइटअप हमारे पास आए, और यहाँ पेपर भी प्रेजेंट हुए थे, और अच्छा है, बहुत अच्छा। जहाँ तक कहते हैं टीम कैसे तैयार हुई, तो आप ही लोगों से सहयोग हमको मिला है। जैसे जुगनू साहब हैं, इस बार हमारे यहाँ लेक्चर दिए, अब 3 जो हम आगे करेंगे तो 3 जो है एक्सपर्ट हम जुगनू साहब से लेंगे। तो सर आपके लिए तो हम लोग तैयार हैं। तो यही चैन बना, तो ऐसा करके बनता चला गया। अंडमान जैसे प्लेस में जहां मैं कभी नहीं गया, दूर है, वहां से हमने कम से कम 7 लेक्चर कराए। वहां का अंडमान का पूरा फ्लोरा और फाना हमने पूरा कवर कर डाला। ग्रेट निकोबार पर भी हमने लेक्चर कराया। इसके अलावा लद्दाख, मतलब जो सुदूर एरिया है, अरुणाचल, मणिपुर, क्योंकि अपने इधर का जो बेल्ट है, चाहे वो नॉर्थ हो या साउथ हो, तो इसमें तो मिल जाते हैं, लेकिन वो उन पर बड़ी कठिनाई होती है। लेकिन हमें आप ही लोगों के सहयोग से सब मिले हैं, और मैं चाहूँगा कि यहाँ पर वाइल्ड लाइफ से संबंधित कुछ एक्सपर्ट हैं। मनोज बोरकर साहब गोवा से हैं। गोवा बोरकर साहब शायद वो चले गए हैं। तो आदरणीय बाबजी राव हैं हमारे साथ, और बहुत सहयोग किया, और ये कार्यक्रम में लगातार सलाह। साउथ में जो हमको आर्कियोलॉजी, एक तो बॉटनी का मैं हूँ, तो वहाँ पे बॉटनी के लोगों से तो परिचय था, लेकिन आर्कियोलॉजी का परिचय नहीं था। तो मैं याद करता हूँ आदरणीय जो केवी राव साहब थे पिछले वेबिनार में, उनने हमारे साउथ के जितने एक्सपर्ट हैं उन पर काफी मदद की उन्हें, एक्सपर्ट को। और इवन लेक्चर भर के लिए नहीं, हर सेशन जो सेशनल चेयरपर्सन थे, रवि कोरी सेतार साहब, मशहूर वाले प्रोफेसर साहब, बालाजी राव, सबको उन्हीं ने जो है, केवी राव साहब ने हमारी बड़ी मदद की, क्योंकि शुरू में 2 लोगों से परिचय हुआ। साउथ में केवी राव साहब और
इधर एरिया में फणिकांत मिश्रा सर, इन दोनों से पहले चर्चा हुई और उसके बाद जो है, पहले मैं तो केवल 2 विषय पे चाहता था कि एक हम्पी पे हो जाए और एक जो है लेक्चर खजुराहो पर हो जाए। तो 2 मैंने एक्सपर्ट, फिर उन लोगों का सहयोग मिला, एक्सपर्ट मिले और पूरा का पूरा ये पहले पिछली बार लगभग 17 या 18 टॉक हुई थी, इस बार 33 टॉक हुई है, यानी 50 मतलब आधा शतक मेरा मार्कोलॉजी और इससे संबंधित विषयों पर हुआ है। कुछ इस बार लोक कला पर भी हमने लिया, लिटरेचर पर भी आया। मैडम रेखा राव अभी तो इस पर धोलावीरा और के सील पर लेक्चर दी हैं, बहुत अच्छी राइटर भी हैं, मैंने अभी मुझको जानकारी मिली, तो हमने कहा देखिए कभी उनसे निवेदन करेंगे कि उन पर भी चर्चा हो। तो मैं बाबजी राव साहब से चाहूँगा कि अपनी बात रखें यहाँ। जी नमस्कार। मिश्रा जी, ये तो कुंभ है, ये वेबिनार नहीं है, कुंभ है। कुंभ मेला जैसे इतना बड़ा 10 दिन तक, मतलब बहुत ही बड़ा ये होता है, टाइम होता है। और विद इन दिस 10 days you have made both the conservation of biodiversity and conservation of the cultural property. For me, both are very strong impact creators in the society, present society, because as you are the environmentalist and the environment itself is facing the problem, we in the cultural heritage, management of cultural heritage also facing the same problem because of none other than by our own human endeavors. That's the thing. So आपने ये मैं देखा था कुछ because I was so much busy with some other things. In fact, I am not in Hyderabad for all these days. I was not in Hyderabad. I am at Visakhapatnam. So what I have seen and what I could get into the thing is such a marvelous information. If the youngsters, especially the students and the research of the present generation, if those people are very interested, if they are keen enough, they could have got lot of information. For me, it is like learning a greater things. But one thing is that while making such a, it's my suggestion, Mr. Ajay. Last time I saw, I made such a certain suggestion to you. Okay, time constraint, we should, if the time management, it depends upon each and every participant. If I know what is the time given to me, if I am out of my time, I should control it. That's important. Otherwise, what happens? This is, you are organizing for the pan-Indian webinar. And when it is because all people will be busy, especially officers and all of that. They are busy. Okay, for me, it's not this thing, but officers. So when that is there, the time has to be taken care. And another thing is that instead of making such a marathon session, you make these ones by 6 months or by 3 months or quarterly. If you precise those things and selectively you make the list of the presentation, that will be of more help for the students and the researchers. Yes. Otherwise, they won't. We cannot expect a student right from the morning 10 o'clock, 10:30 up to the 5, just to hear all the things. And in between, major important, the majority of the speakers, they have shared their experience of their lifelong research in different fields of their own activities. So these ones are what for our this webinar's objective is. Ultimately, it should reach over the present generation, right? So that they will be the torch bearers and they carry forward the thing. So to achieve that object, I request you and I hope you will think on those lines. And about the content of the thing, absolutely it is marvelous. Especially my brother is a doctorate in biology and this thing. He was also
I asked him, see how nicely this is going on. He also happened to appear for some of your talks. Then he said, yeah, it is indeed. He's from Gujarat again. He's working in the Gujarat. So he also said the same thing. So it is like a dissemination of knowledge in such a way that, but ultimately its objective should be fulfilled. That's what practically I feel and I require. Thank you very much for giving me such an opportunity for last year to be हमारे to साथ present. हमारे धन्यवाद सर। हमारे साथ बहुत वरिष्ठ प्राध्यापक और आर्कियोलॉजिस्ट जो है जुड़े हैं। मैंने उनसे निवेदन किया था। प्रोफेसर के.एम. सुरेश सर जी, हम्पी। He's our senior. Yeah, I joined at Hampi only. After he left the Hampi. मैं निवेदन करूंगा। नमस्कार सुरेश जी। यस जी, हम लोगों को आशीर्वाद स्वरूप जो है अपने कुछ बातें। Our Ravishankar sir, we worked together and it's such a fantastic experience in the field of epigraphy. The finer aspects study into the deeper and deeper. Fantastic. Oh, sorry for. I'm sorry, sir. I will put off my mic. Yeah, carry on. Good evening, Professor Misra ji. Are you hearing? Yeah, you are audible to everybody. Yes. Thanks for Professor Misra ji and other delegates, scholars, and chairman and other persons. Really, it was a good seminar, webinar from 7th to 5th, and collecting a lot of scholars from different fields. Of course, we got knowledge on field works as well as on temple surveys and other things, but we have no idea about geological parks or other museums. That is a good knowledgeful for others also. But one thing I suggest you, better you try to bring new youngsters, because they should learn more, because we have already crossed 60, 70. We have worked a lot of work that is there, that will be there. But youngsters should know each and everything, and you kindly invite all the new boys and girls to the subjects. That is my main request, because we are all already above 60. So whatever we learn, we used to say everything, but we should bring youngsters to come up. That is my main motto. Is it, sir? Is it Babuji Rao? Is it correct? Exactly, sir. It is only the Because generation X. All the new stars. No, generation X should be involved seriously. We should make them to involve. Right. इसमें सर मैं कहना चाहूँगा, they cannot attend all these such things. We are already experienced. We know how to speak, how to talk, how to write. Everything is known. But what about the new generations should also learn all these things? That is my main motto. And they can learn all the aspects, including archaeology, museums, then park, geological, everything they can learn. Otherwise, they cannot learn everything in the colleges or in the universities. That is my motto. So thank you very much for kind calling me to talk on this temples. Of course, I introduced one of my young scholar, that is S.Y. Somsekar. He did a lot of works on Hampi. When I joined as a professor in the university, he was my research scholar. Now he has picked up everything, including he has guiding students to the PhD scholars. More than 12 students got doctorate, whereas when I joined, only 5 students got doctorate, because improvements are more we can see in the new coming up. So thank you very much for Misra ji and all my friends and delegates. Thank you very much. सर इसमें बताना चाहूँगा कि जो YouTube हम लोग बनाते हैं, इसको हम हायर एजुकेशन में भोपाल में भेजते हैं और वो सभी महाविद्यालयों को उपलब्ध कराते हैं।
सभी कॉलेजेस को, और वो कॉलेज फिर अपने स्टूडेंट को देते हैं। तो ये केवल एक कॉलेज के लिए नहीं है, ये पूरे मध्य प्रदेश में, और इसके अलावा जो अदर स्टेट्स से मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा का जो MOU साइन है, उसमें भी वो इन जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनको देंगे। और इसके साथ ही बुक का भी जो हम प्रकाशन कर रहे हैं उसको तो वो तो सामने आएगी ही बच्चों के, और दोनों रूप में दे रहे हैं, उसको सॉफ्ट कॉपी में और हार्ड कॉपी में भी हम उसको तैयार कर रहे हैं, तो आगे चल करके वो लाइब्रेरीज को भी उपलब्ध हो सके। मैं शुरू से अंत तक जो सेशन हुए हैं उनमें लगभग 70 to 80% जो है सेशन डॉक्टर A अंसारी साहब जो बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के इलाहाबाद के हेड थे, और उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में बोटेनिकल गार्डन ऑफ BSI इलाहाबाद पर व्याख्यान भी दिया। इसके पहले उन्हें नोएडा पर दिया। बायोडाइवर्सिटी के अच्छे विद्वान हैं और काफ़ी सीनियर हैं, BSI से काफ़ी सीनियर, लेकिन लगातार विभिन्न गार्डन इनके देख रेख में गार्डन बने हैं, दिल्ली में भी, और इलाहाबाद का गार्डन तो इन्हें खुद बनाया जब ये BSI के हेड थे इलाहाबाद में। तो मैं चाहूँगा कि अपने ये शेयर करें, क्योंकि इनमें सबसे ज़्यादा शायद, क्योंकि मैं तो कुछ और भी मैनेजमेंट में लग जाता था, लेकिन वो पूरा समय दिए हैं, और लगभग सबसे ज़्यादा चर्चा भी की है, डिस्कशन में भी भाग लिए हैं जो एक्सपर्ट रहते थे। इवन बॉटनी का और बायोलॉजी तो हैं ही, तो उनका इंटरेस्ट जो है वो आर्कियोलॉजी, और वो तो वहाँ पे भी जहाँ मौका मिला उन्हें चर्चा की है। आदरणीय अंसारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया मिश्रा जी। नमस्कार अंसार जी। जी नमस्कार। बहुत शुक्रिया जी। आप सब लोगों को नमस्कार, गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। आप पहले सब लोगों ने सारी बातें कह दी हैं करीब करीब, और डॉक्टर राव साहब, डॉक्टर क्या नाम, सुरेश साहब, इनकी बात मानते हैं। कुछ कुछ गैप दीजिए वेबिनार में, गैप बिल्कुल नहीं होता है, लगातार हो रहा है, ये गैप दीजिए। और सर गैप देने से लोग हट जाते हैं। पिछली बार एक बार गैप दे दिया, हमने गैप नहीं दिया, अचानक गैप हो गया कि जिनका नंबर था वो थोड़ा लेट हो गया टाइम, तो वो चले गए। उनके लिए हमने पहले वाले से कहा कि अब स्टॉप करिए, नेक्स्ट सेशन होगा, और नेक्स्ट सेशन वाले चले गए। और फिर 20 मिनट तक उसके बाद जो कोई आया तो वो बोले कि अब क्या बोलें, फिर हमको इंतजार करना पड़ा और फिर से बुलाना पड़ा। You have given the list 20 botanic gardens and parks and other things you have given, around 10 botanical gardens. So this is XC2 conservation, which is very much needed in these days of threat. We have very threat. The climate change, hearing floods in Pakistan, so much, and many areas in Assam and in our country also floods are there. So this is because of the loss of heavy loss of trees, cutting of forests, and exploiting medicinal plant from the forest. If a tree is a medicinal plant value, then they cut all the trees. So this is what is, if a plant is medicinal root is needed, root is taken, so there is no flower, no fruit. So we are in the era of conservation. With this, the things we heard in this series was really, and the Namkin's lecture was so nice. And I can say I'm not seeing this thing, but I am just not remembering. For visually handicapped persons, they have developed a garden in Calicut University, touch and note and in touch and feel, first in India, and it is also the largest they are telling. So, and that becomes 37 acres of land, the largest botanic garden of any university in India. That's what so, and very nicely.
And all the, of course, these are some of the beauties, and many other lectures are this Doaba excavation. I was thinking, always flood is there. Why so shallow excavation there? So many things they are getting. So this is what. And near a big hill, very small area, it is excavated. So many things are found, and they say the husband or like this. So this husband theory also was disputed. When we are getting so much into our area, I think when I was Sikkim, Dr. Rao used to come to me, and he was in anthropological or archaeological. Both surveys they used to come. Is it anybody can confirm it? Dr. Rao, Anthropological Survey of India. Then I used to chair the session, and I will sit in there. So I'm just telling these things because Godavari or Ganga Jamuna, the excavation was shown in the slide. So I was sorry to see this. They always there is flood. So continuously there may be erosion, and this area is very shallow. After few meters or some distance, they are getting the things. That is what I think. So I think I will not go much. We are very late in the. I thank all the listeners, all my as Raji was telling, we are retired. Useless persons, we are retired, so we have lot of time. So anyway, it is good. I congratulate the team and the college and the INSA BHOPAL chapter or the funding agency. Whatever it is, all the 5 series recently held. The third I am attending. So we had this arboretum from Shimla, Manas, and which we heard really. Undoubtedly, what Misa is telling it to the Madhya Pradesh government, every college is getting it. So I think the execution is not that it's not going to be downtown, populating to the students or youngsters. So I think this will go a long way in inculcating the youngsters' mind or deep in their related and relevant field. And of course, we are definitely understanding the era of conservation. We are seeing the calamity, this climate change. It is very much anytime, anywhere it can happen. So we have to have this mechanism to conserve things and to protect the environment, to provide us everything we have. And museum, of course, the last lecture on museum was all India, so it was also very good. And Dr. MP Singh also, this last lecture was very good. With these few words, I once again congratulate all the speakers, all the chairpersons, and co-chairpersons, and all the listeners. Very bright coming days for conservation of all the things we have heard from the webinar, and my good wishes to thank you all. थैंक यू सर। मैं चाहता था कि कुछ यंग स्टर जो अपने यहाँ सभी वो लोग जुड़े हुए हैं, जो जिन्हें कि यहाँ पेपर प्रेजेंट अपना व्याख्यान दिया है, यंग स्टर लोग, गौरी लज्जा, अनिता कोरदे, हरीशा दिए हैं, आरपी हरिश से। यदि वो लोग जुड़े हों तो अपनी बात रखें, क्योंकि ये
वो युवा का प्रतिनिधित्व है, यंग का, तो यंग से बात आई। Some young researchers, speakers. प्रियंका मैडम लाइन में है। डॉक्टर प्रियंका अग्नोत्री मैडम, NBRI लखनऊ। डॉक्टर प्रियंका अग्नोत्री, प्रिंसिपल साइंटिस्ट, NBRI लखनऊ। और भी जो अपनी बात रखना चाहें, हमारे साथ नमस्कार जी, आई एम प्रोफेसर गोलाकपाल। नमस्कार। So it's I'm from Guru Nanak Dev University. प्रोफेसर अविनाश, मैं परिचय दे दूं मैडम। प्रोफेसर अविनाश और नागपाल जी अमृतसर यूनिवर्सिटी में बॉटनी की प्रोफेसर थी और अभी जस्ट रिटायर होकर अभी एक्टिव होकर काम कर रही हैं वहीं पे, तो मैं स्वागत करता हूँ। Thank you very much, Dr. Sakand. I think I endorse everything what everybody else has said. So we salute your energy and the stamina for organizing this series, and as well as the earlier 4 series in such a wonderful and meticulous way. I must appreciate, sometimes I see that the message is coming at 12 at night or 2:30 in the morning and then again 6 in the morning. I don't know when do you sleep. So I salute you for all your active participation. And during handling of these webinars, for every webinar you were present and you were seeing that everything goes meticulously. अगर कोई टेक्निकल हिच कहीं पे आ भी रही है तो आपने बहुत पेशेंटली उसको हैंडल किया है, किसी स्पीकर को ऑफेंड नहीं होने दिया, एंड यू हैड बीन वेरी कोऑपरेटिव एंड नाइस टू एवरीबॉडी, बिकॉज the people who are they are nearing retirement, or we are not so very much familiar with this machinery, so it sometimes becomes difficult for us. But it was a wonderful thing, wonderful arrangement. Your technical support has been wonderful and they were very good. And you have also, because I could not attend all the lectures, being the working days in between and a number of meetings and other things going on, but whatever I have listened to, such a marvelous, each and every resource person has given the maximum input to us. It was a great learning. And what I like about it is that they are there on YouTube. So if we have missed some lectures, we definitely go to YouTube and see as many times as we want. And say best of the best learning, and you are my inspiration, I must say. And I congratulate and salute you and your team, and wish you all the best. And we look forward to many more series and the conferences in person. We would like to visit your college and have a conference there, and then we can interact there. Thank you very much. And at this one minute, at this center, I want to say everyone, please go to GNDU website and see the database, electronic database of plants which we have developed. It's a humble beginning. It's not a big thing. Only 150 plant species, 3 species have been added, and a few herbaceous plants. We have also added herbarium specimens of nearly 5,000 accessions. So it's not a big thing, but it's a very humble beginning. But I would like to have your input, your suggestions, so as to improve whatever we are doing. And thank you very much. Thanks a lot. Thank you, madam. I love the idea of making a database of these plants. Like we should make database of everything which we are having and which we talk during this seminar also. Yes. So that way, what will happen is that okay, watching a presentation is fine, watching a series is fine, but everything is literally categorized. Right now, we have a lot of information in our country, but everything is scattered. Even if you want to get a single information, 17 departments have to be gone through.
And then when you reach to the information, it is not properly assimilated. So this way, step by step, every colleges should come together. Not only botany, zoology, science, Yes. architectural structures, monuments, everything should be started that level, and the students should be involved. हम क्या करते हैं, रिसर्चर्स को लगा देते हैं कि तुम ये काम करो, उनके पास उनका इतना सारा काम है कि वो नहीं, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को वहां पे ले जाइए, उनको टूर कराइए, बोलिए आपने दूसरा क्या देखा, लिखवाइए, और उसमें से आप इंफॉर्मेशन जनरेट कीजिए। सर हम यही कर हमारे रहे यहाँ टीचर्स को लगा देते हैं कि भाई उनका सर्वे करो, किसी जगह जाके गवर्नमेंट प्रोग्राम का सर्वे करो। टीचर का काम है, because it's a teachers day, I'm going to talk about our teachers also who have made us to stand up like this, and our mothers and fathers. हम बोलते हैं कि भाई ये सर्वे करो, वो सर्वे करो, जिसमें इधर की पॉपुलेशन क्या है, इधर की ये क्या है, उसका टाइम नहीं है। बच्चों को ले जाओ उस जगह पे, उनको बताओ ये की चीज क्या है, और उनका राइट अप लिखवाओ उनसे, देन उसमें से अच्छी इंफॉर्मेशन लेके यू जस्ट पुट इट अप। I have seen as a teacher, I was working in some school, the students' projects were almost thrown in the room for no reason. They spent so much time to make them and give them back again. Why you want to collect that and you are not going to represent it? अगर वो स्टूडेंट समझो कि 12 साल के बाद वहाँ टीचर की तरह आया और उसका खुद का प्रोजेक्ट किस तरह गार्बेज में उसने देखा, तो कितना उसको फील होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, I agree with you. So what I am suggesting is we involve the student. To involve the student, we have tried to involve the students. No, And students have been, I'm not saying the college level students, ma'am. Huh. My concern is not college level students. Okay. I am concerning the school level students. Okay. So when they come to college, they already are trained from a grassroots level, and then we go when they go to say position like this, Mr. Okay. Mishra ji or some better position, they know that the what efforts they did in that place, so they will help everybody. नहीं सर, स्थिति हर जगह वही है। अभी मैं 3 महीने से यहाँ एमपी में इलेक्शन करा रहा था, पूरी ट्रेनिंग, और इसके बाद what is the purpose of Mishra ji going to election? That's what I'm जब तक पूरे नहीं बन गए तो इलेक्शन की ड्यूटी 3 महीने हम लोगों ने सब डंप रहा, पूरा पढ़ाई लिखाई सब, और पूरा जो है केवल इलेक्शन करा रहे थे हम लोग, ट्रेनिंग दे रहे थे कर्मचारियों को, फिर Britishers have given you a chance, काउंटिंग कर रहे थे पूरा। You have to change that route. ये मिश्रा जी, हम लोग इलेक्शन में आते थे, इलेक्शन में ड्यूटी लगती थी हम लोगों की, क्या कीजिएगा। हाँ वो तो है ही है, वो गवर्नमेंट का काम है। तो हल्केश जी काफी हमारी मदद किए इस कार्यक्रम में, और खासकर क्योंकि इनका इंटरेस्ट भी है आर्कियोलॉजी फील्ड पर, तो बहुत से जो स्पीकर हमको मिले, उनमें काफी, और खासकर यंग स्पीकर्स को भी इनमें जोड़ा, जो रिसर्चर थे, जो इस फील्ड के इंटरेस्ट रखते थे, क्योंकि उनका सेम इंटरेस्ट था, तो उन्हें हमको बहुत से लोगों के नंबर दिए, बात कराए, और इस तरह से आर्कियोलॉजी फील्ड में आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के अलावा भी जो लोग थे, वो जो वो टीचर, आर्कियोलॉजी के टीचर, और इसके अलावा आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के अलावा भी बहुत से स्पीकर, मैडम रेखा मैडम हैं, और भी बहुत से लोग हैं, इवन तो ऐसे बहुत से लोग जुड़े, तो उसमें आपका सहयोग है। आप गुजरात से हैं और वर्तमान में न्यू जर्सी में रहते हैं, लेकिन इंटरेस्ट की वजह से पिछले 2-3 वेबिनार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और उन्हें अपने एक्सपर्ट प्रदान कराए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या थूपाली सर, नेक्स्ट वेबिनार में भी आपको इसी तरह मदद करते रहेंगे, और if possible, if I get a chance, I will try to involve some professors from US also, and also kids of US may see this your webinar. I will try my best. जी सर, देख रहा हूँ अभी हमारे कॉलेज में नैक का रहा है, मैं IQAC कोऑर्डिनेटर हूँ, तो हो सकता है कि उस पर हमको अभी फोकस करना पड़े, और यदि थोड़ा उसमें गैप मिलता है तो अपन देखेंगे, जल्दी ही देखेंगे। यदि थोड़ा सा उसमें ज़्यादा व्यस्तता हो गई मैक में, क्योंकि एक बार यदि टाइम आ जाएगा तो फिर उसकी तैयारी करने में टाइम लगता है, तो अपन उसको
बताएंगे आपको। यस भुजंग साहब, हाँ आप, मैं तो ढूंढ रहा था आपको। हैं जी थैंक यू। एक्चुअली जैसे बाबूजी राव सर ने और बाकी सभी लोगों ने कहा कि हम लोगों के लिए ये एक फीस्ट है। दिस इज अ स्कॉलरली फीस्ट फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि जिनकी किताबें हम पढ़ते हुए अध्ययन कर रहे हैं, रेखा राव मैडम जैसे जिन्होंने अप्सराओं के बारे में इतना सुंदर बुक्स लिखे, या के.एम. सुरेश साहब जी ने लिखा, आर्कियोलॉजी में ये किए हैं, इतने सारे स्कॉलर्स एक साथ जब हम देखते हैं, अलके जी ने अभी बात की, जब भी कहीं कोई गजलक्ष्मी का ये मिलता है, उसके नीचे फेसबुक में भी उनका नाम लिख देते हैं कि वो उनको देखने मिल जाए। ये पैशन जो है आप सभी का, आप सभी ने जो हमारे सामने रखा है, ये इतना आसान बात नहीं है, क्योंकि आपने एक शिव धनुष जो है वो उठाया है और इतने बार बार आप उसको उठा के ये कार्य कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। तो मैं हमेशा आप सभी को जो है विनम्रता से वंदन करूंगा। आज ये शिक्षक दिन है और आपने मेरे लिए डेट भी ऐसा दिया कि मेरे ही गुरु जिन्होंने मुझे पढ़ाया, अब उन्होंने ही आज मेरा परिचय दिया, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है। म्यूजियम के फील्ड में जो सुबह मैंने कहा था, कई सारी ऐसी बातें हैं, आप सभी स्कॉलर्स जो है आप ही के मार्गदर्शन में ये संग्रहालय का क्षेत्र जो है ये शिक्षा के माध्यम बने। इट नॉट जस्ट नॉट बी एज ओनली शो पीस, सिर्फ शो पीस न बनकर ये एक मूवमेंट बननी चाहिए, रिसर्च सेंटर्स बनने चाहिए, अध्ययन केंद्र बनने चाहिए। ये आप सभी के मार्गदर्शन में ही होगा। इसी विनम्र प्रार्थना के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ देता हूँ। धन्यवाद। Mr. Mishra ji, one humble request from my side. Yes. I fully agree with what Dr. Suresh ji said, that if our children, if our younger generation, youths are interested in heritage, children are interested in heritage, Bharat is safe. They it's with their liking our heritage, India can be protected. Otherwise, our ancient knowledge will just disappear within no time. Yeah, that's it. So that is what only I was telling that take the children to the places where there is a heritage. Make them to write. Don't say what you are saying. Let them say what they are saying. And when they then assimilate everything and take them to the next trip or the same place, 2 बार उनको वहां ले जाइए और फिर दीजिए। अभी हम हमारे यहाँ मंदिर में बच्चे को ले जाते हैं, चल चल बेटा दर्शन करके बाहर निकल। ये क्या है? आप उनको मंदिर में ले जाइए, कम से कम उसको दिखाइए कि यहाँ भगवान है, भगवान ऐसा है और ये काम करते हैं। फिर बोलते हैं कि बच्चे नास्तिक हो गए। बच्चे नास्तिक नहीं हो गए, बच्चे तो वही है। Thing is, you have not given the ample time for what exactly the purpose is. So take them into one temple. At least there is a picture of Ramayana. Let him understand what is Ramayana, what is Mahabharata, what is other Indian, what are the plants and fauna. No. Within 2 hours, you move to a particular temple and come out. There are so many temples in South. Can I speak for a moment? Yes, sure. You have been giving the very good information, but for the information of all the participants here, there are so many organizations at a different levels. They are functioning right in the Hyderabad. The kids are on weekly basis. They will be taken to different things. There are so many independent organizations have come up now. So about culture, about creating culture awareness among the children is now taking its own this thing. But the need of the hour is that through this form, Mishraji, especially through this beautiful platform, every individual should know his responsibility towards the environment right from the childhood. Because if I know what should be do, what should not be done, then automatically it will be a contribution. See, in such a billion people, we are all devastating our environmental wealth. If, imagine for a moment, if we are convert them, if at least half of billion towards the contributors, so it will be heaven on the earth.
right? So this on these lines we should focus our future this thing. Thank you, Michelle. Alkesh, I had been to your this thing. It's good. It's very good. But I will talk to you later. Some of the Sure, suggestions. sure, sir. It's a pleasure. Yeah. But Because of good. you only this started last year when Yeah, you yeah, called yeah. me I two know. Okay, times, and then we started like assimilating yeah, the it's stuff. good. Beautiful. So after a year, all assimilation has come up. Yeah, So yeah. it's You have compelled. No. Your interest and your hard work. yes, but That's the thing. you know, we need a guru. I'm one of the small this thing. Thank you very much. One Thank of you. the guru to direct the things. You know, we have a lot of energy, and you just direct in a proper direction, then you Thank get you. the results. Thank you. So I'm thankful. No, Yeah. I agree to you, Babuji sir, about that Hyderabad is doing, but I want at every place that should be No, generated, and this for platform example, should help us. For example, here in the panel, Bhujangrao ji is there. Okay, he himself is contributing in his own level with his own team of people in different levels, whatever the because it is different status. So according to he is doing in his own this thing, and especially we were all in some of the this thing experts committee members in some of the thing. His suggestions are very good. Like how to keep the property, whether it is a natural or a cultural property, how to keep it clean at the foremost level. That is our responsibility because we are all civilized. सर वो आइडिया इसी तरह मेरे को आया क्योंकि I saw my son's notes. He visited some museum 3 times. The first time when they visited, they were just they showcased. Then after 2 years, they took them. Then he prepared an object note, and then I was just going through all his books, and then I found that his notebook, and I was reading. So I found that this should be given to our children too. That how this in the 3 year you will make up a note of the same objects. So visiting a place 2 times is a different way. For when you visit first, you just get introduction of it. When you second time go, you see it in a proper way, and the third time you go, you make a note of it and start gaining it. The same way parents should also do. Like, okay, chalo, ye kahi baag mein jate, 3 baar gaye, 5 baar gaye, so every time they should show something new. Enjoy bhi kariye. Aisa nahi ki I'm saying that teach them all the time. But teaching should be in a proper way, like in a story form or something. That was in our previous form. Nowadays we just refer to books, but that's not happening. So we have to change our form, and this platform is a great platform from all around the world. And I promise I would again try to get more and more lecturers from US also to get to the forum. As we got Dr. Deborah Strain this year, I would try my best to get some. I tried at Rutgers, but I could not get to connection with them. But in the next webinar, I would try to get Rutgers University involved too. I had put in the cane also, but because of the vacations going on, a lot of students haven't joined. Maybe during January session or something, another session, we would try to get the notice put up on the boards, and they may also join. Or maybe the time zone is different. But we will try our best to get everywhere. Thank you, sir. Thanks for listening me, everybody. और भी कोई अपना विचार साझा करना चाहे व्यू अपने बहुत सारा बोल दिया। है हाँ, जो भी अपने विचार रखना चाहें सभी आमंत्रित हैं जो जिनको भी रखना है। आप सभी से निवेदन है, अगर आप लोग कहीं गजलक्ष्मी देखे तो मेरे ईमेल पे या मिश्रा सर को भेज दीजिएगा, वो मुझे मिल जाएगी।
Especially I am looking for one in Khajuraho and in Punjab areas. अच्छा, और एक दो शायद आपको भेजा है सर, वो बिहार यूनिवर्सिटी का लेक्चर का भी, वो भी पता कीजिएगा. Right now I don't have that tag, but that's a special thing. अच्छा, Thank you. तो सभी से एक बात पुनः थैंक यू. सभी को प्रणाम है और धन्यवाद है, और आपने जो सहयोग किया आगे भी, और निवेदन है कि आपके जो राइटअप हैं वो यदि मिल जाएंगे तो हम जल्दी से जल्दी काम शुरू कर देंगे पुस्तक पर जो भी. ठीक है सर. सभी को प्रणाम. आज